हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। और आज है जजमेंट डे। यस, बाय द वे मुझे याद दिलाया गया था, आज है जजमेंट डे। यस, पॉसिबली जजमेंट डे, आई डोंट नो इफ इट्स गोना बी देयर येट, लेकिन ऑल प्रोबेबिलिटी है कि आज है पॉटर का पॉसिबली द डे जहां पर इट विल बाय हुक और बाय क्रुक ही हैज टू गेट द रिजल्ट, ही हैज टू गेट द रिजल्ट। और लग रहा है दैट ही इज अंडर प्रेशर एंड ही हैज चेंज समथिंग। सर्टेनली मुझे लग रहा है देयर इज सम अमाउंट ऑफ चेंज। आई डोंट नो आप लोग अग्री करते हो कि नहीं। मैं देखने वाला लाइनअप, एंड बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जुड़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। आई नो दूसरा मैच चल रहा है, मैं वही देख रहा था दूसरा मैच, और दूसरा गोल हो गया जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक। सो होपफुली एवरीवन हियर एंड एवरीवन, होपफुली अब सब लोग आ जाए भाई, सब लोग आ जाइए। हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन अगर आप नहीं किए हो। और मैंने कम्युनिटी में डाला है एज ऑलवेज, यस इट इज लाइक अ रिपीटेड, भाई मैं क्या बोलते हैं, ब्रोकन रिकॉर्ड इसे बोलते रहता हूँ, लेकिन दैट इज नीडेड। सब लोग जो भी आए, फर्स्ट ऑफ ऑल मच लव, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन, स्टे ऑन राइट टू द वेरी एंड। और हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज, लेकिन सबसे पहले वो जो लाइक बटन दिख रहा है ना आपको, वो ठोक दीजिए एब्सोल्युटली। और साथ साथ में मेरे कम्युनिटी पोस्ट, और हो सके तो मेरे ट्विटर पोस्ट पर भी लाइक कर दीजिए एब्सोल्युटली, सो दैट यूट्यूब एंड सोशल मीडिया टेल्स दैट वी आर लाइव एज वेल एब्सोल्युटली। तो भाई सब लोग अगेन, क्या लग रहा है? गौरव बोले फिर से मुड्रिक, क्या ही बोलूं यार, क्या ही बोलूं, मैं समझ नहीं आ रहा, सच में बोलूं समझ नहीं आ रहा। मे बी द फैक्ट इज पॉटर को मालूम है दैट बाय हुक और बाय क्रुक उसको रिजल्ट लाना है, तो ही इज लाइक नहीं, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। आई हैव टू गो विद पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट चेल्सी वर्सेस लीड्स इज। आई हैव टू गो विद पीपल जो अंडरस्टैंड करते हैं क्या चाहिए विंग प्ले में इन द प्रीमियर लीग, हु आर रेडी बिन देयर डन दैट वाला चीज, और मे बी इंग्लिश एलिमेंट लाते हैं, और वही हम बात करने वाले हैं एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, क्या हम सरप्राइज लाइनअप को देखो, और हाँ उससे पहले कि मैं टाइम वेस्ट करूं, मैं लाइनअप डाल देते हैं स्क्रीन पर। यस, बाय द वे, एनी मेजर सरप्राइजेस? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। पता नहीं, आप लोग बोलिए व्हाट इज, मतलब भाई विंग बैक कौन होगा? लॉफ्टस चीक, लॉफ्टस चीक होगा इज व्हाट आई एम गेसिंग। यहाँ पर आई नो लाइनअप मैं दिखाने वाला जो वेबसाइट, वहां पर दे आर स्टिल सेइंग फॉर द बैक, बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स 5 एट द बैक। आई एम प्रीटी श्योर इट्स 5 एट द बैक। आप लोग बोलिए क्या लगता है आपको? स्कैर पॉटर बैक बैक विद बैक back with back three good players suffering because of him. Yes, true, absolutely true. हमें बहुत बार बोला है that he is not using the personnel rightly as far as, हाँ उसकी पूरी गलती नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे दिए गए उन्हें, something that he cannot control, but he can control what is that, जो पिक होगा जो नहीं पिक होगा। और आज सबको मालूम है वी आर 10th यार, और रिमेंबर वी कैन गो इन बॉटम ऑफ द टेबल आज रात तक, तो वी हैव टू गेट अ रिजल्ट। और more importantly, we have pride. We have to get back what Chelsea means. Let's be real. It's about Chelsea Football Club. भाई pride at one point 15 दिन पहले हम बात किए थे Liverpool was below Chelsea in the table. अभी देखिए कहाँ है, we are 10th and Liverpool भाई are right up there in the top 6 race, even top 4 race में तो बोलता हूँ। मडवे के भी स्टार्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल, इसलिए बोल रहा हूँ विंग्स पर प्रीटी श्योर लॉफ्टस चीक खेल रहा है विंग बैक। यहाँ पर लॉफ्टस चीक ही खेलेगा विंग बैक, क्योंकि प्लेड विंग बैक इन द सिस्टम। प्रीटी श्योर जॉ फेलिक्स इज नॉट अ विंग बैक, जीएच भी नहीं खेल रहा जो खेल सकता है विंग बैक। बाय द वे आई लाइक हैवर्ड, बट कम ऑन, प्ले हिम बिहाइंड द स्ट्राइकर, हाउ मेनी प्रूफ्स डू वी नीड? बिल्कुल यार समीर, मैं बोल के थक गया। आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट यू गाइस ऐड ऑन टू दैट एब्सोल्युटली यार, जितना वॉइस करो उतना करो एब्सोल्युटली। शक्ति एज वेल, हेलो अगेन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन इन द हाउस, भाई जो भी यहाँ पर आए हैं, वी विल बी डिस्कसिंग द लाइनअप्स, टैक्टिक्स, हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आर्सेनल बोर्नमथ का, वुल्व्स टॉटनहम का, लेकिन विल कम बैक टू चेल्सी ट्रांसफर न्यूज, विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेडियम प्लान्स व्हाट नॉट। मिकाइल विल बी जॉइनिंग हमें 5-10 मिनट में। तो भाई सब लोग हिट कर लीजिए लाइक बटन एब्सोल्युटली, और हिट कर दीजिए मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी, सो दैट यूट्यूब डेफिनेटली रिमाइंड्स एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हो? ओके, बिगेस्ट क्या है? ओ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यार, बिग अप टू मॉर्टल यार, मैं देखा हुआ उनका फोटो देखा भाई, विद माय मैन चालोबा। एंड अभिषेक बोलना चाहूंगा, आई गॉट द, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब आई गॉट द फॉर्च्यून ऑफ बेसिकली बीइंग इनवाइटेड बाय चेल्सी वेयर चालोबा मेट मी एज वेल, लेकिन हाँ नोवेयर क्लोज टू जो मॉडल को मिला, एब्सोल्युटली बिग अप टू हिम एब्सोल्युटली। एंड ऑफ कोर्स फफाना भी मिले थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मडुके ने क्या क्राइम किया है यार, बिल्कुल चैंपियंस लीग में भी रिमेंबर ही इज नॉट देयर इन द स्क्वाड इवन, तो कहीं ना कहीं अनफेयर। जब भी हालैंड को कैप्टन देता हूँ वो गोल क्यों नहीं मारता? हाँ करेगा भाई, अभी थोड़े मिनट बाकी है। अभी वी टॉक फुटबॉल इन द हाउस, क्या हाल है भाई एवरीवन? भाई अभी को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, और अगेन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एज वेल, ऑल लिंक्स बिलो। बाय द वे ऑलमाइटी गोट्स
are linked below, by the way. हर एक डिस्क्रिप्शन में ऑलमाइटी गोट्स, वी टॉक फुटबॉल और निपुण, दैट इज एनएस स्पोर्ट्स टीवी भाई, पता नहीं आप हो कि नहीं निपुण भाई, दीज टू चैनल्स आर लिंक्ड बिलो, और इनफैक्ट ये दो चैनल्स और कुछ और चैनल्स हमने रेकमेंड किए इन द चैनल सेक्शन ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, तो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं ऑन डू चेक आउट देयर चैनल एज वेल, एंड ऑफ कोर्स big up to all the almighty coaches, almighty scouts, almighty fans and whatnot, yeah, everyone. In fact, almighty coaches को भी mention किया जाता है हर एक description में. Again, if you're comfortable, I'll put your links as well. अगर तो one football और Google पे lineup different आ रही है, बिल्कुल. I think let's see what's the reality. मैं देख रहा हूँ Chelsea का lineup, official lineup भी दिखा देता है आपको. Basically ये छोड़ो भाई, सब लोग सबसे पहले कर दीजिए लाइक कर दीजिए, उससे लाइनअप और ज्यादा आएगी भाई. कैन वी हैव मोर पीपल इन, कम ऑन, वी कैन इजीली लाइक शेयर, कम ऑन, लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, लाइक कर दीजिए स्ट्रीम, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दैट कम्युनिटी पोस्ट एज वेल. मौत का तमाशा देखने, अरे भाई क्या ही बोले. एक सेकंड, मैं ना व्हाट डू यू थिंक, should I change the subject line of the what do you say, title of the video, क्या बोलते हैं, कर लेते हैं. मैं कर देता हूँ भाई, जजमेंट डे, क्या बोलते हो? आई थिंक वी हैव टू डू. टाइगर बीच आल्सो सजेस्टेड मी दैट. आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, सो डेफिनेटली लेट मी डू दैट राइट अवे. एक सेकंड दीजिए मुझे, एज बेसिकली जस्ट वेटिंग फॉर मिकाइल, और हम डेफिनेटली दिखाने वाले हैं आपको लाइनअप साथ साथ में फॉर पीपल ज्वाइनिंग लेट. अगेन भाई पीपल, आई वांट ऑल योर रिएक्शंस ऑन द कमेंट सेक्शन, और मैं लेने वाला हूँ कमेंट्स इन जस्ट अ सेकंड. मैं यहाँ पे ओके, लेट मी जस्ट पुट इट राइट नाउ. क्या डालूं? जजमेंट डे फॉर पॉटर, या पॉटर्स जजमेंट डे, ठीक है. पॉटर्स जजमेंट डे, चेल्सी वर्सेस लीड्स, ठीक है. मैजिक नीडेड. चलो कर दिया है मैंने, ठीक है. मैंने अभी आई हैव जस्ट चेंज द टाइटल ऑफ द वीडियो भाई. आई मेड इट पॉटर्स जजमेंट डे, चेल्सी वर्सेस लीड्स रिएक्शन. चलो कर दिया. आई होप इट रिफ्लेक्ट्स एज वेल. बट बाय द वे भाई, सब लोग क्या बोल रहे हैं लाइनअप पे आते आते, आपके कमेंट्स में आ रहा हूँ. पॉटर के प्लान्स में नहीं है मुड्रिक और मडुवेके, लुक्स लाइक बोथ आर इन पॉटर साइनिंग. नहीं आई डोंट थिंक आप वैसे कंक्लूड कर सकते हो गौरव. यस डेफिनेटली दे आर नॉट पॉटर साइनिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग राइट नाउ, लेकिन याद रखिए दोनों ही बहुत यंग है, दोनों ही आर यंग नो टू द प्रीमियर लीग. मडुवेके इज इंग्लिश, बट वो प्रीमियर लीग में नहीं खेले. आई थिंक कहीं ना कहीं वी हैव टू रिमेंबर दैट. ओके, आज बहुत डर लग रहा है भाई. डर का क्या बात है यार, हाउ वर्स कैन इट बी? अमनदीप कम ऑन, इट कैन नॉट गो वर्स, बट वी हैव टू विन, वी हैव टू विन. चेल्सी का हालत देख के तरस आता है भाई. अगेन थैंक्स फॉर दैट, लेकिन तरस की जरूरत नहीं है. वी विल कम बैक एब्सोल्युटली. वेयर इज रीस जेम्स? ओके, तो रीस जेम्स गॉट अ टाइट हैमस्ट्रिंग. कल हमने अजिंक्य, आप पता नहीं आप देख रहे थे कि वी डिड अ प्री-मैच और रादर प्रीव्यू, प्रॉपर प्रीव्यू एंड टू एंड प्रीमियर लीग का, और उसमें बेसिकली रीस जेम्स वाज टोल्ड इन द प्री कॉन्फ्रेंस, यू नो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है उसमें, आई थिंक पॉटर हैज कंफर्म्ड ही हैज अ टाइट हैमस्ट्रिंग. तो डॉर्टमंड बीइंग ऑन ट्यूसडे, प्रीटी श्योर वो डॉर्टमंड के लिए खेलेंगे और यहाँ नहीं खेलेंगे. वो इट वाज नोन ऑलरेडी, इट वाज जस्ट अबाउट इन टाइम, पता लग गया लकीली. मुड्रिक बेंच्ड, यस. मुड्रिक वाज नेवर पॉटर्स प्लान डेफिनेटली. यार ट्वीट पर मत जाइए, आई वुड नॉट बिलीव दोस ट्वीट्स, सच में बोलूं. मतलब पॉटर आकर उनको बोले थोड़ी है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज सो कॉल्ड इन द नो यार, सच में बोलूं तो. जकारिया क्यों नहीं खिलाते पॉटर भाई? भाई अगेन दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर मी. मतलब मोर देन मुड्रिक, चलो मुड्रिक फिर भी मैं अंडरस्टैंड करता हूँ भाई, कम ऑन, चैंपियंस लीग में ज्यादा एक्सपीरियंस है बंदे को, ट्यूसडे के लिए फ्रेश रखो, और बंदा प्रीमियर लीग में एक्सपीरियंस नहीं है, फेयर इनफ, गेट हिम फ्रॉम द बेंच, अगर आप बिलीव नहीं करते उसमें. लेकिन हाँ, आई रिमेंबर आज 3 द बैक खेल रहे, वेस्ली फोफाना, कुलीबाली, बाडियाशिले, विल लॉफ्टस-चीक प्लेइंग वन विंग बैक, चिलवेल प्लेइंग द अदर विंग बैक, कोवाचिच एंड एंजो फर्नांडिस बीच में. मुझे क्या लगता है, पॉटर वांट्स टू डेवलप दिस पार्टनरशिप, और क्योंकि आज मस्ट विन है, ही डजंट वांट टू एक्सपेरिमेंट मच फ्रॉम द लास्ट मैच, और जितने कम चेंजेस कर सके उतना बेटर है, कंसीडरिंग दैट ही इज गॉन 3 द बैक. ठीक है, आई डोंट वांट टू सी और मोर चेंजेस इज व्हाट वाज ही सेइंग, क्योंकि स्टर्लिंग, अगेन रिमेंबर, स्टर्लिंग हैज बीन लिटिल बिट इंप्रेसिव कंपेयर्ड टू अदर जो खेले हैं फ्रॉम द स्टार्ट. लेकिन अगेन जॉ फिलिक्स भाई, ही इज द मेन मैन नो मैटर व्हाट. लेकिन बहुत ही ज्यादा ओनस है आज ऑन that wing backs यार, मतलब Loftus-Cheek and Chilwell. Remember again, we are playing Leeds का high press होता है, तो that is something that we have to be very very careful of. Again I request भाई, कितने likes हुए मैं देख रहा हूँ, बहुत likes कम हुए भाई, सब लोग
लाइक्स दबा दीजिए यार, doesn't take a buck. Again, please let me know if anyone who's not liking my any of my videos or many of my videos. भाई मुझे डायरेक्टली फीडबैक दीजिए, क्यों नहीं आप लाइक करते हो मेरे स्ट्रीम को, बता दीजिए डायरेक्ट, मतलब बिंदास बिंदास बता दो, क्यों नहीं लाइक करते हो मेरे स्ट्रीम को, बता दो। 800 वीडियोस के दोनों चैनल मिलाकर भाई रोज आते हैं लाइव, और लिटरली दिस इज समथिंग दैट माय यू नो इट इज पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी फैम एंड यू गाइस आर पार्ट ऑफ इट, वाइस वर्सा। तो भाई लाइक कर दीजिए, सर्टेनली हेल्प्स, दैट इज समथिंग व्हिच बैटरी है अपने स्ट्रीम के लिए, क्योंकि हमारे स्ट्रीम में भाई क्या बोलते हैं, मतलब ऑलमाइटी बूस्ट डजंट हैव दैट सेलिब्रिटी वाला स्टिल। I'll get there absolutely with all your help and you guys are my celebrities for me, तो we will get there absolutely, लेकिन अभी वो है नहीं। तो भाई अभी सब लोग कर लीजिए, because people, भाई you are only as good as yesterday, people will not remember what I have done from the last 2 years, people remember what I have done today। तो भाई लाइक कर दीजिए, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतने ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट होगी और उतना ही ज्यादा हमें रिएक्शन मिलेगा, एंड द मोर वी हैव द मोर फन वील हैव एब्सोल्युटली, क्योंकि हमें चाहिए यस बैंटर, ब्रिंग इट ऑन, यस support, bring it on, we want both, and of course positive negative feedback, bring it on absolutely। Zakaria भाई honestly speaking मुझे यही लगता है that it is just about stability, nothing else, और Zakaria आएंगे if need be in the second half। I don't agree with it सार्थक, लेकिन it's the reality of it। Remind me of Jose time when he didn't play Shahbaz, just to remind the board that he, बिल्कुल बिल्कुल अजिंक्य, very nice point। Again शेव्या को खिलाते थे, लेकिन ही यूज्ड टू प्ले हिम वाइड, वो भी होता था बहुत, आपको याद है तो, इफ यू नो वाला चीज है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कमेंट दैट अजिंक्य, ओल्ड स्कूल रहा हो भाई अजिंक्य, बिल्कुल नाइस टू नो। अखिल भाई बैक फाइव फाइनली यार, आई लव इट दरिन, लेकिन लीड्स है, मतलब किसी को याद है व्हाट डिड वी प्ले अगेंस्ट लीड्स जब हम 3-0 हारे थे अंडर टुकल, दैट वाज इट नॉट द लास्ट मैच अंडर टुकल प्रीमियर लीग में? डू लेट मी नो। Mortal in Stamford Bridge, big up to him absolutely। Hello to Dugout Football Channel as well, shout out absolutely, people do check him out। अरे अंशुल क्या हाल है भाई? नहीं 3 नहीं, आई थिंक इट्स 3 द बैक दो, आई थिंक इट्स मोर लाइक अ 3-4-3। द लाइनअप जो मैंने दिखाया ना वो चेंज हो गया, अभी दिखाता हूं वापस से, मैं प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट करके ला दिया हूं अभी आप आपके लिए अंशुल भाई। देखिए दिस इज द लाइनअप, यस दिस इज द लाइनअप, आई डोंट थिंक समथिंग एल्स। याद रखिए फिलिक्स अपना पहला प्रीमियर लीग मैच है, आई थिंक ही प्लेड ऑन द राइटिश साइड एंड ही प्लेड प्रीटी वेल, तो देखते हैं, होपफुली इट वर्क्स। ये पॉटर गंगा पीके टीम Saurav, man, brilliant comment, man. Man, I've lost it, bro. I've lost it already. I think it's back for Fofana, the right back. No, I don't think it's Ajinkya. Fofana is brilliant in centre back. I don't see him as right back. Again, Chaloba क्या गलती किया बेचारा? चालोबा क्या गलती किया है? 3 the back, मैं बोलता हूँ कुलीबाली से बेटर चालोबा होता। I genuinely mean it. In a 3 the back system, I would like to see Chaloba more than कुलीबाली, क्योंकि वो ज्यादा यूज टू इन 3 द बैक सिस्टम। लेकिन वही आप इतना ज्यादा पर्सनल चेंज करेंगे तो भाई गंगा नहा के आ गए, एज व्हाट द कमेंट इज कमिंग। चिलवेल पे लेफ्ट विंग दिखा रहा है, हाँ लेफ्ट विंग है डेफिनेटली। मुड्रिक और मडुएके को एक मैच ही क्यों स्टार्ट करा है? पैसे वेस्ट नहीं, पैसे वेस्ट नहीं करो। देखिए वो अभी देख रहा है शॉर्ट टर्म, उसका जॉब सिक्योर करना है, इवेंचुअली आई थिंक ही विल यूज हिम। बट हाँ मडुएके थोड़ा सरप्राइज है, मुड्रिक आई वाज स्टिल एक्सपेक्टिंग, क्योंकि डॉर्टमंड है ट्यूसडे को, तो आई वाज स्टिल एक्सपेक्टिंग मुड्रिक टू बी यूज्ड इन चैंपियंस लीग, क्योंकि प्रीमियर लीग में अभी भी इज नॉट गॉट हिज रियल कॉन्फिडेंट वाला मोजो ना। लेकिन स्टर्लिंग अगेन एक्सपीरियंस गाय, मतलब यू नो दैट, जो किसको पता है गोल करना हमारी टीम में, स्टर्लिंग इज देयर एंड इट्स आयरॉनिकल, हम स्टर्लिंग के बारे में बात करें वैसे, लेकिन वो रियलिटी है। ओके ये क्या है? Okay, anyway, we'll look at Leeds as well. I'm not sure if I understand your comment. फिर losing situation मैं हम पॉटर क्रेजी नॉट ओवर भाई साहब। सादिक भाई इन द हाउस, पॉटर की मौत का खेल हाँ भाई वो भी नाम रख सकते थे, ब्रिलियंट सादिक भाई। सादिक भाई क्या बोल रहे हो? इज इट एक्चुअली द, मतलब इधर वाला मामला है, मतलब इफ यू आर बोली व्हाट आर यू डूइंग, आई नो it is high time that he should have been already sacked, in my opinion. Honest opinion is, Ajib bhai, I'm sure that you must have heard of what I've spoken, but again I repeat it, I rather have an interim manager, even like to an extent of Frank Lampard right now, and again no disrespect to Frank Lampard, I really feel that banda is not a great manager, but is not a very bad manager as he's made out to be. Lekin Chelsea DNA by Potter is not getting it. Lekin prove me wrong, Potter, today onwards prove me wrong, I'm ready to back him। भाई क्यों हैरी पॉटर डाला है मैंने? हैरी पॉटर डाला है बिकॉज आई वांट द मैजिक टू कम इन हिम, आई वांट द मैजिक टू कम, आई वांट द मैजिक टू कम इन चेल्सी। हो गया बस यार, हो गया। मैं कल ही बात कर रहा था चिन्मय से, चिन्मय का मैसेज आया था भाई, सादिक भाई ऑल्सो इन हाउस भाई,
मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो स्टैट पढ़कर मुझे धक्का लगा, जोर का धक्का लगा। लास्ट 12 मैचेस में हर एक मैच में 2 से ज्यादा गोल मारे, 2 या उससे ज्यादा गोल मारे, और हम वी कैन नॉट बाय अ ब्लडी गोल ब्रो, वी कैन नॉट बाय अ ब्लडी गोल। इट्स सो पेनफुल, बट एनीवे दैट्स रियलिटी जो ट्रांजिशन कर रहे हैं। चेल्सी वर्सेस लीड्स, मौत का खेल, ओके दैट इज द सब्जेक्ट लाइन आपको चाहिए, चलो वो भी कर देंगे बीच में। अगेन भाई, डू यू थिंक रिगार्डिंग रिजल्ट इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर अस? आई वांट टू विन दो भाई, विन-विन। How do you think it's a win-win? I think either ways it's a lose-lose, bro. अगर हम जीतते भी हैं, we are nowhere close to, even Spurs, and that's the reality of situation. लेकिन भाई कहीं ना कहीं positivity हम लेंगे, absolutely. Why Zakaria is not playing, man? Because the sky is so high. इतना ही बोल सकता हूँ. What wrong has he done? I'm so tired with this lineup with Havertz up front. बिल्कुल. And I am a Havertz fan. मैं खुद बोल के थक गया हूँ भाई. Havertz does not deserve her starting place. What has David Fofana done? What has Zakaria done? Please tell me. What has Chalobah done? Chalobah, Zakaria, David Fofana, 3 बंदे जो भागते हैं भाई, जो लड़ते हैं, एटलीस्ट जो उन्होंने किया, आई थिंक आई रादर हैव देम देन द अदर, सच में बोलूं, इंस्टेड ऑफ कूलीबाली, सच में बोलूं, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन इन 3 द बैक सिस्टम। फिर इंस्टेड ऑफ कोवाचिच, और आई एम अ कोवाचिच स्टैन, पीपल हु वॉच दिस चैनल नो दैट, मैं बोल रहा हूं एंजो फर्नांडिस एंड कोवाचिच डू नॉट वर्क वेल आज के दिन में, स्पेशली लीड्स का जो प्रेस होने वाला है, दे विल नॉट, वी नीड फिजिकलिटी प्रॉपर, और वो जकारिया लाता, स्पेशली जब कांटे बाहर है। एंड ऑफ कोर्स अप फ्रंट हैवर्ट्स, क्या है मतलब, वहां तो आई डोंट इवन नीड टू स्टार्ट रियली, मतलब ही शुड बी प्लेइंग एज द नंबर 10, जो फीलिक्स इज बेटर एनीवे, और फीलिक्स जो नंबर 10 है, आज नंबर 10 से नहीं खेल रहे, तो हम क्या ही तो बोल सकते हैं यार उसमें, पता नहीं, हो सकता है हम 3-4-2-1 जाए विद स्टर्लिंग, फीलिक्स थोड़ा सा नैरो खेले, एंड मे बी रूबन लॉफ्टस-चीक और चिलवेल विंग्स पर हो, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट टुकल लाइक्स एज वेल, लेकिन पॉटर वेदर इट लाइक्स, वो क्वेश्चन मार्क है। ओके, इफ इट्स बैक 3 विद रूबन एज राइट विंग बैक, द गेम इज ऑलरेडी गॉन। we need counter attacking Reece James. Reece James is not fit, bro. क्या कर सकते हैं? Again, wing back के लिए Chalobah is not good. I think wing back के लिए Ziyech could have been an option, लेकिन क्योंकि Ziyech is left footed, थोड़ा transition में we would have got even more easily beaten. Plus physicality थोड़ा सा कम है Ziyech का compared to Loftus-Cheek. Although Loftus-Cheek use नहीं करता है, I feel that is the reason why Loftus-Cheek खेल रहा है, not Ziyech. Again, आप लोग भी बोल सकते हैं, आप लोग को क्या लगता है? Again, people who are joining late, again I request everyone, and I mean everyone, भाई like button hit कर दीजिए. Let's reach to 125 likes right away. क्या बोलते हो? We can get there with all your help. Absolutely. And this is a lineup for people who are wondering or coming late. And opposition का भी थोड़ा बात करेंगे, absolutely करेंगे, कोई नहीं. And of course we are going to be discussing more transfers, stadium plans, manager, वो सब मिकाइल जो आते हैं वो भी करेंगे. One day sooner to Luis Enrique arrival. That's a big comment, Sanjeev. Darren, thanks. मौत का खेल नहीं, ऑलरेडी मौत का एंड हो गया. दूसरा जन्म, पुनर्जन्म. आज मैं चाहता हूं पुनर्जन्म, इसलिए हैरी पॉटर क्या है भाई, रूपक, हैरी पॉटर इसलिए क्या है भाई, पुनर्जन्म चाहता हूं, मैजिक वॉन्ड, आई वांट अ मैजिक वॉन्ड ऑफ ग्रैम पॉटर टू कम आउट, एंड दैट इज व्हाट आई से, इट्स अ पुनर्जन्म. पॉटर का पुनर्जन्म, क्या बोलते हैं? इफ चेल्सी, मैं पागल हो गया आज, आई नो. अगर चेल्सी जीते, एंड आई एम होपिंग वी विन, एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग अगेंस्ट लीड्स, प्लीज डर्टी लीड्स के साथ वी कैन नॉट गेट अ डबल डन अगेंस्ट लीड्स टू देम, राइट? एब्सोल्युटली नॉट. लाइक भाई वो लास्ट 20-25 सालों से शायद डबल नहीं किया यार लीड्स ने भाई, वी कैन नॉट हैव दैट, एब्सोल्युटली. लेकिन हाँ, डेफिनेटली पॉटर का पुनर्जन्म होने वाला है, वेट फॉर इट. 3 सेंटर बैक्स, यस. काया बेट्स अगेन, यस. अंकित भाई, ओबामा ने इतना बुरा किया है भाई, सच में बोले ना, देखिए मैं बेंच दिखा देता हूँ फॉर पीपल वंडरिंग कि व्हाई ही इज नॉट पिक्ड. देखिए, वी आर प्लेइंग अ 3 द बैक सिस्टम. 3 द बैक सिस्टम में हैवर्ट्स हैज प्लेड मोर कंपेयर्ड टू मे बी ओबामयांग, इज व्हाट माय गेस इज. अगेन मैं डेविल्स एडवोकेट हो रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट पॉटर सोच रहे हैं, मैं हैरी पॉटर जैसे सोच रहा हूं आज, और that is the reason why he is not picked Aubameyang versus a Havertz, despite Aubameyang not being on Tuesday, और Havertz है by the way. हाँ, याद रखिए चैंपियंस लीग में Havertz is there in the squad, Aubameyang is not in the squad, क्योंकि आज मस्ट विन है, एब्सोल्युटली. लेकिन हम 3 द बैक खेले, तो जो मिडिल 4 है उसमें यू नीड मोर लेग्स, ऑब्वियस सा चीज है, वी नीड मोर लेग्स इन मिडफील्ड, और जब लेग्स चाहिए भाई, मे बी कोवाचिच इज समवन हु रियली कवर्स अ लॉट ऑफ ग्राउंड, दैट इज द ओनली लॉजिक में मुझे लग रहा है. लेकिन फिजिकलिटी में आई वुड रादर हैव गॉन विद, सच में बोलता हूं तो, जकारिया भाई जो बेंच पर है, ठीक है. एंजो फर्नांडिस इज अ गिवन, एब्सोल्युटली.
एंड एट द बैक ओनली रीजन मैं देख रहा हूँ कुलीबाली स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट चालोबा, इज बिकॉज हाँ चालोबा को ज्यादा एक्सपीरियंस है थ्री द बैक में इन चेल्सी स्पेशली, लेकिन कुलीबाली फाइनली हैज थोड़ा सा फॉर्म इन हिज किटी, तो कहीं ना कहीं ही डजंट वांट टू ड्रॉप हिम, इज व्हाट आई एम गेसिंग। अगेन मैं ट्राई कर रहा हूँ फॉर 1 मिनट टू थिंक लाइक पॉटर, और हम शायद काउंटर में नहीं बीटो, इसलिए वी नीड एन एक्स्ट्रा डिफेंडर, इज व्हाट पॉटर इज थिंकिंग। रिमेंबर लीड्स के पास ऑन द बेंच है नॉन्टो, आई एम वेरी सरप्राइज कि नॉन्टो बेंच पर है, एक्सट्रीमली सरप्राइज कि नॉन्टो बेंच पर है। लेकिन भाई अगेन यस एब्सोल्युटली दे हैव बेसिकली फ्रेंच स्ट्राइकर अप फ्रंट, समरविले ही इज गुड एज वेल, एरनसन, मैकेनी, एडम्स, भाई ये जो तिगड़ी है ना, ये तिगड़ी है ना, दैट इज समथिंग दैट दे विल डू वेल इन माय ओपिनियन, एंड दे हैव एक्सपीरियंस प्लेइंग विद ईच अदर बीइंग ऑल यूएस इंटरनेशनल्स, तो कहीं ना कहीं दैट विल हेल्प एज वेल। बट आपको सब पता है हैरिसन, समरविले, दीज आर ऑल पीपल जो प्रॉपर प्रेस करते हैं, एलिंग भी बहुत रन मारते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, so we have to be extremely careful, press on the front, proper heavy metal football खेलते हैं despite Javi Gracia or not, क्या बोलते हैं, old managers being around. Leeds master class in coming, Mikhail is in the house, okay, पता नहीं कितने देर से वेट कर रहे हैं Mikhail, I was just 1 second, हाँ Mikhail, what's up bro, क्या हाल है? वेलकम, क्या हाल चाल? बस सही है, I hope you're not waiting for long, हाँ? नहीं, sorry for being a little late, sorry, मैं उधर अपना सेटअप no problem. मैकाइल आते ना वही फुल सेट में आते, वो चैंपियंस लीग वाला अपना जर्सी डाला हुआ है पूरा। मैकाइल इज लाइक भाई पूरे मतलब सी व्हाटएवर भी चाहे कितना भी गंदा हो, एट द एंड ऑफ द चेल्सी के मैच डे में थोड़ा एक्साइटमेंट तो होता है यार, डेफिनेटली होता है यार, मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू इट, नो टू इज द वर्ड नहीं मैकाइल यार। ये जो क्लब है ना, ये इट कैप्चर्स माय इमेजिनेशन इन द चैंपियंस लीग द बेस्ट, तो वो ये थ्रू द गुड टाइम्स एंड द बैड, आई लाइक टू बी रिमाइंडेड ऑफ द गुड टाइम्स, बट ये है कि ये वो वाली बात है, हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड, आई कम टू टॉक टू यू अगेन। तो ये उस टाइप का सीन है कि हम फिर उस मोड पे खड़े हैं जहाँ पे मैनेजर की छुट्टी कर ऑलमोस्ट इट्स लाइक हाँ इसलिए आज थंबनेल में वापस हैरी पॉटर डाल दिया कि कैन वी हैव द मैजिक वॉन्ड अगेन प्लीज जो तो शुरुआत में हुआ था ना, एक्चुअली ही डिडंट स्टार्ट वेरी बैडली, रिमेंबर कुछ चाहिए पॉटर से आज, मतलब कि I don't want to be anti-Potter. I want him to show us something today, right? कि यार चल ठीक है, तुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कुछ दिखा तो दे, कुछ दिखा दे भाई, आज एक रिजल्ट चाहिए, एक 3 पॉइंट्स दे दे हम। Like how long has it been since our last win? So hopefully we're able to put a strong foot forward. I was just listening in as you started going through the order there. The lineup is out. Yeah, as in see that's the thing. By the way, Newcastle has just lost 2-0 यार to Manchester City. तो कहीं ना कहीं Newcastle are really dropping like anything यार, मतलब there's a high, मतलब वही इतना इसलिए somewhere down the line we feel that frustration also. There was a proper chance for even a top 4 जो लिवरपूल को अभी भनक पड़ गई है, and Liverpool and Tottenham, one of them is definitely going to get top 4 in my opinion. Newcastle is not getting that, but anyway, and I know भाई पुदिन बहुत ही frustrated है about Haaland, but hota yaar, that's part of the game, absolutely. Yes, when you pick Haaland, he doesn't score. When you pick him as a triple captain, he doesn't score. That always happens. But yes, Clifford, absolutely, we're coming to that. But lineups, quick reaction, Mikhail. So this is the one on the screen. So looks like again Zakaria has not been picked, bro. And again Havertz has been picked, bro. And again Koulibaly has been picked. But it's a back three. Changes हुए in terms of the the structure as such. Loftus-Cheek playing wing back. I don't know what to comment there. लेकिन general Loftus-Cheek is not in the pivot at least, right? So he's still doing a job. It's not the position he likes to play in, but at least we're going with a back three. I think ठीक है, pragmatic approach है. Injury हुई भी है, अगर Reece James is not available, and as per Laqueta, doesn't give us the confidence that he used to. ठीक है, बैक थ्री खेल लेते हैं। आपके अटैक में फिलिक्स है, एवर्ट्स है, स्टर्लिंग है, so Mudryk and Mudryk can come off the bench. So I think you still have something to show from the bench. Then I like the lineup in that sense. Okay, Sterling B is coming back. He has something to prove. Havertz I cannot explain. Havertz की जो form है, I don't think it justifies him getting a start again.
but maybe he's doing a job for the coach. So let's keep an open mind and see what happens. Kovacic and Fernandez, I think, will be for me the two players to keep an eye on. How they perform might dictate how the team performs. Yeah, बिल्कुल. So I like this comment actually. Please let's not be toxic. We all know it's potentially Potter's last game. No harm in supporting the club if not him. बिल्कुल. I think that should be the attitude no matter what. It's match day. ठीक है. I know यहाँ पर opposition fans and neutrals अभी है. Absolutely bring it on. Bring on your criticism. We want all the feedback possible. Be it on the channel, be it on for Chelsea, whatever. Because at the end of the day, we are all discussing football. That's definitely there. But at some 100% point, let's be. भाई विशाल, I know आप तो banter करके शुरू होते हैं. भाई let's be honest about it. Leeds are the most dirty club that I've ever seen, and I have no regret saying that. Leeds are the most dirty club. They were, they are, and they will be, bro. Bring it on, विशाल. आप पर्टिकुलरली आप टारगेटेड करते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. और लीड्स के लिए मैं बोला हूँ और हमेशा बोलूंगा भाई. वांट नो टू विजिबल इट. वी टॉक फुटबॉल, बिग अप ब्रो. अगेन पीपल डू चेक आउट वी टॉक फुटबॉल. भाई बंदा पीएसजी फैन है, लेकिन काफी कंटेंट कर रहा है. नया कंटेंट क्रिएटर, लेट्स सपोर्ट देम. एंड ऑलमाइटी गोट इन द हाउस एज वेल. अगेन शाउट आउट जाता है इवन टू एनएस स्पोर्ट्स टीवी. ऑलमाइटी कोच और मिकाइल इन द हाउस. भाई मैं मिकाइल का लिंक डाला हुआ जो आप से, मैं नो बहुत बार भूल जाता हूँ. तो भाई एवरीवन वांट्स टू फॉलो मिकाइल ऑन ट्विटर, गिव हिम अ फॉलो. फर्स्ट लाइन डिस्क्रिप्शन हैज दैट. Chelsea to score before halftime. We'll come to predictions towards the end of the stream. We talk football. We'll come there absolutely. Same in the house. If Chelsea get knocked out from Champions League, owners will be like, we have nothing more to lose. Let's give Potter end of season. मतलब अगेन देयर आर इट्स एंड बट्स मिकाइल, लेकिन लॉट ऑफ न्यूज अगेन आई एम टेकिंग इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट ब्रो. मतलब बहुत सारा न्यूज चल रहा है. पीपल सेइंग कि ये वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई पॉटर का लिटरली वो नहीं होता है मूवीज में जहां पर वो एक माइक्रोफोन रख दिया है उसके रूम में, और लिटरली कुछ कुछ जर्नलिस्ट ऐसे चीज बोलते हैं कि भाई मतलब मैं सोचता हूँ ये सच में यार इतना भी बेवकूफ समझा क्या हमें. कुछ भी मतलब उठा के कुछ भी बोल देते हैं. मतलब आई एम स्टिल not sure about where the situation is, but considering he's going 3 the back against Leeds at home, pretty sure it's untenable, right, Mikhail? I think looks like it is the ultimatum informally दिया गया है. मुझे तो ये लग रहा है. Yeah, to be honest, I don't think it's the ultimatum. I think it's definitely going to cause some conversations in the back office, in the boardroom. But I think the ownership don't necessarily look for trophies, success this season from Potter. So Potter ko hatana just for the sake of Potter ko hatana, even I'm not too keen on that. But what the requirement is for the club to have an astute tactician as a manager that can take the squad that the owners are putting together and get results from it, and hopefully from the get go, right? वो हमारी as a fan जो requirement है वो है from the get go. Owners की नहीं है. They're actually new to the game as well, so maybe they don't understand the culture around the club and the sport. Okay, success is usually immediate. अगर immediately नहीं होगा तो शायद long term भी नहीं होगा, because the manager loses the dressing room eventually. वो जो intensity होती है players की वो आहिस्ता आहिस्ता धीमी पड़ जाती है, and you know you have the revolving door of managers all over Europe because of that problem. तो वो एक अलग problem है. लेकिन the owners come from the US, where they come from a sport that's not football. वहाँ पे culture different होता है. Success is not measured in season. Success is measured over 5 or 10 years, and that's a different type of. वहाँ की जो उनकी बेसबॉल की जो लीग है उसमें एक ट्रॉफी होती है और वो 40 में से एक टीम जीतती है, या पता नहीं 30 टीमें 40 टीमें. तो वहाँ पे इट्स नॉट अ गिवन कि आप कुछ जीतोगे. वहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखते हैं, वो आपका देखते हैं कि स्टैंडिंग किधर है आपकी अगेंस्ट अदर टीम्स. Football is different. European football is different. आपकी teams are competing every season for 2, 3, 4, 5, 6, 7 trophies potentially, depending on how deep you go into your cups. So the idea is कि अगर आप league में if you're not performing, maybe you can have a deep cup run and at least salvage something from the season. This is what Tuchel was doing. Tuchel was struggling in the league, but वो कहता था चलो ठीक है, I'm struggling in the league. I have to play within the limitations of the squad to some extent. Although the squad, was recently assembled and full of energy and full of ambition, but he was able to actually get a tune out of them in the cup competitions. We went through, I think 5 finals under him in a short span of time. So he had a plan and he put it into action. So as a fan, we got okay with that. We know we're not an EPL team.
we know we are a better cup team. At least support the club and enjoy the ride, right? And hopefully, given time, Tuchel will be able to figure out the consistency needed in a 38 game season to challenge for the EPL against the informed teams of the past 5 years, like the cities and the Liverpools. Now you have Arsenal and Man United coming back, Newcastle's coming back. So the things are shaping up. It will come. Now the question is, what does the result dictate? Hopefully we get a win. I want to go into I don't want to talk about it because there is no answer sitting outside. Oh, if Potter gets fired tonight, the next guy is going to come in and change everything. Who is the next guy? We don't even know. It could be another Potter, right? So I'm hesitant. I just want us to turn the corner. Hopefully, आज एक फॉर्मेशन चेंज होपफुली खिला रहा है. अब वो भी पता नहीं होता कि ये जो रिलीज किया है इन्होंने, is this actually what we're going to field? You don't know. अच्छा नहीं, तो मिकाइल उस पर आ रहा हूँ. You know what? तो there were lot of websites who were confused. Like, is he playing Felix as wing back? Pretty sure not. But we'll come to that. Darren, भाई Darren आपको shout out है बिल्कुल यार. Much love to you, bro. Absolutely. Darren has been with the channel since a very long time, and I hope you're there forever as well, bro. An almighty coach again, Darren again. Darren and all the other almighty coach, do let me know if you're comfortable putting your link on the description. I do mention you in each description as well to big you up, but absolutely big up to Darren for the super chat as well always. And I know you support Nathan, shout out as well. Sports on Nathan, do check him out. Absolutely, Nathan. Again, keeping it to Chelsea talks recently, bro, in Chelsea Watchalong. But Nathan, will love to have you as always. You're welcome, bro. Great to see that. And yes, let's get to 150 likes absolutely. भाई बहुत लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं about Mudryk. Mikhail, पता नहीं यार. I know Sterling has looked a little bit sharper for sure compared to others. मतलब would that be fair in saying that? But considering आप 3 the back खेल रहे हो, that is why you want someone who's direct and not just on the wings, and that's the reason Sterling and Felix are playing probably right. Is formation with Mudryk not being picked is probably right in my personal opinion. You could argue that Mudryk hasn't played in a back three role as a wing back or as a attacking winger. So I think the idea is for him to observe what the others are doing and then come off the bench and try to join in and make an impact off the bench. Sterling, I think, has looked better since he's come back. Is showing some energy. So hopefully he can continue that, and hopefully he can make an impact from the start. करेक्ट. और बहुत लोग यहाँ पूछ रहे हैं. मानव, सादिक भाई इन द हाउस. एंड बाय द वे अविनाश टेक, आपको भी शाउट आउट है यार. मैं भूल गया आपको शाउट देना, लेकिन बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स में पढ़ रहा था. बैटर हो रहा है आज बहुत. लेकिन नॉन्टो, मैं सरप्राइज हूँ कि नॉन्टो लीड्स का इज ऑन द बेंच, रिमेंबर. लेकिन साथ साथ में चेल्सी का बेंच भी काफी सरप्राइजिंग है, considering we are going like 3 the back and 3 up front. Mikhail, again, logic would say Noni Madueke is a shoe in today because वो Champions League में नहीं खेल रहा. इसे देखिए, ये सब देखकर Mikhail, for me, it's giving me a indication, considering that he's like, okay, this might be my last game. Let's just play my best team, what I think is the best team. मतलब logic would say that Dortmund को सोच कर वो करेगा थोड़ा. आपने प्लान बना लिया कि ये लास्ट गेम है. ठीक जा रहे हैं. I like the optimism. I want his magic wand to come, bro. I know आप पुतिन बोल रहे हैं my spell is more than Potter. नहीं, bro, that's never the case. Definitely I want my manager to he's still manager of Chelsea Football Club, bro. No to win. I honestly I echo your sentiment, and अंदर से मैं भी ऐसे हूँ, लेकिन I don't expect any change. Even हार भी जाएंगे आज तो I don't expect any difference. हाँ, pressure mount होता जा रहा है. So आगे Champions League game आएगी, वो भी अगर हार गया उसके बाद maybe we might get a knee-jerk reaction, लेकिन I doubt it, because किसको लेके आओगे, and it will be too late. किस चीज के लिए लेके आओगे उसके बाद? Like अगर आप Champions League भी crash out कर गए हो, right? So then what's the point of changing the manager? You're not going to change anything. I'm losing it already, bro. हाँ, वैसे बात कर. Sorry, I don't want to. I'm just saying. I'm like, oh my god. इस वक्त I want to see the real Potter. Will the real Potter please stand up today and show us, it's possible. There is a way out of this. I know people wondering, like, you Hasaro bhai, I'm like, literally we are talking about minutes here. Our season will be over potentially. Premier League is almost over, मैं तो बोलता हूँ. लेकिन आज के बाद potentially, इसलिए we have to do it. इसलिए शायद, again repeating the same thing. Potter has picked
एक डिफेंसिव साइड विच आर नॉट इजीली काउंटर्ड, जो होता है ना ट्रांजिशन में, जो लीड्स आर द नंबर 1 टीम होता, आई नो लीड्स आर डूइंग वेरी बैड, दे आर ऑन अ रन ऑफ लाइक क्रेजीली बैड रन, लेकिन इफ देयर इज एनी साइड इन द प्रीमियर लीग जो आप उस चीज में डरते हो, और rather you have be careful, it's better be Leeds, right? So that's something that you have to have an extra man. But is that man Loftus-Cheek? I'm not sure about that either. Again, Reece James भाई luck यार, एक तो मिकाइल वो मैजिक स्पेल का बोल रहे थे ना भाई, समथिंग इज रॉन्ग ब्रो, व्हाट हैपेंस? रीस जेम्स अगेन टाइट हैमस्ट्रिंग ब्रो, वो मतलब क्या है? थियागो सिल्वा इटसेल्फ वाज अ बिग ब्लो, और ये टाइट हैमस्ट्रिंग रीस जेम्स का हो गया, तो मतलब एस्पिलिक्वेटा आल्सो इज नॉट 100%, इतना बैड लक कहीं ना कहीं पॉटर से, मतलब आई फील सॉरी फॉर द गाय एज वेल ब्रो, नहीं? यार आई डोंट कॉल इट बैड लक। जब आपको पता है कि एक प्रॉब्लम है, आप उसको एड्रेस नहीं करोगे और फिर आप कहो ये बैड लक है, तो आई थिंक वो बैड लक नहीं है, बैड प्लानिंग है। रीस जेम्स इज इंजरी प्रोन, वी हैव नोन दैट फॉर 2 years नाउ। अब आप फिर भी तीसरे सीजन में भी बैठ के कह रहे हो कि यार रीस जेम्स इंजर हो गया, यार ये क्या हुआ? So I think it's just a lack of planning. I think ये planning, this is something the owners realize, क्योंकि आपने कुकुरेला खरीदा है दूसरी साइड पे टू बैक अप चिलवेल। इस साइड पे आपने फॉर सम रीजन एसपी को रिन्यू करा लिया, and you gave up on chasing a similar purchase on the right flank. तो ठीक है, now we're living with it. अब एसपी doesn't give us the confidence, he doesn't have the legs. ठीक है, he's a great player with history with the club, and a lot of respect for him. But on match day, he doesn't fill you with confidence. I think वो अब उसकी एज ऐसी होगी है कि he needs to come on maybe to see out a game, see out a result. वो अलग बात है कि there is no result to see out. So I don't know if we see him or not. लेकिन I don't think Reece James is a surprise for me. इसी तरह है भाई, ये जिस तरह आप इंजरीज मैनेज कर रहे And we हैं tried to get Malo Gusto, but I think Leon were not agreeing for this season, तो इसलिए नेक्स्ट सीजन का ही माने। हाँ, मालोगुस तो आपने साइन कर लिया, मैं भूल ही गया, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्या व्हाट ही विल ब्रिंग। आई हैवंट फॉलोड हिम टू बी ऑनेस्ट। और मैं थोड़ा would बहुत be, देखा हूं, लेकिन मतलब ही इज डेफिनेटली मोर ऑफ एन अटैकिंग विंग बैक, डेफिनेटली बट समथिंग दैट बट मैं बट देखता हूं। मैंने अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले देखा था कि उसको भी हैमस्ट्रिंग हुई हुई है, तो अगर रीस जेम को हैमस्ट्रिंग है और मालोगुस को अभी से हैमस्ट्रिंग है, तो फिर समझ लो क्या होने वाला नहीं वो तो है। मतलब देखो, एक चीज हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, anyone who is a good attacking winger or a wing back भाई, hamstrings are known to happen, it's a thing। सब लोग मेसी तो नहीं हो सकते, मतलब आई नो मैं चेल्सी के साथ कुछ ज्यादा ही होता है, but that is something that we all need to deal with as well। अगस्त्या बोल रहे हैं, अगस्त्या, my only problem is that Potter never selects the best lineup, Chilwell and Mudryk have not started together, Zakaria has not started with Enzo, at least get the correct lineup, that's all भाई। अगेन हो सकता है मे बी जस्ट क्योंकि Kovacic, आई नो मिकाइल बोल रहे it might not have been the ultimatum yet, तो कंसिडरिंग दैट एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि कोवाचिच का बहुत सारे उड़ते उड़ते खबर आ रहे थे इन द लास्ट 72 आवर्स दैट भाई ही इज गोइंग टू मैन सिटी, ये वो एंड ऑल दोस थिंग्स। सो कहीं ना कहीं आई थिंक ही जस्ट वांट्स टू गिव कोवाचिच दैट रिस्पांसिबिलिटी एंड लाइक ओके यू कंटिन्यू, व्हाई चेंज व्हेन वी हैव नॉट काइंड ऑफ टेरिबली लॉस्ट, मतलब आई नो वी हैव बीन ऑन अ टेरिबल रन, और क्या ही तो हम बुरा हार सकते हैं, लेकिन व्हेन आई से टेरिबल लॉस, वी डिडंट गेट द लॉस दैट वी हैड गॉट अगेंस्ट लीड्स आयरॉनिकली, which was the last match of Tuchel, if I remember right, in the Premier League, right? And 3-0 was crazily bad. मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ मिकाइल, 3 द बैक में कुलिबाली डजंट गिव मी ग्रेट वाइब, सच में बोलूं तो, ठीक है, तो मैं वहां पे भी डिसएग्री करता हूँ विद द लाइनअप। आई फील कि चालोबा 3 द बैक इज बेटर, बट कुलिबाली कंसिडरिंग जो हुआ था फर्स्ट लेग में, आपको याद हो, ही गॉट एन अर्ली येलो कार्ड एंड थिंग्स रियली गॉट वेंट हेवायर आफ्टर दैट। मतलब do you feel that like he will be the leader of the back three, क्योंकि Thiago Silva missing, there has to be one person जो orchestrate करे ना, मतलब are you saying Fofana being that guy, और आज कौन होगा यार? मतलब again by the way, who's the captain of the side? I just think That's a good interesting, question. Who is Kovacic, Kovacic, Kovacic? yeah, Probably Kovacic. Kovacic, You're हाँ right. शायद इसलिए भी खेल रहा हो, So हाँ the thing anyway। is, yeah, you kind of do see the thought process behind playing Kovacic, behind playing over Zakaria, behind playing Koulibaly over Chalobah. You kind of see the thought process is there. Is it the selection that we want to make? It's debatable. Maybe if you make it, I make it. Maybe we'll pick different names. But you do see the thought process behind it. He is trying to put some names up there that can hopefully be leaders on the pitch, right? So let's hope it pays out. The Koulibaly we know is problematic. Like, if he has 2 people behind him, then hopefully he's able to not panic and not go in for those kind of tackles. But then conversely, is he going to be sitting behind the other two, or is he going to be stepping out? So yeah, that's the interesting part. He has that ability to step out, which he does a bit too much at times। So hopefully his instruction is to sit back behind the other two.
Hopefully. अब देखते हैं क्या होता है. Let's see. It will be interesting. That's going to be one of the things to watch for is कि Koulibaly का ये जो कार्ड होता है, inevitable card, वो कब आता है. Hopefully there is no card. Like I wouldn't be surprised. भाई ये मुसेब का जो क्वेश्चन है, मुझसे मैं आपको कमेंट्स स्टार के बाय द वे, यस आई एम स्टारिंग अ फ्यू कमेंट्स एज वेल फॉर पीपल थिंकिंग दैट वी डोंट टेक ऑल द कमेंट्स. आई ट्राई एंड टेक एज मच कमेंट्स एज ह्यूमनली पॉसिबल यार. अगेन Big सब up to लोग the लाइक कर chat. दीजिए, मैं देख रहा हूँ Big up to the लाइक chat. सब. Big up to the Okay. viewers. Sure. Bhai, everyone, bhai, let's get to 100 likes before kickoff. Come on, we can get there. We are what, 25 likes away from 100 likes, and we are what, almost 70 people watching. So come on, bhai, sab log like kar dijiye absolutely, and do not forget to even kind of tune in when we are watching, because today there'll be a lot of reaction. Trust me on that. Also, Kante has missed 70 games in last 3 seasons. Was giving a 3-year contract a good call. He ain't getting any younger with every passing. मैं कुछ देख रहा था मुझसे भाई. I was seeing some kind of a stat that we haven't, like, Kante hasn't kicked a ball since something like 200 days or something like that. मतलब it's a crazy thing to think about it. Like भाई 6 महीने हो गए कांटे को एक बॉल किक किए हुए in a Chelsea jersey in a match. So that is telling for me. And again, maybe we are doing the same mistake, or up on the other side, Musab, you can also think about. I know that there are a lot of Chelsea fans already thinking that should we have kept Jorginho for this season because of the leadership, because of the calmness that he brings to the dressing room and the pitch, because of the voice that he brings. वो एक हमेशा the grass is greener on the other side will always be there, right? As in सबको यार पता है. तो कांटे का वही है. उसको 4-5 साल गालियां दी हैं, अब वो चला गया, अब उसको कहते वापस आ जाएगा. नहीं, there was always this मतलब सारी के लिए आज तक बोलते हैं यार लोग, जॉर्जिनियो के लेकिन लिए हमेशा बोलेंगे. मेरा हमेशा से ये स्टैंड था. आई यूज्ड टू लाइक हिज एनर्जी, एट लीस्ट पैशन. एनर्जी मे बी गोइंग टू फार, लेकिन पैशन था उसमें. बट मेरा हमेशा से स्टैंड ये था कि ही हैज लिमिटेशंस. एज लॉन्ग एज वी कैन गेट अ रिप्लेसमेंट इन फॉर हिम, आई एम ओके विद लेटिंग हिम गो. And exactly that's what we have done. We have brought in Enzo Fernandez and we have let him go. ठीक है. अब we have to give Enzo Fernandez a little bit of time to ramp up. Correct. And start formulating his own personality within the Chelsea team. And we have to be supportive. अब ठीक है, जॉर्जिनियो गया, उससे पहले विलियन गया था. विलियन was the same. दुनिया तंग आई हुई थी विलियन से. विलियन गया तो अब everybody's like, यार, और उसमें लैम्पार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन करके गया था विलियन, याद है? he was always doing a job. ठीक है, वो अंडरवेलमिंग था फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो गोल प्रोडक्शन नहीं थी उसकी. लेकिन he was always doing a job for the manager and giving a little bit of leadership role on the pitch. He would settle things down, especially when we would be under pressure. अगर विलियन के पास बॉल आ गई, he's not going to give the ball away right away. वो थोड़ा सा लेके निकलेगा बॉल, आगे जाके क्या करेगा, that was a different problem. लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि विलियन गया तो we replaced him. Who did we replace him with? कि Kai Havertz आया, आपका कौन आया, और Gallagher आया, I guess you can say. Mount is there. Ziyech आया, thank you. So we had some options, so it's fine. We know that he offered something, and we enjoyed it for a few years, but uske baad it's time for other players to step up and start making their own identity. Abhi I would argue that Felix today will have a role to play. I like how he plays, because when I'm watching the game, अब हम टीवी पे देख रहे होते हैं तो we don't have the view of the whole field, तो वो थोड़ा zoomed in view होता है. लेकिन what I'm interested to see is कि midfield में भी Felix is popping up into the camera a lot, coming back, dropping in to help with the ball possession, to help. And then the minute we push forward, he's also in the box. So I like that kind of player that has that presence of mind to actually not just go stand and wait for the ball, but come towards the ball as well and help build out the attack, help build out the progression of the play. Thoda 1-2 kiya, thoda sa back to goal presence dikhai, and then on the turn is also able to join in with the attack. So it's going to be an interesting dynamic to see him on the right. Hopefully there's some synergies between him and Raheem Sterling and Havertz today, because I'm dying to see a goal, man. Come on, give me a goal, Chelsea. Yeah, by the way, Sadiq Bhai is just confirmed. Big up to Sadiq Bhai. Sadiq Bhai, I know that you do a lot of scouting, bro. Absolutely. Yes, मतलब वो हम सुन ही रहे थे. Absolutely, there will be, like, because of the burst of pace that he also has, he is kind of injury prone, but most injury free, you can say. But at the same time, मतलब you all know that someone who has a burst of pace will get there somewhere down the line. So मतलब मैं यहाँ से Chelsea, you can kind of associate, but I think that somewhere down the line, it's bound to happen. मैं तो ऐसे सोचता हूँ, but I don't know. It's a Chelsea. Like no other way around. It's a Chelsea thing.
The reason to play Kovacic could be have a ball carrier. Bilkul. Press resident giving Enzo more space to distribute. That is the thing. Again, one way of looking at it is that ball carrier है someone who actually basically आप देखो ना number of kilometers that one actually covers. Kovacic does a lot of work. People don't realize. लेकिन is he that Kovacic जो हमें मिला था before World Cup for the last year and a half, or is he the Kovacic जो हमें मिला है last month and a half के लिए? And that is the big question, मानव. इसलिए हम बोल रहे हैं कि जकारिया लुक बेटर पीरियड. आई नो वो भी इंजरी से बाहर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लीड जो प्रेस करती है इतना, वी नीड समवन टू काइंड ऑफ ब्रेक दैट अटैक और ब्रेक दैट काउंटर. और आई थिंक वी नीड स्ट्रेंथ एंड पेस वहां पर. आई थिंक जकारिया वुड हैव बीन बेटर, सच में बोलता. बट एनीवे, अब ले लिया तो क्या कर सकते हैं. अरे कॉस्टा भाई, बिग अप टू बाबा, एब्सोल्युटली ब्रो, मच लव टू यू एज अगेन. जो भी आ रहे हैं यहाँ पर, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, ऑलवेज काइंड ऑफ हेल्प्स. रिवाज बोल रहे हैं यस, कोवाचिच इज कैप्टन, ही कंफर्म्स दैट. और यहाँ पर मैं कुछ शेयर करने वाला हूँ एवरीवन. बाय द वे यस, बीएफसी को बिग अप एब्सोल्युटली. शायद उसके बारे में बात कर सकते हैं व्हेन टाइम परमिट्स. लेकिन आई वांटेड टू कवर अ लॉट ऑफ आईएसएल कंटेंट यार. लेकिन वही कंहीं ना कहीं, इफ आई हैव टेकर्स आई लव टू डू दैट. भाई ये पता नहीं कितना ट्रू है. आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम विद 9 मिनट्स टू गो टू पुट दिस अप. लेकिन दिस इज द फेवरेट्स टू बिकम मैनेजर. अभी कहाँ से आया पता नहीं मुझे. दिस इज बीन सर्कुलेटिंग अराउंड. Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Zinedine Zidane, Diego Simeone, Jose Mourinho, John Terry, Thomas Frank, Roberto De Zerbi, ठीक है, हैंसी फ्लिक भी है लिस्ट में, और करंट स्पोर्टिंग लिस्बन का मैनेजर है यार, एज वेल एज ब्रागा. इनफैक्ट ब्रागा मैनेजर इज नॉट टू बैड. लेकिन आर वी, मतलब अगेन दिस इज ओनली इफ्स एंड बट्स. अगर नहीं होता है देन विल गो टू दिस अगेन. आई नो अननेसेसरी कन्वर्सेशन विद 8 मिनट्स टू गो टू किक ऑफ. लेकिन भाई as of now, hypothetically speaking, in this big list that you see, whom do you relate here, someone who can really see, changing Chelsea's fortune in this season? यार कौन है प्लेयर्स? एनरिके, पोचेटिनो, जिडान, सिमियोनी, मोरिनियो, जॉन टेरी, थॉमस फ्रैंक, रोबर्टो डिजर्व. यार ये इसमें almost everybody will make a difference. I think we are at the point where we just need signs of life from the manager in terms of results. Results nahi aa rahe, so you look at a lot of these players. I can, even though I'm like when I look at Pochettino, there are two sides. One is he is a competent guy. He should be able to get something from the youth, the younger players. He should be able to build a style of play. I just don't want him at Chelsea, man. Given that he's been at Tottenham, he's been associated with Tottenham, but maybe that's old-fashioned. Maybe we need to keep an open mind. Maybe he'll be able to, win over the fans with results, if not with history. So, boy, like I'm more curious about Luis Enrique as an option personally, just because I was seeing your tweets. मैं लास्ट 72 आवर्स से मैं ना, मतलब आई हैड टेकन अ स्टेप बैक एंड जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट्स हैपनिंग. भाई अपने जो अल्ट्रास है ना, आई वाज सीइंग अ ट्वीट्स. आई नो दैट यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे हैं लुइस एनरिके looks to be a very popular choice among the fans. Looks like popular choice. Whether it's the best in the scenario, the most pragmatic, probably not. But there is a certain hope कि अगर इस तरह का कोई मैनेजर आता है and he's able to actually show them a new way of playing. So वो एक curiosity है. When you talk about some of the German coaches, वो थोड़ा सा defensively suspect होते हैं. मुझे लगता है इस तरह कि वो German international side has a lot of talent in it, and they have the pick of the best players from all over the world and Europe. But when you come to Chelsea, we have limitations, right? So limitations mein we need somebody that's a little more astute defensively. So German coaches generally are not known to be defensive-minded coaches, right? They're more open attacking. ठीक है, वो German efficiency आती है and whatnot. I'm not saying they can't do it, but generally speaking, they're not. Spain, on the other hand, because they come from a league where, generally speaking, the player physicality isn't at the level as some other leagues. So they're used to being more organized. They have to be more organized with their passing, with their tactics. And I think generally speaking, they try to play more pragmatic football than the German league. German league, mein, it's like end-to-end game ho rahi hoti hai. If you watch Bundesliga games, it's not the same in the Spanish league, the La Liga. Wahan pe, it's a little more tactical the way the games play out. ठीक है, वहाँ पे और मसले हैं. But just from that history, right? I'm curious to see if Luis Enrique can be
lured into Southwest Six to be a coach for Chelsea. And if he doesn't work out, there is obviously options हाँ, after that. मतलब there have been some questionable team or squad picks from him of late, लेकिन he's a winner and that's what I think main thing is for Chelsea सच में बोलूँ तो, और he is a winner of the highest order सच में बोलूँ तो. Mentality is a winning mentality, I think. So Yeah, yes. he's mental exactly. That's Uh, what. इसलिए मैं कॉम्बिनेशन जाऊँ ना सच में बोलूँ तो someone who kind of is not very different from the Chelsea DNA in terms of वो जो जैसे फुटबॉल खिला सकता है, जैसे Real Madrid at times have played in the last few years, you know what Chelsea used to play say Mourinho part 2 में, वहां पर Zidane is kind of for me very similar from that manner. Plus Zidane एक inspiration लाता है apart from I know Luis Enrique भी बहुत अच्छे player थे, but Zidane is like come on, he's one of the GOAT players, right? So from that perspective, I am a little bit inclined towards Zidane, but I know with 5 minutes going to kick off, हम बेशरम जैसे ये बात कर रहे हैं. That is what happens, bro, when you nah. are going through all the negativity. But Yes. anyway, नहीं, वैसे it's an interesting concept. I think we're jumping ahead. तो आज के मैच में we need a performance. And you know Murphy's law है कि when you need a performance you don't get it, but when you don't need a performance you will probably get it. So I'm hoping for a win today in that sense. Whether it's what you know the we want to see or not, because in a way we're almost looking for closure. कि या तो if he's not going to be the man, then lose the game so that we can close the chapter hopefully and move on. But if you're going to be the man, then show a pulse today and show us something. ठीक है, बहुत excuses हैं. I agree, legitimate excuses हैं. लेकिन it's a results business. You cannot just use excuses for a year and say कि मेरे कुछ नहीं हो सका क्योंकि players injured थे और club बिक गया था, new owner आ गया था और you know I had to be manage a big squad. These are all valid issues. Lekin at some point you have to just stop and start getting results. Excuses can only go so far. I think today is a game जहाँ पे we need a result. There is a traditional rivalry and you know it more than most के Leeds और Chelsea की history क्या है. यार मतलब देयर आर वेरी फ्यू साइड मैं क्या न्यूज़ फॉर मी लास्ट वीक राइट, सब लोग जो भी देखे होंगे ना, आपको याद होगा भाई, मैं वुल्व्स टॉटनहम का स्क्रीन पर डाल रहा हूँ फॉर पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग मी टू कमेंट जाए भाई. सच में बोलो तो आज टेंशन चेल्सी की है. आज वो और कुछ नहीं है, लेकिन आई आल्सो वांट समवेयर डाउन द लाइन एक डीप डाउन एक थोड़ा सा होप तो डेफिनेटली ऑलवेज रहता ही है कि यार कहीं ना कहीं स्पर्स गिर जाए तो हम लीड्स, मैकेल इज टॉकिंग अबाउट लीड्स एंड टॉटनहम फॉर मी. पता नहीं क्यों मैकेल इज ऑलवेज बीन देयर, दे हैव ऑलवेज, मतलब वो I get pissed off, bro. Matlab, I cannot see us losing to them. I don't know what it is. Matlab, it's just having watched so much football over the years. Na Leeds Tottenham, Hamesha there was an edge to the games. There was always an edge to the games. There was something. So I have that thing, yaar. Matlab, I don't know what. But again, couple of minutes left. Mikhail, I know you don't do score predictions, but gut feel. What are you saying today? यार गट फील ये है कि जो टीवी पे स्ट्रीम देख रहा हूँ मैं उसमें 4-3-3 दिखा रहे हैं. सो अरे वो तो प्रीमियर लीग वाले दिखाते हैं, मतलब 4-3-3 दिखा रहे हैं विद व्हाट, फफाना बीइंग राइट बैक. Yeah. Actually, you know what? Koulibaly, if I'm not wrong, correct me if I'm wrong, chat. I think there were a couple of games in Napoli again many years ago. Right back खिला हुआ है, but pretty sure he Fofana again. I don't remember यार वो right back खिला था लेस्टर में. थोड़ा Correct me if I'm wrong, even. थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया अब एकदम. I don't know which to believe anymore. Let's see. हो सकता है कि लाइनअप गलत हो, लेकिन knowing Potter, I'm more I would think कि he would play a back four rather than a back three. तो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये what does this mean for our shape. By the way, Star Sports Select 2 में आ रहा है ना Chelsea Leeds people इंडिया में, तो I hope it started. पहले F1 आ रहा था if I'm not wrong. Let me just see. I hope it started. देखते हैं. हाँ चलो शुरू हो गया. Yes, I think you're right. They are showing a 4-3-3 bro for whatever reason. But people in the chat, भाई सब लोग do let me know there is an Arsenal Bournemouth game also. सब लोग prediction दीजिए. Chelsea versus Leeds. It's the judgment day for Potter. Arsenal versus Bournemouth and Wolves versus Spurs. Are we expecting us to win and other two to lose? pretty much sure no, but I hope that is the case. नहीं, interesting होगा. अब Badiashile and Koulibaly in a back four.
it will be interesting to see how that plays out. Okay, usually Badiashile I think plays, but Koulibaly plays, so it's going to be interesting to see how he plays. अच्छा हाँ, Badiashile can go in fact even left back, but Chilwell, I don't know, can we expect Chilwell to kind of do a right back? No, नहीं यार, I'm pretty sure he'll be back 100% sure है. But again, Arsenal fans in the house, आप लोग बोलिए भाई, it's a very very important what do you say, match. By name of the other person, Graham Potter, by it is there in the description. Mikhail is his name. He's a Chelsea ultra. He's an OG of the channel. He's an almighty coach. आप check कर सकते हो, follow कर सकते हो. But Graham Potter, all the best to you more than anything. Yeah, I know Chelsea is first and then manager, but आज I know it's a bit of both for you. And again, people like करना मत भूलना before you go and come back. Bye, Mikhail. Are we going to watch together, or are you going to join me after full time? I can watch right now. मुझे लग रहा था मेरी stream is not going to work, but it's working. So अच्छा चलो, if you don't mind, चलो. I don't mind. हाँ हाँ, अरे ऑब्वियसली यार, कम ऑन. मैं तो सोचा था क्योंकि समटाइम्स लैग बैग होता है ना, इसलिए मैं बोल रहा था भाई नहीं, सब लोग. मैं अगर लात मारने का तो वो भी कोई मसला नहीं है भाई, आप बता दो जैसे आप कहोगे. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कम ऑन. सो पीपल भाई, इट हैज स्टार्टेड. मैं यहाँ पे शुरू हो गया और मैं आई मस्ट से आई एम नर्वस टुडे. आई मस्ट से आई एम नर्वस फॉर व्हाटएवर रीजन. तो लुक्स लाइक इट्स अ बैक थ्री, प्रीटी मच श्योर इट्स अ बैक थ्री. यस, तो फोफाना प्लेइंग राइट सेंटर बैक, कुलीबाली प्लेइंग सेंटर बैक, और बाडिशिल प्लेइंग लेफ्ट सेंटर बैक, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. कोवाचिच और बैक थ्री है, यू राइट. हाँ बिल्कुल भाई. व्हाट अ ब्रिलियंट बॉल, पहले ही. भाई एंजो फर्नांडिस गिव्स फैब्रिकास वाइब्स देयर ऑलरेडी. नॉट बैडली डन बाय फिलिक्स, टू बी ऑनेस्ट. फिलिक्स था क्या, कौन था? Ooh, that was a good ball. I'm a little behind. I'm 5 seconds behind you. चिलवेल था. हाँ, मेरा 45 है अभी. 38, 39, 40. पार्टी प्रांजल, क्या हाल है? क्लिफर्ड, बाय द वे शाउट आउट है भाई सब लोग को. एब्सोल्युटली क्लिफर्ड, डेरेन, केतुल भाई, बहुत लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टार करके रखे. हमने जितना क्वेश्चंस ले सकते थे हम लिया है. विल बी टेकिंग इन बिटवीन द मैच एब्सोल्युटली, और ड्यूरिंग हाफ टाइम एज वेल. बारिशेले विद अ ब्रिलियंट चैलेंज. आई लाइक दैट फ्रॉम बारिशेले, दैट सम ब्रेवरी अगेंस्ट लीड्स. लेकिन वो ये कुलीबाली मत कर देना है जल्दी से येलो कार्ड लेकर, बट कोई नहीं. वेदर ही स्कोर्स और नॉट, हावर्ट्स लैक्स कंसिस्टेंसी. Again, when will any manager realize that Havertz is the number 10? I don't know. But वही हमारा solution क्या है? ओबामयांग जो मोटिवेटर नहीं होगा अभी because of पॉटर का ही खुद का मिस्टेक in my opinion. But anyway, बोर्नमथ स्कोर. ये क्या हो गया? एक सेकेंड. आर्सेनल हैव कंसीडर्ड अगेंस्ट बोर्नमथ. मैं सोच रहा था वहां क्रिकेट स्कोर होने वाला है भाई, आर्सेनल वर्सेस बोर्नमथ. ये क्या हो गया? well, I know relegation fight है बोर्नमथ के लिए, but they've not been doing well. One of the few sides which we have won apparently, so that's the gauging parameter, if you can say so. Bhai, nice wing play bhai. Sterling doing some brilliant work and winning a free kick on the wings. Okay, Bournemouth, yes, they actually score. मैं देख रहा हूँ Gary O'Neill, the manager of Bournemouth, will be pretty happy. अच्छा, Willing scoring. Okay, ये भी इंटरेस्टिंग है कि Sterling is playing on the right, Felix is playing in the middle, and Havertz seems to be on the left. वही मैं सोचा ना कि यार शुरुआत में did I say it wrong जब Havertz लेफ्ट साइड में दिखा, लेकिन नहीं, you're right. Actually, इंटरेस्टिंग है. और मे बी जस्ट रोटेट कर रहे होंगे. लेट्स वेट एंड वॉच. यार ये वैसे डेंजरस एरिया है to take a free kick. Hopefully we can get something from it. ब्रो, इस पोजीशन में जीएश होना चाहता इन द फ्री किक, बट एनीवे ये भी है वैसे. नाइसली डन, लेकिन वेरी टू क्लोज टू द कीपर. यार गोलकीपर सही यार. मेलियर इज अ गुड गोलकीपर. टाइम स्टैम्प इज ऑन स्क्रीन ब्रो. चिदंबर 241 240. एक्चुअली टाइम स्टैम्प थोड़ा पीछे दिख रहा है आपको. यूट्यूब ना थोड़ा सा लैग होता है, तो आप 5 सेकंड ऐड करके देखिए. आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर? यार अंकित, I'll be right back. I just need to look at something. Give me 1 second. या भाई, ये है देखो, अभी थोड़ा बड़ा कर दिया चिंदबर, ये थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ तो दैट यू गाइस कैन सी द टाइम स्टैम्प. ठीक है, तो भाई एवरीवन, यस, लेट्स गेट टू 150 लाइक्स. वेरी सरप्राइजिंग दैट लाइक्स क्यों नहीं हो रहे, बट कोई नहीं. ऑलवेज हेल्पफुल व्हाटएवर योर सपोर्ट यार, एब्सोल्युटली. Havertz with a cross by Felix playing him in, लेकिन well cleared by Leeds. Loftus-Cheek going right in the box. Sterling को पता नहीं क्या करूं मैं. एक आया क्रॉस और फिलिक्स विद द बाइसिकल किक इन द एयर. कुछ हुआ नहीं उससे. पता नहीं, ऑफसाइड था, कोई नहीं.
We are getting there. We have started positively. मैं बोलता हूँ we have started positively. चेल्सी के अच्छे दिन भाई लग रहा है केतुल के यार we are getting closer. Let's be optimistic. इसलिए magic wand पॉटर हैरी पॉटर का मैंने दिखाया आज in the thumbnail. Enzo Fernandez Kova playing good till now. Fingers crossed. Enzo Fernandez भाई दो बढ़िया passes किया already there in. Today's formation and gameplay similar to Tuchel's tactics. It is कहीं ना कहीं maybe he has gone back to that drawing board कि यार ये समझते हैं ऐसे ही चैंपियंस लीग हम जीते थे तो maybe just go and play that. Kovacic is a captain. He knows how to drive from there. So maybe, that's the reason. Nice pressing again by Chelsea. Okay, throw in जीता है लीड्स ने, but कोई नहीं. Kick off glitch. बोर्नमथ ने कर दिया. अच्छा. वाडेशिले विद अ काम बॉल टू फिलिक्स पर प्रेशर डालते हुए और फ्री किक हम जीते लेकिन नहीं. रेफरी बोल रहे कोवाचिच को खेलो यार, क्या ही तो रोकना है. चिलवेल विद अ नाइस क्रॉस. और भाई तू अब डाइव नहीं किया यार हैवर्ट्स. Was it too close or am I being बहुत harsh? या आई नो. मैंने वो कमेंट में कमेंट किया था यार मुसेब भाई. डेफिनेटली मैंने देखा था. मस्त लग रहे उस्मान भाई विद गॉगल्स एंड स्टफ. मैं देख रहा. ब्रिलियंट ब्रिलियंट. क्रिस्टल पैलेस 1-0. ओके थैंक्स डेरिन फॉर शेयरिंग दैट. कोवा यार 3-4-3 में कोवा इज सेट. ये तो बोलना चाहूंगा. एब्सोल्युटली लुकिंग गुड. टच वुड. लेकिन लुकिंग गुड से कुछ नहीं होगा. वी नीड अ विन. वी जस्ट नीड अ विन. दैट इज द मेन क्राइटेरिया आज. सिंपल सा फैक्ट है. Why did you get a Clifford? Come on. कोई नहीं. We'll probably get there. Clifford. मैं तो अभी भी बोलता हूँ. As much as मैं खुद criticize करते आ रहा हूँ पॉटर को right after the World Cup, the fact is that I want him to prove me wrong. I want him to just change his tide, magic wand घुमाए कुछ भी घुमाए. I just want my happiness back, bro. हमें चाहिए हमें. Happiness for Chelsea fans needs to be back. Let's be honest, it's affecting our lives. चाहे मैं बोलू नहीं बोलू, yes, it should not, लेकिन it is for sure. क्या मांग रहा भाई? क्या चाहिए? Bournemouth scored between 9 to 11 seconds of the start. Wow! इतना जल्दी गोल हुआ. Karthik, I missed it, bro. But I'll probably watch it back in the halftime. Let's see. If Chelsea wins today, it has to be Enzo scoring the winner. It doesn't matter. Chutamani bhai, big up कैसे हो? Nice to see you after a long time. Bhai, Mikhail, really, but it doesn't matter, right? Right now, we just need a win. We just need a goal. अरे भाई ओन गोल भी ले लेंगे. लीड्स को बंदा करा दे गोल as long as it gets us points. Correct. Actually, डेस्टिनेशन है भाई इस वक्त तो कुछ भी जो मिलेगा ले लेंगे. भाई हैवर्ट्स को एक हाफ चांस मिला तो यू कैन आर्ग्यू. चिलवेल ने का बढ़िया क्रॉस डाला था. व्हाट अ फ्लिक मैन. चिली बी चिलवेल ना इस फॉर्मेशन में ही हैज डन वेल फॉर चेल्सी ना. भाई फिलिक्स विद द हेडर बट नो. बहुत ज्यादा ग्लांस कर दिया. कोई नहीं. थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेडर डालना था. गुड डिफेंडिंग एक्चुअली. यार आई लाइक दिस. गुड पॉजिटिव मूवमेंट. ठीक है. Correct. And by the way, Darren is right. Yes, Brighton also went 3 the back a lot of times. In fact, they had the floater in Trossard. आपको याद है तो भाई. That is something that maybe Felix is possible. Remember, I think हम खेले थे ना. Correct me if I'm wrong, Mikhail. But in the Champions League game, first game of Potter, I think he had a similar formation with Sterling playing wing back. Correct? No, the left wing, if I remember right. No, it was been against. Yeah. I'll take your word for it, Uncle. Salzburg, I think, right? ओहो कुलीबाली ओपी ब्रो. एवरीवन कुलीबाली मैन विद अ चैलेंज. लेकिन यहाँ पर बॉल देते हुए एंजो फर्नांडिस. नो वे ब्रो. कुलीबाली विद अ सेवियर टैकल अगेन. भाई कुलीबाली हैज अराइव्ड अ व्हाट. और बाड़ेशिले इस बार मैं ज्यादा उड़ गया. कोई नहीं कुलीबाली ने डाइव लगाई. हाँ कुलीबाली ने लगाया यार. कुलीबाली ने ब्रिलियंट टू टैकल्स बाय कुलीबाली. मस्त से कुलीबाली. भाई आदित्य क्या हाल है? नाइस टू सी यू एज वेल. इंटरेस्टिंग. कुलीबाली ने किया क्लियर. नाइस मैन. कुलीबाली ने किया. बिल्कुल. मेजर्ड चैलेंज था. ही वाज केयरफुल. भाई लेकिन क्रॉस क्यों देने? Mikhail, I'll pull my hair out, bro. That's why I wear the cap. People ask me why, right? गोल तो नहीं हो गया. Crosses when we know we suck at it. Every game I repeat the very same thing यार. हर गेम में इतने सारे क्रॉसेस अलाउ करते हैं. पता नहीं क्यों. When we know that is the main thing that we are worst at. वो एक ब्लाइंड स्पॉट है हमारा कि as fans we can sense the danger but the team doesn't sense the danger. Yeah. क्रॉसिंग पोजीशंस में हम क्लोज डाउन नहीं करते. But again,
for all the people saying Aspie is finished, yeah, that's one ability of Aspie that is going to be missed. I'm telling you. And I'm actually impressed with Fofana on that. I must say, Fofana is actually impressive. By Koulibaly with a Hollywood pass, not bad at all. By Koulibaly is actually trying to replace Silva in this game, bro. Touch wood. पता नहीं यार बाबा I didn't speak yesterday or today, लेकिन pretty sure he must be busy bro. कोई नहीं, absolutely. By again, do not forget everyone जो भी यहाँ पर join किए, like कर दीजिए stream को, definitely share करिए if possible. Again, भाई Mikhail will be here in the chat. Prediction चाहिए chat से. What is the prediction? Score prediction. Is looking good. Mikhail, should I even say that before I jinx it myself? We are looking good. कोई नहीं. He's so far so good. Let's hope he भाई ये continues. इससे डर लगता है. कूलीबाली मेरा चैलेंज अपने हाफ के बाहर, ये कुछ ज्यादा नहीं कर देता कूलीबाली, थोड़ा सा डर लगता है मुझे. Half line के बाहर. How he's across the half line and going in for a challenge at the sideline. यार क्या कर रहा है? वापस जा. Exactly, he doesn't need to do that यार. मतलब we have Enzo Fernandez. अभी वो comment उतरा ही नहीं था. अभी वो comment लगा हुआ था स्क्रीन पे. Therein का, you know. But anyway, I don't want to win. Want a convincing win, simple. Win तो मार काट के सिमियोने भी जीता देता है. भाई पहले गोल, स्टेप बाय स्टेप पर बात. Baby steps. पहले let's get a goal, let's get a clean sheet and then get a win. अभी 10 मिनट हुए, पहले गोल पर फोकस करते हैं and a clean sheet. Chilwell is able to attack freely, and again Tuchel used Chilwell brilliantly. We all know. In fact, Alonso was used brilliantly as well at times in a wing back situation under Conte and Tuchel. Kepa winner goal. Okay, too ज़्यादा हो गया ये. Koulibaly dropped his form against Leeds. He's redeeming himself for this match. Yeah, maybe वो challenge गया है. भाई जब भी Koulibaly का सोशल मीडिया में आता है ना मैसेज, तो डर लग जाता है मुझे, थोड़ा जिंक्स करता है भाई. लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन Koulibaly बहुत बार करता है. याद रखिए. Why is Reece James always injured? भाई Reece James is always injured because of his, I think, उसका जो स्टॉकी बिल्ड है ना, और जो बर्स्ट ऑफ पेस है ना, इट काइंड ऑफ इज अ बैड कॉम्बिनेशन. सच में बोलो तो फॉर नॉट गेटिंग इंजर्ड इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी. तो आप इंजर्ड हो गए डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं ही हैज टू बिल्ड ऑन दैट. इतने मेडिक्स है तो भाई वी हैव टू यूज इट टू द अल्टीमेट एबिलिटी. हाँ, चुतामनी मैंने बहुत शेयर किया है. आई थिंक बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम में हमने बात किया है बहुत सिमियोने. बट अगेन आवर थॉट इज, आई थिंक पॉपुलर चॉइस इज लुइस एनरिके. अगर बाय चांस जाता है पॉटर, मैं तो बोलता हूँ डजंट मैटर. मोस्ट इंपोर्टेंट गेट एन असिस्टेंट टू अंडरस्टैंड द चेल्सी डीएनए. मैं तो बोलता हूँ अरे भाई दैट शुड हैव बीन अ गोल. फोफाना डायरेक्ट हेडर, बहुत अच्छा रन, कॉर्नर था चिलवेल का एंड जस्ट अबाउट द बार ब्रो. मिकाइल, हाउ बिहाइंड आर यू? Okay, just about. Just see it. 11:35 मेरा time spot है. So, Ani, it was a good chance, good run. कोई नहीं, he'll get it on target too. अभी वो Fofana ने हमारे लिए कितनी games खेली हैं? 2 games खेली हैं since he came back. So, आहिस्ता. And in fact, this is his first start after injury, na? This is his first start after injury. So let's give him time. Like I said, the idea is right. The run was good. The corner was well taken. I'm seeing positives. भाई लुक एलिंग लुक्स अ बिट इंजर्ड. ये क्या हो गया? अपने आप ही आके भिड़ गया भाई. ये लीड्स का डर्टी लीड से बुलाते यार. आई थिंक दिस इज गेम्स में. अब आप बोले ना, अच्छा खुद ही आके टक्कर मारी या खुद ही गिर गया? हुआ क्या? ये लुक एलिंग का हुआ क्या? खुद ही आके मार दिया यार अपने आप को. खुद ही आके मारा, खुद ही आके गिर गया कि वो मुझे मारा. रेफरी के साथ बिल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी भाई. ये मत कर यार हर मैच में यार. दिस इज द लीड्स for better in the club Chelsea. अरे नहीं यार प्रीतम, much love to you bro, but definitely Potter out भी आप बोल सकते हो. It's definitely an opinion. I don't disagree with that. लेकिन never wish a Chelsea loss bro. Never. If you're a Chelsea fan, just what brilliant work भाई. What brilliant work by Chilwell on the wings. Nicely done by Chilwell. Concedes a corner, लेकिन भाई ये इनका स्ट्राइकर है ना, काफी लाइवली है. फ्रेंच स्ट्राइकर जो है ना लीड्स का. बैमफोर्ड क्यों नहीं खेल रहा भाई? Anyone knows? I was expecting Bamford. पता नहीं, he's not playing, not in the squad even. At least I cannot see. हाँ, पैट्रिक बैमफोर्ड नहीं है स्क्वाड में. अच्छा, interesting. Yeah. Anyway, Lonto भी बेंच पर है, तो again maybe they're just kind of trying to surprise us. Okay, क्या आपका ख्याल है कि वो speaking of Bamford, do you think Tammy Abraham's on his way back to Chelsea?
यार अगेन कल तो भाई, बाय द वे कंग्रेचुलेशंस टू टैमी अब्राहम, आई थिंक ही जस्ट गॉट अ न्यू मेंबर इन द फैमिली, बट हैविंग सेड दैट, टैमी अब्राहम देखो, आई कुड सी अस गोइंग बैक फॉर हिम, बट ऑनेस्टली मैं अभी भी बोलता हूँ दैट टैमी अब्राहम इज नॉट द फिनिश आर्टिकल येट। आई नो हम क्यों वेट करेंगे टिल द फिनिश आर्टिकल कम्स, राइट? बट इज ही 80 million euros at this point in time? But again, that's a market value, I know that's debatable, लेकिन सच में यार बोलता हूँ, लुकाकू if इज there's for लुकाकू इज example, लुकाकू इज हाँ 98 मिलियन, तो फिर टमी 70 80 तो बनता ही अरे लुकाकू तो बेंचमार्क नहीं रख सकते ना, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। है। हाँ लेकिन अगर बाय चांस वी आर एबल टू गेट व्लाहोविच, आई नो यू वुड वांट यूसीएल एंड ऑल दैट, और यूवेंटस के पास थोड़े वांदे हैं इन टर्म्स ऑफ पैसों की बात करते तो, लेकिन आई थिंक व्लाहोविच ट्राई करना चाहिए माय ओपिनियन। एंड आई नो मिकाइल ओपी ब्रो, मिकाइल वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु वर लाइक व्लाहोविच का लाओ, व्लाहोविच का लाओ, जब लुकाकू को ला रहे थे, सो यार, आई बात रिमेंबर ये है कि दैट। अगर आप मुझे कहो कि व्लाहोविच फॉर 70 80 मिलियन, तो मैं उसको भी कहूंगा कि नहीं, दैट्स नॉट वर्थ इट एनीमोर, दैट वाजंट वर्थ इट देन, दैट्स नॉट वर्थ इट नाउ, because the idea was कि you get like I would say कि Vlahovic then for me was kind of like a David नाइस Datro टैकल, Fofana, नाइस टैकल David भाई, Datro लड़ाई हो रही Fofana है, लड़ाई हो रही है। uh, type of ओहो, signing. कम ऑन मैन, चेल्सी, दैट इज द स्पिरिट ब्रो। अरे भाई फिनिक्स इज रन, ये कम ऑन, प्लीज स्कोर, प्लीज स्कोर, प्लीज स्कोर। नहीं यार, सी दैट इज व्हाई इट पिसेस मी ऑफ, दैट शुड बी अ गोल यार। आई नो मेस्लिया डिड वेरी वेल, बट वेरी वेल डन बाय चेल्सी, कोवचिच, अरे स्टर्लिंग, यार, भाई बिग सब लोग। सेव, बिग सेव, बिग सेव, गोली बचा गया यार, या अच्छा सेव किया बिल्कुल, बट कोई नहीं। गोली बचा गया. नाइस, वेरी नाइस बॉल बाय स्टर्लिंग एंड नाइस रन बाय फिलिक्स एज वेल। क्या उसको क्रॉस करना चाहिए था? चिलवेल वाज राइट इन फ्रंट ऑफ गोल विद I नो वन like देयर। I like us playing on the अच्छा break. हैवर्ट्स था, सॉरी। I like us playing on the break, brother. We need to do this more. हाँ सादिक भाई, यार यार, सादिक गोली भाई का थोड़े बिजी चल रहे हैं। बटेरा था, कमिट कर चुका था, वो गोली भी सीधा उसके हाथ पे जाके बॉल लगी. I think Sadiq Bhai was on vacation as well. He did message me, Rajiv. I'm lying next week. Hopefully, Sadiq Bhai को time मिले and we'll be talking to him as well. I know there's a Who Am I semi-final still pending, bro. Long time. But anyway, Nonto is a serious threat, हाँ, लेकिन बेन से आएगा। बेन से भाई मुड्रिक भी serious threat है, technically speaking, to Leeds. Just saying. Madueke for me, Madueke, I'm more excited to see कि Madueke आगे क्या हाँ, करता है. जो डायरेक्टनेस लाता है ना Madueke, I think very few people have in Chelsea. Especially with Leeds, I want some physicality. Correct. What do you think why Mudryk is not started? By the only reason I see is because he's not like, क्या बोलते हैं, मतलब he is more like a proper winger. 3-4-3 में you need to do more with the ball because it becomes a 3-4-2-1 in Chelsea systems ना, तो वहां पर you need to do more with that. तो in the Premier League, but nice cross by the थोड़ा way, सा वो भाई उसमें, nice cross. Chelsea, थोड़ा सा Ruben Mudryk. Loftus-Cheek on the wing. If I have a criticism of Mudryk, ooh, nice cross. तो वो थोड़ा सा ना, he sits on the front line too much and waits instead of coming to the ball. वो he needs to be better at coming in to meet the ball and help build up the play. वो कहता नहीं नहीं, मैं I'm gonna run in behind, just send me the ball, send me the ball. तो वो it's almost like you're playing with one man less sometimes. Yeah. Again, yeah, Ketul, yeah, I agree with you. Havertz, considering his not finishing record, मुझे लगा पहले फिलिक्स है, लेकिन फिर मैं realized that Havertz, then yeah, he should have probably crossed it. Chilwell was clear or no one was in front of him, but again, Meslier को देना पड़ेगा, Good hustle props by to him. good hustle by Sterling to keep the ball. Sterling has looked sharp. I must say that he's looked sharp He's generally looking after. better since he came back from injury. I think बिल्कुल. I don't have a criticism of him. He's hustling. Kovacic are playing so good. Again, Kovacic in a 3-4-3 system, you know that. Plus, आज captain armband देना, I think, strange way, Mikhail, I think maybe that has got Kovacic do more because कहीं ना कहीं लग रहा था ना Kovacic अभी भी वर्ल्ड कप में, ऐसा फीलिंग आ रही थी मुझे तो. थोड़ा सा हाँ, वो he was absent, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन I think it's more उसकी फिटनेस का इशू था जिसकी वजह से he was not performing on the pitch. So he got some rest. Hopefully he's recovered and hopefully he's going to be back at his usual. Oh, what a bad touch by Felix, bro, to Chilwell. That was world class. By Chilwell wins a corner. Nice one. By first of all, Enzo Fernandez playing a very calm ball to Felix, and Felix a What a brilliant play! touch. And that is What a what we play! missed at Chelsea, bro. We missed वो that. We missed ये that. this was the return क्योंकि वो चिलवेल ने उसको फ्लिक दिया था एक. हाँ, right. So this बिल्कुल. was his return to चिलवेल कि अच्छा चल अब I तू think जा. there is a tuning happening there, but definitely. तो मतलब basically Felix अब लेफ्ट साइड ही आ गए, basically speaking. वो रोटेट ही कर रहे थे,
लग रहा है, बट they're mixing it up. डेफिनेटली मैं It's भी fine. फॉर्म यार. I think that's. Come on, my Felix could have done better, but is it a foul? अपील कर दो भाई, घेर लो रेफरी को. नहीं भी हो तो घेर लो पहले, फिर बाद में देखा जाएगा. नहीं है, नहीं, नहीं है, कुछ नहीं है. अपना ही हाथ लग गया मेरे ख्याल में बंदे. आई थिंक इट वाज रादर हैंडबॉल, मुझे तो लगा था अपना ही, बट कोई नहीं. ब्राइटन आर 1-0. ओके, इंटरेस्टिंग दैट. उस मैच में क्या हुआ है? वुल्व्स वाले में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है. अरे इंजरी नहीं मत बोलो यार, प्लीज. फफाना मैन, डोंट टेल मी इज इंजर्ड. मिकाइल. हर एक मैच में यार 20 मिनट्स अच्छे होते हैं, फिर क्या हो जाता है 20 मिनट्स के बाद में? डोंट टेल मी दिस दैट मोमेंट. आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग नो. हाँ, नहीं मुझे, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ छोटा सा, सो दैट आई एम नॉट लैगिंग मच. जनरली मैं क्या बड़े स्क्रीन में देखता हूँ ना, थोड़ा लैग होता है, तो इसलिए मोबाइल में देखते ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होती है. कोई नहीं, आप याद दिलाए तो मैं चश्मे भी पहन लेता हूँ, इतना ही तो. कोई नहीं, मैं आई मेक श्योर आई वोंट मेक अ मिस्टेक बड़ी. केतुल, बट हाँ मजाक कर रहे हैं. नो, आई वाज सेरिया द मोस्ट एंड ओजिमेन एंड ब्लाविच आर so much work rate than Haaland have. They both drop very deep. नहीं, they do. लेकिन will that be a right kind of parameter as well? Serie A, with all due respect, और I love the Serie A, I know that यार. सार्थक बिल्कुल. फिलिक्स का टच बॉस, ब्रिलियंट. पेनल्टी था नहीं यार, लगा तो नहीं मुझे, लेकिन हाँ, अब वही है. पुराने जमाने में मे बी पीपल would have stopped the match for making sure the referee knows what the feelings are. I think this is one of the reasons Oh, nice ball. Mudryk को नहीं खिलाया, because they can interchange constantly throughout the game. नहीं, आई हियर यू. लेकिन मुड्रिक क्यों ना, मैं ऑन द अदर हैंड वाज सेइंग दैट अगर हम फोर एट द बैक करते ना, मुड्रिक हैज नॉट बीन ट्राइड एज अ राइट विंगर येट. आई नो इज नॉट अ राइट विंगर, लेकिन कंसीडरिंग हिज पेस, जो ओल्ड स्कूल अपने खेलते थे यार फुटबॉल, राइट विंगर का पेस होना और गेटिंग इन बिहाइंड वाला चीज एक अंडररेटेड आज की दुनिया में. आई फील जो होता था हमेशा इन द मिड 2000s एंड 90s as यार well. वो रॉबिन एंड डफ वाली डायनामिक, one waits to see again. नहीं, मैं to give you an example, when Quaresma was in his prime na, he used to actually do that thing just. Or in fact La Liga, La Liga fans would know. By nicely won by Felix, nicely done bro, nicely done. Keep it up. भाई एंजो क्या करेगा? पास कर भाई, पास कर. स्टर्लिंग विद अ क्रॉस, फिलिक्स और मैन, नो मैन, हमारा मरा हुआ है लक यार. अगेन मैन हिट द क्रॉस बार. Great movement, awesome play by Joao Felix. Awesome play, man. Awesome play by Joao Felix. Won the ball, played in Enzo. Enzo gave to Sterling. Goal आएगा. We just need to keep doing this. Goal आएगा. But we are playing some scintillating football. Yes, against the Leeds side जो खुद बहुत फॉर्म में मरी हुई है. Doesn't matter. I just need confidence. भाई लेकिन गोल क्यों नहीं हो रहा यार? That is the only thing. Yes, Devesh is back. Big up भाई, कैसे हो? This is ये synergies चाहिए यार. ये Felix को sign up कर लो. He's connecting a lot of this attacking play. I hope we sign him. People joining late. ये है भाई साहब, लेकिन honestly speaking, मतलब we should have been 2-0 up already. सच में बोलो तो, but again that is Chelsea for you. नहीं यार, ये Chelsea है. Chelsea would never have been 2-0 up. कैसी बात कर रहा है? टोनी पुदिन अभी डाउट से, क्वेश्चन मार्क से, बिकॉज ही माइट मिस द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट. यार ये रेफरी फाउल पी गया हमारा, मतलब कि व्हाट द हेल. लीड्स का रेफरी है. अच्छा एक सेकंड भाई, सब लोग जो भी आ देख रहे हैं ना, करीबन 120 लोग हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग लाइव है 1.25 घंटे से. भाई वी शुड बी हैविंग 200 लाइक्स कम से कम. भाई एवरीवन कम ऑन, एक लाइक बटन यार, कम ऑन. मैंने अपना दूसरा लाइक डाल दिया. हाँ, इतनी दुश्मनी क्यों भाई? आपको लाइक नहीं करना है तो बोलिए, फीडबैक दीजिए. मोर देन वेलकम ब्रो, ब्रिंग इट ऑन. एब्सोल्युटली, लेकिन लाइक कर दीजिए सर्टेनली, बिकॉज़ यू आर पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी फैम एज वेल. इट्स जस्ट नॉट मी. मिकाइल ओपी एब्सोल्युटली इन द चैट भी करिए, एब्सोल्युटली. और बाय द वे, पीपल डू गिव अ फॉलो टू मिकाइल ऑन ट्विटर. आई नो ही इज नॉट वेरी एक्टिव, बट व्हेन ही इज एक्टिव ही स्पीक्स टोटल सेंस, व्हिच यू नो ही डज. भाई इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि मुंह से गालियां निकल रही हैं आजकल, और कुछ नहीं निकल रहा, इसलिए चुप हूं मैं. चुप ही बेहतर है, बजाय इसके कि अपनी टीम को ही रोलो. आप तो कंटेंट क्रिएट करते हो, तो यू हैव पॉजिटिविटी टू शेयर, सो वी फॉलो यू. और देवेश पूछ रहा कुछ अलग लग रहा है. अलग क्यों लग रहा है? मैं बोलता हूँ, ये कंफर्ट जोन है चेल्सी का, बैक थ्री.
मतलब would you say that, Mikhail? We have spoken that enough during under Tuchel as well. यार ये you don't even have to look at Tuchel, ये कांटे तक जाती है बात कि the Come minute on, we come on, Felix. अरे भाई, what a challenge, man. Leeds का भाई brilliant challenge. Felix in the box. Koulibaly with the long ball. Oh my goodness. Koulibaly has done really well, I must say. यार Chilwell का ये भी Felix था. this is the difference, right? कि अगर आप back three खेलते हो तो suddenly everybody gets a little bit of breathing space on your back line. And Enzo with a shot, लेकिन Koulibaly is नहीं. showing कि he does have it. It's just कि he's also doing a job. जब आप सिल्वा को खिलाते हो तो Koulibaly has to play a different role. Ooh, straight to the goalie, yaar. What Bhai, a Enzo shot, has man. that thing, Enzo has that long pass Good and shot. shot Bhai, by he Enzo, really reminds me of man. Fabregas, bro. सच में यार bro. ये कॉर्नर में जग मारी होती है इसने कई गोल के. ओए होए 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 होए. Nice चलो. shot. Nice shot. Oof. यार अंकित, This I is don't know about you, भाई. but कुछ फर्क लग रहा है वाकई में आज. और यू नो व्हाट, यू मेरे ख्याल से टीम टॉक में बोला होगा, भाई आप डॉर्टमंड के साथ 3 दिन में खेल रहे हो. डॉर्टमंड हैव जस्ट गॉट 10 विंस ऑन द ट्रॉट. हाँ, डॉर्टमंड क्या यार, हम लीड्स को ही हरा लें, बड़ी बात है. बिल्कुल बिल्कुल. वी आर प्लेइंग गुड. देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी टुडे. भाई रोना धोना कम होगा होपफुली. आई नो, टच वुड. तो 24 मिनट 25 मिनट मार्क है यूजुअली चेल्सी स्टार्ट. कुलीबाली क्या कर रहा है यार? ओह मैन, जल्दी बोल दिया भाई साहब. व्हाट वाज ही डूइंग? I lost it totally, man. I lost it totally, man. Koulibaly, what the hell was that? What was he doing? और लगता है हम जल्दी बोल गए, कुलिबाली की तारीफ जल्दी कर दी मैंने. भाई बाहुबली सच में यार भाई. I know you're doing well इस मैच में, but don't do such things यार. Sterling with nice press. Sterling कुलिबाली doing कुलिबाली things. क्या करें यार. चलो, nicely won यहाँ पे. Sterling is having a brilliant game as well, must say. Anyway, Chilwell on wide. Chilwell. Oh, nicely done यार. Havertz और Felix के बीच में very nicely done almost. भाई that is Felix is class, man. I'm telling you, Felix is utter class. Utter class है भाई. Brilliant. कहाँ से वो पास लाया यार? Absolutely brilliant. मिकाइल भाई, मिकाइल उनका घर बेसिकली. मिकाइल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कहाँ पाकिस्तान में कहाँ से हो मिकाइल ओरिजिनली? आई एम फ्रॉम लाहौर. लाहौर, लेकिन अभी टोरंटो में रहते हैं. और ऑफ कोर्स मिकाइल ऑलवेज ओपी ब्रो, बिकॉज ही कम्स अर्ली मॉर्निंग. ट्रस्ट मी. और मैं मिकाइल को ऑफर भी किया, भाई वॉचलॉग मत करिए, ठीक है, बिकॉज आई नो इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग देयर, बट स्टिल ही इज ऑलवेज हियर ब्रो. एंड अगेन, मिकाइल हैज बीन विद द चैनल राइट फ्रॉम डे वन. इनफैक्ट ऑलमोस्ट इवन मिकाइल Kochila Chelsea perspective, again people do check out Chelsea perspective, the link is always below, tagged hai, another brother there, absolutely. Or again, shout out to all the almighty coaches, almighty goats, almighty scouts, almighty fans. Bilkul. Koulibaly, there's Maguire inside me, sometimes comes out. Maguire in fact better हो गया भाई वो दिन. भाई nice one by Havertz. भाई Havertz कुछ कर उसके साथ, लेकिन अब क्या करेगा? चलो, थ्रो इन एटलीस्ट जीता है, कोई नहीं. Havertz is also rotating यार, वैसा नहीं कि he's sticking around. तो मतलब there's a lot of thought process going into आज फुटबॉल आज. हाँ नहीं, अच्छा जा रहा है फिलहाल. आई एम लाइकिंग व्हाट आई एम सीइंग. आई एम सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ हसल. आई एम सीइंग अ प्लान. आई एम सीइंग एंटिसिपेशन बिटवीन प्लेयर्स. सो फार सो गुड मैन. अब हमें चाहिए यहाँ पे कुछ 2-3 जिस तरह खेल रहे हैं हम. वी नीड एटलीस्ट 3 गोल्स टुडे. एंड आर्ग्यूबली मतलब हैवर्ट्स वाला मोमेंट जहां पर उसने डालना था बॉल टू चिलवेल. मैंने ये नहीं बोला कि कौन सी टीम करेगी, लेकिन 3 गोल होने चाहिए. अरे भाई नहीं यार, पहले लेग में भी होता 3-0 लीड्स. नहीं होता ये है आमतौर पे पॉटर चेल्सी इज कि आप यू आर गोइंग ऑन द अटैक एंड देन गेट इट ऑन द काउंटर. सो बैक थ्री, होपफुली टुडे वी डोंट हैव टू डील विद दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. मेरे कमेंट हाईलाइट किया हूं. आई स्टिल थिंक दैट वी आर अ स्ट्राइकर शॉट. आई जेन्युइनली फील दैट वी आर अ मिडफील्डर एंड अ स्ट्राइकर शॉट, एज मच एज हमने बात किया है. वो एक जकरिया है, वो आता ही नहीं है, कभी खेलते ही नहीं है. उसके प्लान में नहीं है, मुझे तो लग रहा है यार. क्लियर, मुझे लगता है कि उन्होंने उसको ना कर दी है. दे आर नॉट गोइंग टू रिन्यू. कहीं ना कहीं उसका फिटनेस इश्यूज भी है थोड़े बहुत. मे बी दैट माइट बी द रीजन. आई थिंक थोड़ा उसका शुरू में आई थिंक देयर वाज सम इशू विद बिटवीन हिम एंड पॉटर, क्योंकि वो खिला नहीं रहा था उसको. सो आई थिंक वो दैट probably was not. I like him for what it's worth. I would rather have Zakaria in the pivot than have a Gallagher or Mount in the pivot, right? मेरा तो ये criteria है. Even I think Loftus-Cheek से भी बेहतर है.
We have too many number 8s. हम जब खिलाते ही नहीं इतने सारे number 8s. नहीं, और पिवट पे नंबर 8 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर 8 अब एंजो आ गया है, ही इज गोना बी योर हाइब्रिड नंबर 6-8 टाइप प्लेयर. अब आपको चाहिए एक बंदा जो 6 का रोल प्ले करे. वो कौन होगा? वो आई थिंक जकरिया इज अ बेटर ऑप्शन compared to, you can have two hybrids necessarily, as long as they have the discipline ke one has to sit back and one has to one can, Ruben Loftus-Cheek I don't think is natural in that position. वो game read नहीं करता ठीक from that position. He's a proper 8 I think, Ruben, but Ruben को कभी proper 8 खिलाया नहीं जाता. He's always played in a filler role के जी do a job today and play on the right side. वो left side का player है. But ठीक है, आज he's doing a job. I like the good thing is कि a back 3 formation gives you the ability to have part timers do a lot of roles. Right. और इस वक्त हमारा हॉलीवुड पास, बट नो थोड़ा सा लंबा हो गया भाई. I must say that है वो फिटनेस का, वो यही है कि you don't have regulars in a lot of positions. वही लंबा मतलब भाई एक चीज जो अभी भाई आधी घंटा हो गया कम से कम भाई. एवरीवन अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट दैट लाइक बटन. कितना अपना लाइक टारगेट कितना भाई? 200 है. 200 टारगेट है. सिंपल सा टारगेट रखा है आपने, तो कर दीजिए सब लोग लाइक. एंड अगेन डू गिव अ फॉलो टू मिकाइल एज वेल. इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. his link of course on Almighty Coach and other channels जो Almighty Coach उनका भी यार टैग है नीचे in the description. give them a follow as well. बिल्कुल. हाँ, let's get to 150 likes बिल्कुल यार. first let's get to 150 likes बिल्कुल. ओबा को देख के आंखों में आंसू आ गए भाई. honestly speaking ना निखिल, ओबा है, जकारिया है, मुझे तो लग रहा है दैट कहीं ना कहीं इट्स क्लियर. भाई एक सेकंड, नो डोंट टेल मी वी आर कंसीडिंग नाउ. कुलीबाली सेविंग यार. कुलीबाली सी दैट इज द आधी घंटा में मेरे ख्याल से बिगेस्ट पॉजिटिव. एज मच एज हमने अच्छा फुटबॉल खेला है, स्टर्लिंग फिलिक्स हैव बीन रियली गुड, हावर्ट्स हैज बीन बेटर आई मस्ट से, लेकिन Kovacic brilliant, लेकिन I think Koulibaly has been the biggest plus point मेरे लिए यार, apart from that one moment of course. अभी आपने बोल दिया, अब हमें फिर अगले 5 मिनट सांस रोक के रखना पड़ेगा कि कुलीबाली क्या. लेकिन so far so good, you know, he's been more positive than Havertz man और नहीं. Havertz भाई, that is why he's the number 10. What a world class delivery by Havertz. For people hating on Havertz, भाई please this is a reminder. Oh my god, that was that vision not many people have. Was he offside? He was not. Chilwell in a inform confident Chilwell, match fit Chilwell probably would have done better, let's be honest, लेकिन it's a difficult technique at the same time. But क्या pass था Havertz का भाई. if that pass doesn't get Havertz OP भाई in the chat कर दो यार for a change. बहुत hate लिया बंदे ने, deservingly so, but that pass was world class. ये कौन है मैनेजर इस टीम का यार? कोई इंपोस्टर है मुझे लग रहा है. आज कोई और कर रहा है मैनेजिंग. इसका मास्क उतारो. We are against the wall, we kind of pull our socks वाला चीज हो रहा है कि भाई अब तो यार अब निकलने वाली है इज्जत पूरी, आधी तो निकल गई है, तो अभी तो करिए. वो वाला चीज हो रहा है. वो वाली स्कूबी डू वाली चीज हो रही है. I would have gotten away with it too. उसका मास्क उतारेंगे एंड में. तू पॉटर तो नहीं है भाई, कोई और है तू. This is again why people don't promising, but the Chelsea problem is कि we look like scoring but we don't score. So I want one of these chances created to be converted, man. Words of Ballon d'Or. नहीं वो ज्यादा हो गया. किंग का ओपी एब्सोल्युटली भाई फॉर अ चेंज भाई. हमने गाली भी दिया. कॉर्नर टू लीड्स, Kovacic clears. टच लेके खुद शॉट लेना था. डेंजरस मूव था वैसे. we were running toward our goal. Kovacic या what a brilliant पैर डाला यार, नहीं तो मुश्किल हो जाती है उस सेकंड में. क्लच क्लियरेंस. अब ये कॉर्नर लेंगे. अब अंकित बताओ क्या हो रहा है कॉर्नर पे? बस 3 सेंटर बैक से तो आई एम कॉन्फिडेंट कि यार तीनों में से एक तो हेड कर देगा बाहर. थियागो सिल्वा मिसिंग आई नो, बट होपफुली Kovacic. I think it was Koulibaly with the first header, Havertz with the second, Koulibaly again with the kick. काउंटर हो सकता है. फिलिक्स भाई स्टर्लिंग भाग नहीं यार, लेट हो गया, कोई नहीं. Tuchel ball so far, पुदिन बोल रहे हैं. I don't think it's Tuchel ball also, to be honest. It's definitely Potter वाला Brighton वाला 3 the back वाला सिस्टम ही लग रहा है. It's very free flowing यार. आप देखो फ्रंट 3 बहुत ही रोटेट कर रहे हैं. Tuchel भी फ्लोटिंग फॉरवर्ड रखते थे, लेकिन he used to use Havertz like a false nine almost, right? यहाँ पर they are rotating positions.
I like it, man. I'm liking what we're seeing today. लेकिन हम इस तरह खेले नहीं है ज़्यादा. So hopefully this is not Nice a wing flash in play, the pan. bro. Nice This wing is play. this is how we want to see our team playing, right? So let's get a goal now. Come on, guys, let's get a goal. अरे यार. हाँ 3-4-2-1 exactly. So it's not like proper wingers playing. So maybe that is why you're not seeing Ziyech and Madueke playing आज as well as Mudryk. ठीक भाई है. एक सेकेंड काउंटर पे हम बट येलो कार्ड मिलेगा शायद. येलो कार्ड साला मिल गया. वेस्ली फोफाना येलो कार्ड. आई थिंक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज. आई एक्चुअली अग्री दैट वो गया चैलेंज के लिए. बट समर वेले पर या इट वाज येलो कार्ड. कांट डिबेट दैट. इट्स अ क्लियर फाउल. हाँ नहीं, चेक दैट. he knew what he हाँ was वन doing. फॉर द He टीम had लिया. to break पे you have to stop it. निखिल यहाँ पर एक सीक्रेट बताते हुए पता चला इमरजेंसी के लिए टूकल को मैं कॉल बता गई रहा है. हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ ये कौन चला रहा है आज टीम, पता करवाओ. ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे. यार यू टीम से जॉन टेरी का हेल्प ली क्या? पता नहीं एज असिस्टेंट नहीं, ज्यादा हो गया असिस्टेंट हो क्या, तो. वो जो बाहर एक सेकेंड. फुलम रोड पे जो दुकान वाले हैं उनसे कोई प्लान निकलवाया है. नहीं नहीं वो अपना अभी ये चेल्सी बोर्ड ये कर रहे हैं ना फैन बोर्ड फैब. वो वो पुराना टीवी वहां से आई है. वो पुराना टीवी शो होता था पुलिस स्क्वाड, तो वो जाता था बाहर. वो जो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती थी, कोई मर्डर सॉल्व यार करना फ्री होता किक था. नहीं दिया. ऑफ साइड है. चलो ऑफ साइड. भाई पीपल 35 मिनट्स इन क्या बोल रहे हो आप लोग यार? अभी तक गोल नहीं आया. दैट इज अ पेनफुल पार्ट. लेकिन पॉजिटिव डेफिनेटली देख रहा हूँ. आई जस्ट वांट गोल्स टू कम नाउ. टू गोल्स मसल मेमोरीज मैनेजिंग चेल्सी टुडे. प्रीतम बोल रहे हैं. हाँ ये कार्ड तो था लेकिन देरिन वो कार्ड था. आई डोंट थिंक वी कैन डिबेट दैट इट वाज येलो. हाउ मेनी चांसेस विल हावर्ट्स गेट? ओबामेयांग शुड बी इन. हावर्ट्स हैज गॉट अ गुड मतलब अच्छा खेला यार बंदा आज. मतलब आई नो ओबामेयांग जनरली मैं एग्री करता हूं आपके कमेंट से. लेकिन हावर्ट्स हैज एक प्लेड वेल एक टुडे. होता है एक होता है कि आप you're not playing well and you get a few chances और वो भी मिस कर दो. आज we're actually playing well so far. We're creating a lot of chances. So the thought process is कि चलो ठीक है, we're getting shots on target. वो save कर रहा है गोली. So now the idea is to go one एंजो ने step अच्छा forward and करा actually पैर. beat the goalie. Yeah, players are looking confident. वो ये three the back में more than half the team kind of knows the system वाला चीज है almost I तो would भाई say. यही तो बात है कि it comes down to the Free coaching kick. and the tactics. Koulibaly concede the free kick at a very important place point for Leeds. Dangerous था tackle यार. Arguably वो भी येलो था सच में बोलूं तो. हाँ, ये येलो नहीं वो दिया येलो उसने. था वो. There was a clear body check. It was yellow card. भाई we are not able to handle this guy bro. What is happening last 5 minutes में? चेक इंस्टाग्राम क्या बिजार करते करते. एक सेकंड देखते हैं. डेफिनेटली भाई गोल बचा ले बस. मीनवाइल अगेन पीपल सब लोग आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट दैट लाइक बटन. अगर नहीं क्या भाई आप चेल्सी मत बनिए. एटलीस्ट स्कोर द लाइक्स. वो तो कर सकते हैं आप साथ साथ में. Over the likes, I like it. ओ मल्टीटास्किंग ओपी. हाँ तो ही इज वाचिंग WPL आल्सो. दिशांक. हाँ नाइस नाइस. दिखा सकता हूँ ना इसमें तो कुछ कॉपीराइट नहीं आएगा. दिखा देते हैं भाई. बस गोल नहीं हूँ. बच गया. चलो ऊपर गया हैरिसन का शॉट. भाई दिस इज दिशांक. मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. मस्त. नाइस नाइस टू नो दैट दिशांक. शाउट आउट आपको बिल्कुल. टुडे डेफिनेटली बैड लक फिलिक्स पोस्ट. भाई पहली दफा नहीं हुआ है ना सौरभ. दैट इज ऑलमोस्ट चेल्सी थिंग. लेकिन इट वाज अ ग्रेट मूव. दैट्स अ पॉजिटिव थिंग जो मैं देखना चाहूंगा. वही मूव में जो था ना मतलब फिलिक्स हिमसेल्फ क्रिएटेड द गोल राइट. ही स्टार्टेड द मूवमेंट. ही यार वो वन द बॉल. कॉमेडी शो नहीं होता, वो बन सकता है कि 1000 ways not to score the goal. तो चेल्सी जो है वो हर मैच में we have submissions to that. एंड अभी वो कहीं ना कहीं वो लग रहा है. लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज लास्ट 5 मिनट्स में लीड्स हैव गॉट सो मच पोजीशन. एंड या कोविचिच ने एक बॉल सेव किया था रिमेंबर. सो कहीं ना कहीं लीड्स आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस. आई जस्ट होप बिफोर हाफ टाइम वाला एक सकर पंच नहीं हो जाए यार. हाँ नहीं, 100%, and that's the thing, right? We start strong, but then we have to continue. We can't just be a flash in the pan कि अच्छा ठीक है शुरू अच्छा वेल start डन हमने भाई. अच्छा किया. चिलवेल वेल डन. लेकिन एंजो क्या करेगा? एंजो हैज ओ केप्ट द बॉल कुलिबाली नाइस. कुलिबाली बाज आ जा तू. कुलिबाली बाज आ जा. कुलिबाली भाई, डर लग रहा है मुझे कोई कुलिबाली. नहीं बचा लिया. मतलब एंजो एंड फिलिक्स केप्ट द बॉल. अरे भाई
एंजो यार, एंजो पूरी अरे कोशिश यार करता है बॉल रूबन, टर्नओवर करने की, क्या कर रहा है? यार रूबन लॉफ्टस-चीक शुड हैव बीन बेटर इन दैट मोमेंट यार। क्विक क्वेश्चन, आई नो हम हाफ टाइम में बात करने ही वाले हैं, बट भाई विद लीड्स की जो प्रेसिंग स्टाइल होती है एंड द वे दैट द फॉरवर्ड्स आर, यू नो, और लास्ट 5 मिनट्स में जो लग रहा है, विल यू बी टेम्प्टेड कंसीडरिंग वेस्ली फोफाना इज कमिंग बैक आफ्टर इंजरी, मतलब देयर इज अ केस ऑफ अ सेकंड येलो नहीं हो जाए एंड गेट चालोबा? चांस है, लेकिन चालोपा कैन नॉट डू व्हाट कैन ही डू, कैन ही प्ले इन द मिडल? हाँ, ही कैन डू, इनफैक्ट बहुत किया भी था, मतलब इट्स जस्ट दैट वी एट द टाइम वी हैड, यू नो, बेटर प्लेयर्स देयर, राइट? आई डोंट अंडरस्टैंड, चालोबा को ज्यादा चांसेस नहीं मिलते पॉटर के साथ, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई थिंक वो आपका सेटल्ड एक प्लेयर था बैकलाइन में, उसको आपने हटा के बेंच पे डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, आई आई थिंक नाइस वो पिक बैक, है लीड्स वो यार, बैक फोर खिला कुलिबाली रहा है को बचा इसलिए, लिया वापस। बैक फोर खिला रहा है इसलिए उसको चांस नहीं मिल रहा, लेकिन आज बैक थ्री खिलाई है तो आज मिल जाना चाहिए था उसको हाँ, चांस। आज थोड़ा मैं सोच रहा था, बट कोई नहीं, कुलिबाली आल्सो नॉट डन टू Fofana बैडली is आई also थिंक। coming back from fit injury, so it's not the worst thing. It's okay, man. Felix has hit more post than the goal. Yeah, that's true, bro. Felix is not a goal scorer per se, actually. आप केयरफुली देखो उसका रिकॉर्ड है ना, मतलब बंदा बहुत ही अच्छा प्लेयर है। रिमेंबर ही वाज लाइक द गोल्डन बॉय ऑफ यूरोप एट वन पॉइंट। कुलिबाली बीइंग बाहुबली। बिग अप मटाडे यूनाइटेड, व्हाट्सअप, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या क्या चाल है? आज लग रहा है केपा मैनेजर है। आई थिंक ये जो कौन सा राइट विंगर ना, क्या नाम है इसका, समरविले, Somerville. समरविले राइट? हाँ, Uh, तो ही इज द गाय हु हैज बीन रियली एक पेन इन द एस लास्ट 10 मिनट्स में। चिलवेल फाउलिंग हिम, आई थिंक दे वन अ फ्री किक। वाज दैट पुश नेसेसरी और वाज इट फिलिक्स? ओके, no, it was Badiashile. हाँ, आई थिंक बिट ऑफ बोथ, बट भाई हम बहुत कंसीड कर रहे हैं यार फ्री किक्स इन द लास्ट 5 मिनट्स। वी नो हाउ वी डू इन सेट पीसेस। लीड्स और का चलो, मैनेजर गोल कोच किक है। कौन है लीड्स का? जावी ग्रासिया, तो जावी ग्रासिया वो पहले वॉटफोर्ड में आया था बीच में, आपको याद हो तो, आई थिंक ही केम इन अराउंड 2021, चैट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। भाई टॉड बॉली वेयरिंग ऑल चेल्सी टुडे। नाइस टू सी दैट। या लीड्स आर प्लेइंग, कहीं ना कहीं आई थिंक वी हैव गॉट ये इनटू अ कौन शेल। बैठा हुआ है इसके साथ? तो वो जानो तो नहीं। पॉटर भाई, भाई सबसे पहले पॉटर ओपी हो जाए। पॉटर बोल रहे हैं और कुछ गुस्सा से बोल रहे हैं यार। आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर दैट अलोन। आई डोंट नो व्हाट इज सेइंग एंड टू whom, प्रॉब्ली प्लेयर्स को बोल रहे हो कि जल्दी करो यार, पास क्या कर रहे हो, टाइम पास क्यों कर रहे हो? नाइस टू सी दैट। Do you think Oba would have done better than Kai in this kind of role or is kind of gameplay? Honest opinion, nahi. But Oba deserves more chances, definitely yes. लेकिन finishing में I don't think we can argue. Oba is definitely a far better finisher. मैं तो इसलिए बोल रहा था ना, स्टर्लिंग को बीच में डाल दो अगर हम फॉरवर्ड बैक खेल रहे थे ना, कि एटलीस्ट एक डाल दो बस। आई नो इज नॉट द आइडियल नंबर 9, लेकिन एटलीस्ट ही कैन फिनिश बेटर, स्लाइटली बेटर देन व्हाट वी हैव। What a pass! What a pass by Badiashile here. Out wide to the ओहो, right. Sterling on the बहुत corner. अच्छा बॉल स्टर्लिंग का भी Ball. था, Come on, लेकिन Sterling. अरे यार, हाँ, अर्पिता बिग अप यार, कैसे हो? विल कम टू दैट एब्सोल्युटली भाई, थोड़ा ऑफ टॉपिक है, फोकसिंग ऑन द मैच राइट नाउ, विल डेफिनेटली टेक द कमेंट्स। ये क्या है, इफ वी स्कोर 5 अगेंस्ट लिवरपूल देन माय वर्ड आई गिव 5K यूएस डॉलर्स टू ऑलमाइटी ब्लूज। अरे भाई साहब। तो यू वांट मी टू सपोर्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल मटारी यूनाइटेड, इज दैट व्हाट इज सेइंग? बेसिकली एनीवे, ऑल द बेस्ट ब्रो, मच लव टू ऑलवेज टू सपोर्ट द चैनल ब्रो। इंटेंसिटी हैज ड्रॉप्ड, यस इंटेंसिटी हैज ड्रॉप्ड। वही है ना, क्योंकि हम जीते नहीं और वी हैव कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स बिफोर हाफ टाइम, तो कहीं ना कहीं वो यादें आ जाती है यार सबकॉन्शियसली। तो वी हैव काइंड ऑफ गॉन इनटू अ शेल एज वेल, एंड लीड्स भी बेटर किए। नाइस, लॉफ्टस चीक शोइंग सम स्ट्रेंथ फॉर अ चेंज। स्टर्लिंग विद अ लॉन्ग बॉल बट वेल डिफेंडेड बाय लीड्स। हाँ, समरविले इज द गाय। Cheek with a good tackle to get possession back. Long ball, यार Felix. एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, और भाई कुलीबाली जस्ट अबाउट बचा लिया। व्हाट अ व्हाट अ मोमेंट यार, बचा लिया भाई लॉफ्टस चीक ने वापस से। Yet again, we would have conceded before half time. What has happened in the last 7-8 minutes? I don't know.
भाई 35 मिनट तक हम ठीक खेल रहे थे. Two good and two good movements by Loftus-Cheek in the span of seconds. Yeah. So Loftus-Cheek is awake, thankfully. Arey, Felix, come on, take the ball, man. Arey, straight to the goalie. Changes in the second half. Do not wait. Yeah, बिल्कुल. ये जो क्रॉस होता है ना, इसमें whip होना चाहिए. जो अगर आप वो पूछो ना कि उसमें रीस जेम्स के क्रॉस में और इन बाकी क्रॉसेस में फर्क क्या है, तो वो whip होता है उसके क्रॉस में. Exactly. तो ये जब क्रॉस मार रहा है तो गोली इज एबल टू कम आउट एंड कलेक्ट द क्रॉस, क्योंकि वो फ्लोटर आता है बड़ा बड़ा लूपी सा. हाँ, रीस जेम्स और एस्पिलिक्वेटा का बहुत यूनिक क्रॉसेस है, दैट इज समथिंग दैट. हाँ, तो वो गोली के माइंड में ना, वो गोली शुड बी डबल माइंडेड कि कैन आई गेट टू इट और नॉट. तो वो इफ द गोली कम्स आउट दैट मींस द क्रॉस की जो पेस थी इट वाज नॉट फास्ट इनफ. And Aspilicueta is the center half who has to deal with it and not the left back. The way that he crosses, right? Yes, वो क्रॉस जाता है ना. City won. Hope Bournemouth upset Arsenal. Looks like it, यार. There's a possibility, high possibility like होने वाला है. वहां पर क्या difference? हाँ, अभी भी Bournemouth 1-0 है. नहीं, भाई कुलीबाली ऑलमोस्ट. एक सेकंड प्रॉब्लम आने वाली है. बचा लिया क्या पाने. हार्ट अटैक एफसी ब्रो इज बैक. क्या बोल सकते हैं यार, पता नहीं. क्रेजी ब्रो, इज एब्सोल्युटली क्रेजी. हमने प्री मैच में बहुत बातें की यार उसके बारे में इंक्लूडेड. आई थिंक दे आर द फॉर्म वन ऑफ द फॉर्म टीम्स ऑफ यूरोप. अब जब हमें बॉल मिल रही है तो वी आर नॉट अटैकिंग द गोल द वे वी वर अटैकिंग द गोल. तो थोड़ी सी हमारी भी इंटेंसिटी कम हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि यू नो इट्स been 45 minutes we've been running around, लेकिन that's also something I'm noticing कि when we get the ball we're not as dangerous. शुरू में हम जरा पहले 25-30 minutes we were doing more with it. Sterling in the ball. Nice ball. Koulibaly on the ball. Enzo. अच्छा भाई एक सेकंड वापस से बोल रहा हूँ यार. एवरीवन वाचिंग, आई नो वी आर ऑल बिजी वाचिंग. भाई are we seriously not even 150 likes yet? Like come on guys. भाई करीबन सवा घंटे से there are over 100 people watching us continuously. Like really, come on, let's not be Chelsea. Let's score the likes. भाई हम तो स्कोर कर सकते हैं भाई. Definitely that like and subscriptions help. Again, आप करेंगे तो भाई I won't take anything away from you. Totally open for feedback. Absolutely. लेकिन कर दीजिए absolutely, like Darren is saying. Let's get to 200 likes as soon as possible. And yes, यहाँ पर हो गया half time as things stand. It is 0-0. I don't know, मतलब certainly lot of positives. I cannot be negative आज तो. भाई again याद दिलाना भाई सब लोग, मुझे याद से दिलाना. 46-15 सेकंड में वापस से शुरू करना है, ठीक है? तो तब मैं शुरू कर दूंगा. एंड यस, हाफ टाइम आर्सेनल बोर्नमथ का भी आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया. वहां पे ट्रोसार्ड इज इंजर्ड, बाय द वे. ट्रोसार्ड इज इंजर्ड. दैट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर आर्सेनल फैंस. बट क्विकली अगेन भाई सब लोग डू हिट दैट लाइक बटन, डू हिट दैट सब्सक्राइब अगर नहीं किया. डजंट टेक अ बक. शाउट आउट आपको एब्सोल्युटली. लेकिन एवरीवन डू लेट मी नो who has been the player who's been like wow. Bhai, it has been मतलब almost 30-35 मिनट के लिए. Mikhail, would you say that you were wowed by Chelsea's performance, or am I just blowing up? No, it was a good performance. Generally, this is what people pay money to go to the games to see your team play, right? कि थोड़ा attacking, positive football हो. You create some chances. There were moments when you were at the edge of your seat. This is what football is supposed to be, right? So I think there were a lot of positives. The disappointment is as is normal with Chelsea, a lot of chances and no goals. So that's something that we need to now go back and in the second half try to correct. We need a win. We need a few goals today, and I think the goals are there. The question mark is, are we letting Leeds come back into the game? Or thoda sa laga towards the end of the first half, Leeds were finding ways to get back in the game, and they were very close to our goal. Desperate tackles coming in once or twice or thrice towards the end to keep to save goal opportunities. So, mere हिसाब से we're kind of in that moment where the momentum will shift. अब देखना ये है कि do we come out and just keep doing the same, or do we come out and try to correct some of that momentum shift?
नहीं आई हियर यू. देखो अगेन टाइगर बीच गोल होता है बिग अप यार. सेकंड हाफ में, गोल होता है हमारे अगेंस्ट यूजुअली, सो लाइक इमीडिएटली कमिंग आउट राइट विद इन द फर्स्ट 5 10 or 7 minutes. सो हाउ वी कम आउट विल डिटरमिन. तो अब जो हाफ टाइम टॉक है वो कौन दे रहा है? बोली देगा, या पॉटर देगा, या असिस्टेंट दे रहा है, या रिकॉर्डिंग लगाएंगे किसी की. बट इट्स इम्पोर्टेंट टू सी क्या हो रहा है. बिल्कुल. भाई सब लोग अगेन जो भी यहाँ पर है लाइक बटन तो जरूर से दबा दीजिए. टाइगर बीच आई डोंट अग्री विद दिस. ही इज नॉट फेलिंग लाइनअप वाइज. yes definitely question marks थे about Zakaria, but who has basically played instead? Kovacic has been brilliant. Kovacic यार at least स्टर्लिंग ने भी गोल नहीं किया, फिलिक्स ने भी गोल नहीं किया, हैवर्ट्स ने भी नहीं किया. सो यू नो वो क्रिटिसिज्म यू कैन डू मेक ऑफ ऑल द होल फ्रंट लाइन. Everybody had chances at certain times and they were not able to convert. ये गोली had his arm out and उसने with no look chip किया हैवर्ट्स ने, and it goes and hits the arm. अब क्या करें? This is the way Chelsea's form is these days. Yeah. चलो एनीवे भाई, लॉट ऑफ पीपल आस्किंग, आई विल गिव माय 2 सेंस एज वेल. आई एग्री विद मिकाइल डेफिनेटली. यार कहीं ना कहीं देखिए हम आदी हो जाते हैं कुछ ना कुछ हम क्रिटिसाइज करने का. वी आर इन दैट जोन जहां पर पॉटर आउट हो रहा है. लॉट ऑफ चेल्सी फैंस इन द चैट में देख रहा हूं भाई, सब लोग एवरीवन अगेन नॉट फॉरगेट हिट दैट लाइक बटन, हेल्प द चैनल. मैं साथ साथ में बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आप सब जितना करेंगे भाई हम चेल्सी को इतना ही बैक करेंगे. यहाँ पर मैं क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, और इन माय ओपिनियन this has been मतलब not even arguably in terms of playing football, मैं तो बोलता हूँ it has been even a better performance than Dortmund. वर्ल्ड कप के बाद में I don't think I've seen Chelsea perform इतना confidently, इतना flowing football, इतना fluid football at all. But even just to add to that, I strongly disagree that Havertz has a bad game. Yes, Havertz ने गोल करना था, Havertz ने पास करना था चिलवेल को. What a beautiful chance that was. बहुत ही अच्छा pass through था by Sterling, who has been brilliant by the way. Felix by the way has had a couple of good opportunities. एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था जहां पर फिलिक्स ने बॉल जीता था. ही काइंड ऑफ प्लेड एंजो टू स्टर्लिंग बैक टू फिलिक्स, और फिलिक्स ने हिट किया था क्रॉस बार को. लेकिन इवन हैवर्ट्स, सब लोग भूल रहे, पता नहीं आप लोग कौन सा गेम देख रहे हैं. अगेन रेस्पेक्टफुली डिसएग्री ब्रो. हैवर्ट्स बहुत ज्यादा डिजर्व करता है क्रिटिसिज्म द लास्ट फ्यू वीक्स. ही इज नॉट अ स्ट्राइकर, लेट्स बी रियल. एंड आई नो पॉटर की गलती कहीं ना कहीं है, ही शुड हैव प्लेड ओबामेयांग अ लॉट बिफोर दैट नाउ. लेकिन द रियलिटी इज जो पास किया हैवर्ट्स ने चिलवेल को, यू कैन आर्ग्यू दैट चिलवेल शुड हैव स्कोर्ड एज वेल. वो एक Yes, टच लेना था इंस्टेड ऑफ that's जस्ट what I गोइंग was फॉर द going to वॉली. say. Is दैट वाज he अ had वर्ल्ड a, क्लास पास. he had a world class chip to Chilwell. Yeah, chip तो नहीं था, खैर it was a pass, and Chilwell was clear on goal, and Chilwell hit over the goal. So I think with those moments, one when he was on the break himself, Havertz, and he got the shot on target. The goalie was able to save it. Batera tha, he just had his hand out, and the ball came and hit the hand. अब क्या करें? That's the way Chelsea is these days. We can't get the ball into the back of the net, like we hope to. Lekin Havertz, I think I have no issues with Havertz today, because on average, if you compare the front three, I think all of them had good performances in moments. None of them was bad necessarily. And the only criticism is that there's no goals to show for it, and that continues to be a Chelsea problem. That's not a Havertz problem necessarily alone. Felix hit the crossbar. What are you going to do? It is what it is. The header from the corner, you could argue Fofana should have scored, right? So, but it was a great run. It was a great attempt. ठीक है, it wasn't on target. अब क्या करें? आहिस्ता आहिस्ता आएगा. लेकिन on the basis of these 45 minutes, Ankit, क्या क्या ख्याल है? Higher or fire? नहीं मतलब आई डोंट थिंक Objectively. मतलब I would go back to the jury's out. I know I was saying fire before. I was saying judgment and all that. RLC not good. Rahul, by the way, thanks for super chat. Bhai, again, remember, yes, absolutely, we are monetized and thanks for that. The gesture means a lot, Rahul. Shout out आपको. लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं RLC has been the weakest link अभी. Again, remember, defensively last 15 मिनट में we went into a shell. Leeds ने accelerate किया था, उन्होंने gear ऊंचा किया. Somerville has been a problem. Yes, I know Chilwell was very good going forward, लेकिन कहीं ना कहीं in the last 15 minutes Chilwell defensively has not been so good. कुलीबाली ने सेव किया था एक बार. आई नो बहुत एक शिट मोमेंट भी था कुलीबाली का, लेकिन ओवरऑल मैं बोलता हूँ कुलीबाली हैड अ बेटर गेम. लॉफ्टस चीक, यस, आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे लॉफ्टस चीक से व्हाट रीस जेम्स ब्रिंग एनीवेयर क्लोज, लेकिन आई थिंक लॉफ्टस चीक
did a decent job. ऐसे नहीं बोलूंगा he did so badly that हमें criticize करना पड़े. I think it's all about that, you know, that final third वाले चीज, right, Mikhail? Can we say that defensively, I would like to say Loftus-Cheek has finally shown थोड़ा सा मतलब strength in this game. एक दो blocks थे अच्छे, एक दो I think wins थे. एक दो अच्छे blocks थे, एक दो he got possession back in on the break. I think at least once. He was defensively aware. He was back in the box to support the defense, and he was able to clear the ball once at least. So I think generally speaking, he's doing what we need, somebody that's filling in for Reece James to be doing in that position. अब आप उसको Reece James से compare नहीं कर सकते, because that's not his position, that's not his game. Reece James के साथ आप किसी को भी नहीं कर सकते. Like you know, he is a unique player. अब वो नहीं खेल रहा. You have to be you know, a little kind to whoever's trying to step into those boots and do a job on the day. So far, I think the first half, the only criticism I have is that we weren't able to find the back of the net. ये एक पुराना criticism है चेल्सी का, एक पुरानी disappointment है हमारी कि you know, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, we do a lot of good things. The one thing we are not able to do is convert consistently high percentage. हमारी जो chances होते हैं, we are not able to get them into the. इस पे I know Ankit must have done a lot of research and must have a lot of stats and numbers historically compared to previous seasons के where we stand, but I can say कि generally मेरा जो point of view वो ये कि this is not a one season problem, this is a many season problem कि we generally tend to be wasteful in front of goal with our chances, जो कि other teams that are on the top of the league, that are in the top of Europe, generally convert those chances. We somehow, I don't know if it's a Chelsea thing, if there's a problem in the way we train, if there's a problem in where the club the stadium location is, the earth gravity acts differently on the ball. I don't know what it is, but it's something. नहीं भाई, Right? ऐसा कुछ नहीं है. देखो अगेन यहाँ पर टाइगर विज बोल रहे थे विल यू ब्लेम पॉटर द प्लेयर्स. भाई आज के दिन में मतलब जो फ्लोइंग फुटबॉल, फ्लूइड फुटबॉल देख रहा हूँ, आई डोंट थिंक मैं पॉटर को ब्लेम कर सकता हूँ ज्यादा. और थोड़ा आप टीम सिलेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अगेन हैव द पीपल हु हैव रिप्लेस्ड डन द जॉब. अगेन समीर, मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहूंगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन मोमेंट अलोन. आई थिंक हैवर्ड्स, फीलिक्स एंड स्टर्लिंग जनरली और द थ्री अप फ्रंट बहुत ही फ्लूइड फुटबॉल खेले हैं. स्पेशली फीलिक्स और हैवर्ड्स इंटरचेंज किए पोजीशंस. There have been a lot of, you know, balls one position kept or him not losing position. हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ he has been fantastic, world class. नहीं, what I'm saying is the guy is world class, जो कर सकता है from a number 10 position, जो दिखाया इस moment में. But he has had a better day than what he had on most days recent months में. In fact, definitely मैं बोलना चाहूँगा. I'll stick out my neck saying that. I'm a minority in that, I know that, लेकिन it's okay. That's just my opinion, and I respect your opinion totally, Samir, and as well as everyone. Havertz is redeeming since the UCL final. Stop this BS. Get him out. Savin Oba playing at home. What am I watching? Abhishek, you're watching a different game, bro. Much respect, bro. I am actually more positive than negative. I haven't seen Mikhail. When was the last time I saw you saw Chelsea play the way that we played in the first half? At least first 30 minutes. I haven't seen a game this season that has me this excited in the first half at least. It was a good half. Okay, we can complain, but I think it's a team sport, and to pick names and say, okay, this guy is the reason we did not. Nobody नहीं, scored a there's an goal. agenda, bro. Let me be put it very honest. And यहाँ पर मैं भाई for people saying that Havertz has met me, and I know a lot of DMs came to me, इसलिए मैं address कर रहा हूँ point कि यार Chelsea football club, I was lucky enough to be called by them, and Havertz and Chalobah met me. This is not the reason. मैंने publicly in writing, I have given on social media that Havertz does not deserve to be in the starting 11. I've told it out right up there, tagging Chelsea. ठीक है, मैंने किया है. तो वहाँ वो नहीं है. The fact is, we just say what we feel like. And again, आपका व्यू पॉइंट हो सकता है. In my personal opinion, यहाँ पर एजेंडा ड्रिवन नहीं होकर हमने सोचना चाहिए कि what have we done better in this half. Yes, there have been a lot of issues, especially in the last 15 minutes. But if you're questioning the first 30 minutes for not finishing, again, Aubameyang should have been there, absolutely. लेकिन again, changes की बात कर सकते हैं with just couple minutes go. Now that हमने अच्छा फुटबॉल खेला है, and I remember Fofana येलो कार्ड में है, Mikhail, would you say that take off Fofana and change the formation, will that be too risky considering we are conceding goals और हमने लास्ट में बहुत chances concede किए थे? Fofana को उतार के आप अगर चालोबा को डाल रहे हो, I think that's doable. That's the like for like you're telling. नहीं, I am talking like Aubameyang. People are calling for Aubameyang ना. तो why don't we try this again? I'm just putting an idea. Why don't we actually take, considering we are in the dire straight position, हमें चाहिए at home 3 points against Leeds and a goal at least.
get in Aubameyang, get off Fofana, go basically back four. Then we need to get Chalobah instead of Loftus-Cheek as well. ठीक है? Or basically instead of Fofana, you just get Aubameyang or play either Havertz or Felix behind Aubameyang. Yeah, I guess you could do that. I wouldn't do it, but I guess you could do Yeah, that. because the thing is we are playing good football, correct? Maybe that's the reason Well, why if you it's would want working to keep now, doing if you're going to wholesale change the whole setup, so ठीक है. I mean, if that's what you feel like doing, then that's great. I don't feel that the game is going that badly. I think Correct. tweak करना है थोड़ा सा एक दो players उनके जो are performing well right now towards the end of the first half उनको mark करना है better. थोड़ा सा defensively we need to be careful in the second half coming out. We are usually not focused and usually we allow a goal in the start of the second half. So I think इस वक्त formation change नहीं करनी चाहिए. We should keep a back three and we should see out the first 10 minutes of the second half. उसके बाद I would like to see it's a game at home. I would like to see us making some proactive substitutions. And at that point, you can make a change to a back four if you feel like okay, now we're close enough to the full time. Now we're gonna step it up and attack more. एक वो शॉट दिखाई थी उन्होंने ओबामायांग थोड़ा सा glazed उसकी look थी आई में तो it was like almost like he was somewhere else mentally, which kind of tells me that he probably knows he's not going to get minutes today. तो मैं वही बता रहा हूँ, for everyone calling out Aubameyang, yes, Potter ने mistake की है, but is he in that mindset himself to be able to do that? Maybe Potter thinks मुझे नहीं लगा जब उसका जो मुझे वो उन्होंने फ्रेम दिखाया है उसमें it was almost like he was somewhere else mentally, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा. मैंने maybe we are कहा reading too much, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है that Aubameyang trust तो नहीं करता Potter, ये मुझे लग रहा है. He's not trusting him for say 60 minutes के लिए, maybe 30 minutes at best, right? नहीं ये यार एक मुझे लग होता रहा है अंकित कि अगर if I'm a player and you tell me कि यार second half में you have to play, right? So I'm going to be sitting on the edge of my seat the whole game, right? कि मेरा चांस आने वाला है. वो जिस तरह बैठा हुआ था मुझे नहीं लग रहा था कि he's going to have a role to play, at least उसको बताया हुआ नहीं है. अगर उसको भेज देता है वो that's great, let's try him out, but then वो आप वाली बात है कि are we changing the formation, who are we taking off, are we taking off a defender, are we taking off an attacker? आप हावर्ट्स को उतार के अगर इसको डाल देते हो, I have no objections with that. Mudryk को डाल दो. These are all changes we can make coming off the bench. तो ये कहना कि हावर्ट्स को जो है वो स्टार्ट बनता नहीं था, ठीक है नहीं बनता था, लेकिन he played okay. Same for Felix, like he played okay. अगर आप if you want to move players around, you can take off Sterling, you can take off Havertz, you can even take off Felix if you want, and bring on three fresh attackers. Bring on Mudryk, bring on Aubameyang, bring on Mudryk. Right? आप अपनी पूरी फ्रंट लाइन स्वैप आउट कर सकते हो if you think कि ये अच्छा नहीं खेल रहे आज. लेकिन generally speaking, I thought we were playing good. I want us to have a little more presence in midfield. I think थोड़ा सा we are letting them come into our box a little too easily sometimes. वो एक आधा पास होता है that we miss closing down, and उसकी वजह से suddenly there's last ditch tackles happening in the box. तो थोड़ा सा हमें एक presence चाहिए midfield में. मेरा तो शुरू हो गया. मिकाइल आपका हो गया क्या भाई? नहीं एवरीवन यार अगेन अभी विदाउट यार फॉरगेटिंग लाइक बटन. आपका जो स्ट्रीम है ना ये अच्छा, जो भी लोग यहाँ पर आए ना जो सब्सक्राइब नहीं किए भाई, डू लेट अस नो व्हाई यू आर नॉट ऑप्टिंग टू सब्सक्राइब, एंड इट विल बी ग्रेट इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल. Hit that bell notification icon. There's a lot of content we do end to end here from just a couple of years, and it'll be great if you subscribe as well as like the stream. And big up to everyone जो भी join किया भाई. सब लोग बोलिए सेकंड हाफ में क्या होने वाला है. And remember, बैक थ्री है. में लाओ भाई, फिट नहीं होता यार 3-4-3 में. It doesn't fit. बैक थ्री चल रही है फिलहाल. बैक थ्री चल रही है. और अगेन मैं एग्री करता हूँ मिकाइल से 100%. मैं तो फॉर द डेविल्स एडवोकेट बनने के लिए मैं बोल रहा था ऑप्शंस, लेकिन there was no reason for us to make a change. हमें चेंज करना है बस फिनिशिंग में, और वो हमें दिखेगा in the end. We'll bring in the like in 65th minute and beyond, वो जो आप changes कह रहे हो, yes, but right now I just want us to see out 10-15 minutes, make sure we don't concede, and पैनिक की जरूरत नहीं है भाई. Kovacic with a nice run. Kovacic, Felix playing in Sterling. क्यों यार शॉट लेना था. Loftus-Cheek with the cross. और यार स्टर्लिंग यूजुअल में भाई मैन सिटी कलर्स में स्कोर कर देता. जस्ट सेइंग, टफ था बहुत, लेकिन Felix should have taken a shot. Over the goal. Nice try, but वही है, we can't hit. भाई मैंने क्लॉक राइट टाइम में शुरू कर दिया मेरा वापस से जस्ट अबाउट. भाई मैं देख रहा हूँ गौरव जीके को शाउट आउट. एब्सोल्युटली बहुत पन इंटेंड कर रहे हो भाई आप. देखिए मैच के दौरान हम नहीं बोलना चाहेंगे इस पर.
तो नो कमेंट्स इज व्हाट आई वुड से, लेकिन बिग अप टू यू गौरव. Sterling, yeah, कोई नहीं. देखिए यार, again for people saying Loftus-Cheek is their bad game, did he do bad in that moment? I don't think so. I know these are we talking about moments यहाँ पर. Badiashile with a mistake, लेकिन कहीं ना कहीं Enzo Fernandez भाई. और again मैं यहाँ पे comment स्टार्ट करके रखा था. Enzo Fernandez having a so-so game, I would not agree. Enzo Fernandez Kovacic runs के लिए जा रहा है, तो one guy has to sit a little bit deeper. तो Enzo is doing that. तो Enzo dynamic वाला नहीं कर रहे. जो चीज आप एक्सपेक्ट करेंगे मे बी Kovacic को करना ना, then Enzo has to sit back and do his लाइक पासेस, लॉन्ग पासेस वाला गेम जो किया. एक्चुअली 2 अच्छे पासेस आए थे फर्स्ट 15 मिनट में एंजो के. इनफैक्ट जो गोल होने वाला था ना, ऑलमोस्ट जो क्रॉस बार मारा था फिलिक्स ने, उसमें भी आई थिंक एंजो का इन्वॉल्वमेंट था. कटबैक तो उसने किया था, स्टर्लिंग ने कटबैक किया था बड़ा प्यारा. हाँ, लेकिन हाँ, फिलिक्स वन द बॉल, ही गिव इट टू एंजो, एंजो गिव इट टू स्टर्लिंग, राइट. इज अ टाइम स्टैम्प ऑन पॉइंट. हाँ, यूट्यूब में शायद 5 सेकंड आपको पीछे दिखेगा प्रभात, जो आपको स्क्रीन में. आई होप आर यू गाइस एबल टू सी दिस. 47 46 तो 5 सेकंड पीछे दिखेगा यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब जनरली लैग करता है. लेकिन मेरा एक्चुअली 47 55 47 56 47 57 2-3 सेकंड पीछे होगा टाइम स्टैम्प. बट कोई नहीं, 8 seconds behind you. कोई नहीं गौरव, as usual. no, चलो, होपफुली अनमोलदीप, बिग अप टू यू एज वेल. अगेन फॉफानाज एंड येलो पीपल, रिमेंबर वो एक चीज में थोड़ा सा डाउट था मुझे बस, लेकिन अगेन ही इज प्लेइंग वेल, ऐसा कुछ नहीं Back बुरा three में मैच. I think you can get away with yellow as a center back three. But back two लेकिन में वो ये I लीड्स would ना, not. अगर नॉन्टो को लाते हैं ना, आई वुड से टेक ऑफ फॉफाना. नॉन्टो इज लाइक सुपर ब्रो ऑन द पेस फ्रंट. अच्छा, चेंज ऑफ पेस उसको स्टार्ट नहीं कराया उन्होंने. हाँ, इटालियन जो है ना बंदा, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं करा यार. ही इज बीन इन गुड फॉर्म एज वेल. पता नहीं, मे बी इट माइट बी अ निकल और समथिंग, और जस्ट टैक्टिकल फॉर हिम टू कम ऑफ द बेंच. अरे Loftus-Cheek, come on, turn with the ball, man. Back pass Loftus-Cheek बना हुआ है इसको. आप इतने पीछे कैसे हो गए? मेरा 49.03 है अभी. मैं 7 seconds पे हूँ यार. अच्छा, पहले 4 सेकंड्स पीछे थे. नहीं, वो कोई आप नहीं. आहिस्ता आहिस्ता खींचते जाते हो, आपको पता है, ये यूजुअल है. मैं कुछ नहीं किया. इसलिए बोला ना, मैं कल ऑफ वॉचलॉग में मुझे पता है फ्रस्ट्रेशन होती है कभी भाई कभी. मैं 45 सेकंड पीछे होता था आपसे, अब मैं सिर्फ 7 सेकंड पीछे हूँ, तो मुझे भी थोड़ा क्रेडिट दे. या क्रेडिट टू मिकाइल फॉर श्योर ब्रो. नहीं, फेयर इनफ डेरेन, लेकिन जकारिया तो मुझे लग नहीं रहा है इन द पॉटर बॉल. मुझे पैसे भरने पड़े स्ट्रीम के लिए टू कैच अप विद अंकित. अरे बिग अप टू मिकाइल फॉर डूइंग दैट यार. भाई अगेन ऑलरेडी कोच मैन, अगेन फ्री किक अच्छा स्पॉट पर जीता है स्टर्लिंग ने. एट दिस पॉइंट वी नीडेड अ मार्कोस अलोंसो हु इज नॉट देयर. इफ यू नो वाला चीज है यार, ये डेंजरस हो सकता है वैसे. दिस इज अ गुड स्पॉट. भाई. अभी स्काउटिंग के बारे में, ट्रांसफर्स के बारे में क्या ही तो बात करें यार. मैच चल रहा है गौरव, लेकिन बिग अप टू यू, एब्सोल्युटली स्टार करके रख रहा हूं. विल कम यार, आई बैक टू जस्ट इट. रियलाइज्ड कि गोली कौन है. सॉरी, गोली नहीं, सॉरी, अंपायर. रेफरी भाई देखो, फॉर मी डजंट मैटर यार. अगेंस्ट चेल्सी ऑल रेफरीज आर लाइक विलन. माइकल ओलिवर इज लाइक नॉट टू ग्रेट ईदर, लेकिन एकदम मुझे एकदम शॉक मिला. ओए, ये रेफरी है आज. माइकल ओलिवर शायद हमें पेनल्टी दिया था, करेक्ट मी इफ रॉन्ग चैट. 2018 एफए कप विक्ट्री, गलती हुआ था. was it him? I think so. Why isn't Enzo taking free kicks? I don't think you associate Enzo with taking free kicks as such. मतलब he can take free kicks, but I don't think you associate. हाँ, ये वाला लग रहा है, he's lining up actually. अंकित गोल अनाउंस कर दे बस. अब 7 seconds, 8 seconds ahead or 8 seconds ahead का we want to see goal. Let's see. अरे बिल्कुल यार संजीव, क्या हाल है? नहीं यार, ऊपर चले गया, बट कोई नहीं. चलो दिशांग, थैंक्स फॉर द अपडेट ब्रो ऑन द WPL. अंकित गोल स्पॉइलर कमिंग फ्रॉम मिकाइल. नहीं हुआ यार, नहीं हुआ, बैड लक. बट कोई नहीं, वी आर गेटिंग देयर भाई. अगेन गुड प्ले बाय स्टर्लिंग. मतलब Enzo, भाई, you called for it. Enzo ने दिया किक. हाँ, लेकिन अभी तक यार, would it be fair to say Sterling has been the brightest among all the players, Chelsea players, इस गेम में? He's been one of the brightest for sure. लेकिन we've had a few
few people. Well, I guess I'd argue that Sterling in the forward line, and I think Chilwell's had a decent game too. But let's see. मुझे just one comment coming back to that set piece. मुझे लग रहा था जिस तरह it called for an indirect set piece. Yeah, you just kick it to around the wall and then Good somebody call. takes the Good shot. call. तो वो नहीं किया उन्होंने. उस साइड पे बंदा भी कोई नहीं था. राइट साइड पे they didn't have anybody standing at all. तो वो they kind of limited themselves to what they could do. उसको अरे Phoenix भाई को भी नहीं साहब स्पॉइलर आ गया है. मैं देख रही है. अरे भाई man, what a goal people. भाई साहब, is it Wesley Fofana? Wesley Fofana scored the savior for Chelsea, भाई, you can say. And yes, it is a corner. कितने दिन हो गए कॉर्नर से हम गोल नहीं किया यार, मुझे याद भी नहीं है भाई. कॉर्नर से सेट पीस गोल हुआ है. पॉटर पानी पी लिया है. गिव हिम द kudos bro. It is bring it on. Chelsea are there. भाई टॉड बॉली खड़े हो गए. दिस इज अ ग्रेट मोमेंट टू चेरिश. चेल्सी हैज स्कोर्ड अ गोल. मैं मजाक नहीं कर रहा. वी हैव एक्चुअली ब्लडी स्कोर्ड अ ब्लडी गोल. ब्रिंग इट ऑन. यकीन नहीं आ रहा वैसे. नहीं आ रहा भाई. अब स्पॉइल मत कर देना. Excellent header. Excellent corner. Excellent header. Again, Wow. Chilwell, nice delivery. I must say, Chilwell. Fofana, Strange left corner लेना. जब इसने पहला कॉर्नर लिया था फर्स्ट हाफ में and he shot over, I liked how the whole run and the confidence. So he's come through again. Oh, भाई nice. साहब. Control This किया is उसने. like- He had to take pace off the ball. You know what? भाई मैं टेम्प्ट हो रहा हूँ ऑलरेडी भाई. अर्ली सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन गोल के लिए भाई इट फील्स लाइक दिस. Thank you, God. Victory! यार मैं कितनी देर से म्यूट पे था. नहीं, I was hearing what you're saying. I don't अच्छा, think आपने म्यूट पे डाला होगा मुझे शायद. नहीं वो ये मीम चला रहा था ना, उस हाँ, ऑटोमेटिकली मीम के थ्रू. ओके. नहीं, मीम बड़ा जबरदस्त था. like a win already. नहीं, हमने गोल देख लिया यार. बड़ी आंखें तरसी हुई थी गोल देखने के लिए. Oh, it's almost a relief bro. सच में it's a big huge relief. Again, Wesley Fofana याद रखिए येलो कार्ड पर थे. We were calling that will Potter keep him, and again big up to Potter. भाई Potter OP in the house हो जाए just to keep Wesley Fofana. Should we even give him credit to some extent? Probably we should, right? हाँ, डेफिनेटली. आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस तो भी देना चाहिए. हाँ, नहीं ठीक. मैंने तो आपको यही कहा सो फार, जो वे वी आर प्लेइंग, आई डोंट माइंड एनीथिंग. इस तरह हर मैच में खेलें और गोल भी करें साथ. निशांक, अभी भगवान मेरे आंखें ले ले चाहे. निशांक ज्यादा हो गया ये. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. मुझसे भाई ओबी ब्रो. ब्रिलियंट. आई एम ग्लैड टू विटनेस पॉटर ड्रिंकिंग वाटर पीसफुली. चलो भाई माइकल, cheers man, cheers. Cheers buddy. Cheers to all the blues from my blue cup. अरे भाई साहब गोल हो गया यार. डॉटमंड वी आर कमिंग. Just saying. I don't care whether I'm overreacting bro. एक गोल हुआ है at least. अभी लेकिन गोल बचाना भी है. अभी let's not get carried away players at least. डॉटमंड की तो कहाँ पे टांग रही होंगी इस वक्त. 101 रुपए का प्रचार चढ़ा रहा हो चेल्सी फैंस. अरे भाई साहब, अभी भाई सच बताना कितने देर से दूसरा तब. भाई सच में यार, मतलब नमन, आई एम टेलिंग यू, मैं ऑलमोस्ट वेट किया टिल द टाइम वो रिप्ले दिखा और भाई वीआर नहीं आया ना बीच में. वेट किया. आई एम रिएक्टेड. बिल्कुल क्रेजी ब्रो. या ड्रिंकिंग वर्सेस याद आया. वेयर इज डैनी ड्रिंक वाटर. वो चला गया, अपना कॉन्ट्रैक्ट कटा लिया ना फाइनली. भाई कॉर्नर कंसीड किया. हमें ड्रिंक वाटर नहीं चाहिए, हमें ड्रिंक शैंपेन चाहिए भाई. वी वांट टू विन. By the way, Chilwell took that corner, और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था क्योंकि रिमेंबर फ्रॉम दैट साइड यूजुअली अ राइट फुटर टेक द कॉर्नर चेल्सी में, लेकिन Chilwell took the corner. This is not a good time to be conceding a corner right after scoring a goal. Fingers crossed. कोई नहीं, we have Chilwell, Badeshil, Koulibaly and Chilwell with the header भाई. लेकिन अभी भी Havertz भाई, people notice, I know बहुत हेट मिलता है Havertz इंपॉर्टेंट टच, लेकिन not enough. अरे भाई साहब
Heart was in my mouth. What was that? Why didn't anyone close Tyler Adams? What are we bloody doing? भाई वेस्ली फोफाना तू गोल मारा बहुत ही बढ़िया, लव यू ब्रो, but you're supposed to come front and cross him down. The guy is taking a shot like you don't exist. Whew. Crazily bad bro, crazily bad. But anyway, कोई नहीं. Usko he showed him on the inside. He should have showed him outside. I don't understand what he was trying to do. या तो वो 2 फुट या तो वो 2 फुट फुल टाइम कब होगा बता दो बस. बस बंद करो, खत्म, गेम करो, घर जाते हैं, बस हो गया आज का. blow the whistle. अरे man. Referee, blow the whistle. नहीं अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अभी वी शुड जस्ट गेट काम द गेम डाउन. मतलब इमेजिन, मतलब आई नो वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट, लाइक इस मोमेंट में वी एक्चुअली नीड समवन लाइक अ जॉर्जिनियो एंड थियागो सिल्वा टू काम अस डाउन. वी आर मिसिंग दैट ऑन द पिच. अभी we need to see अब इस वक्त this is the point जहाँ Jose team would shut up sharp and see the result out. Shit housery भी शुरू हो जाता था साथ साथ में थोड़ा बहुत. So now what I'm saying is कि I don't expect that, but I want to see us have that some of that in mind, right? कि defensively don't take risks. केपा ने केपा basically defensive organization maintain करें अब, right? Don't go crazy trying to score a second and lose your shape. Keep your shape, keep control of the ball. Agreed. Make them wait for them to make a mistake and make them pay on the counter. मतलब वी शुड रिएक्ट नाउ, वी शुड ज्यादा प्रोएक्टिव होने का, मतलब एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं होना है अपने को अभी. Yeah, we get hit on the counter in situations. Enzo with a nice ball यार, लेकिन well defended by Leeds यहाँ पर. लेकिन काउंटर में Koulibaly is there. That is where the 3 the back is helpful bro. आप देखिए टैक्टिकली 3 the back इसलिए हम बेटर करते हैं बिकॉज हम जानते हैं ट्रांजिशन में क्या होता है. भाई Loftus-Cheek losing the ball, not doing well in that moment in my opinion. Yeah, Loftus-Cheek doesn't really. एक सेकंड, काउंटर हो रहा है. वेल डन द कोवाचिच. Koulibaly इतना बाहर क्यों आ गया यार, वापस जा अंदर, डी के अंदर जा भाई. Senesi scores and Bournemouth are 2-0 up against Arsenal. Bring it on bro. Wolves Tottenham तो अभी भी 0-0 है. तो भाई the Premier League title race is there till the end, absolutely happening. Felix with a counter. एक सेकंड, Felix भाई नहीं, well defended by Leeds. इस बार end to end game हो रहा है थोड़ा यहाँ पर भी. People focus. भाई फोकस. समरविले नहीं, वापस से नहीं, मत करो. वी आर हार्ट अटैक एफसी एब्सोल्यूट होने वाला है यार हम. आई थिंक वी नीड टू जस्ट स्टॉप द गेम. डू समथिंग, जस्ट स्टॉप द गेम. थोड़ा सा जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टॉप द गेम. मैं तो बोलता हूँ डू समथिंग. लीड्स आर डेफिनेटली कीपिंग अ लॉट ऑफ पोजीशन. भाई Loftus-Cheek शुड डू बेटर यार, कम ऑन. सेकंड हाफ में Loftus-Cheek हैज बीन क्वेश्चनेबल थोड़ा, बट लो केपा भाई लकी यार, कनेक्ट नहीं हुआ. दैट वाज अ शॉट ऑन टारगेट, लकी. हाँ मैंने अपडेट कर दिया. थैंक्स कार्तिक, साक्षात, अरबाज भाई, शाउट आउट आपको. सब लोग अगेन लाइक कर दीजिए स्ट्रीम. लेट्स स्कोर मोर. आई नो चेल्सी आर नॉट स्कोरिंग मोर अभी के लिए, लेकिन होपफुली वी डू एंड वी गेट मोर लाइक्स एंड मोर सब्सक्रिप्शंस इन. होपफुली वी आर गेटिंग क्लोज टू आवर 8K मार्क यार बाय द एंड ऑफ द स्ट्रीम. भाई सब लोग Koulibaly ने बचाया आपको वैसे अनजाने में भी. His positioning was there actually. उसकी टांगों में से वो बॉल रुकी है और केपा ने कलेक्ट किया. Clifford, this is a question which comes very often. सच में बोलो तो मतलब for me Enzo and Jude are very different players यार. Enzo can kind of sit and pass. Jude is more like box to box. Jude Bellingham. तो very different players है. I know they kind of both play number 6, लेकिन I would rather take Enzo. The reason being क्योंकि यार वो double pivot में I think he can sit down, whereas Jude थोड़ा सा space देता है in behind, so you need a better defender next to Jude. लेकिन Jude is a better player अभी, लेकिन दोनों को aren't we buying Jude too? यार मुश्किल है with no Champions League यार. I know अभी तो long shot है ना. I don't see that happening सच में बोलूं तो वो फिलिक्स भी नहीं आएगा. चैंपियंस लीग नहीं है तो वो क्यों आएगा? वही there will be lot of teams playing for going for you can go back to Atleti and get Champions League again, तो उसको तो कोई मसला नहीं है. So नहीं, that is one reason why we went for Enzo big ना, क्योंकि हमें पता है कि यार समर के लिए वेट करेंगे तो who knows. भाई they are showing the goal again. What a leap यार by Fofana.
भाई people बड़ा come on कंट्रोल follow. उसने हेडर मारा है to get it under the bar. Todd Bowley's reaction was the best, bro. ये क्या चल रहा है डिफेंड करो. निशांक बोल रहे लंदन इज ब्लू. अरे भाई चिल यार चिल, इट्स ओके. ब्रिंग इन एसपी और एसपी तो है नहीं ना. एसपी है क्या, नहीं है ना एसपी. पता नहीं यार, I haven't seen the lineup. एसपी नहीं है यार. बेंच पे कौन है? आई डोंट थिंक एसपी इज देयर. बेंच पे कौन है? फिट इनफ. वो पुलिबा precautions ले चालोबा होगा ना? हाँ चालोबा इज डेफिनेटली देयर. Is Reece James एक ब्रेक हो रहा है. स्टर्लिंग नहीं हो. स्टर्लिंग भाई वो करता था ऐसे भाई. फिनिश्ड इवन इन चेल्सी. ऐसा गोल मारा है इन चेल्सी. यू ऑल रिमेंबर भाई फर्स्ट कपल ऑफ गोल्स दैट ही स्कोर्ड इन चेल्सी. भाई he has actually done that again. I must say break of attack जो हम कर रहे हैं ना, not doing too badly, लेकिन again he I should be like doing that he better. went for it. I like that he went for it. It shows that he's in the right mindset. लेकिन again wide of the goal. Mudryk को लाओ. Why Putin? I don't think it's about them. It's about basically just us keeping control. वो आपको wing से नहीं आएगा anyway. I think just मतलब I would not change much, to be very honest. This is one of those games, rare games ना. मैं बोलता हूँ पॉटर को चेंज करो, लेकिन इस गेम में मैं उल्टा बोलूंगा. I don't know, Mikhail, do you agree with this? If you look at the games under Potter, this has so far been one of the better games. Yeah, exactly. Like what's working? So, why break it? Game के basis पे I don't want to make any statements about Potter. And generally speaking, right now I'm supporting my club. I want us to win. I need us to get 3 points today. So Potter की discussion है वो मैच के बाद कर लेंगे. क्योंकि इस वक्त we're in the lead. I want to support our team and make sure कि हम ये मैच जीते आज. So अब उसके लिए अब देखना ये है कि यहाँ से Potter क्या करता है to secure the win. I need to see some sort of reaction in terms of not taking silly risks. Nice pass, Kovacic, bro. Bhai, everyone criticizing Havertz. Havertz had a good touch, लेकिन I think who lost? Enzo lost the ball. कोई नहीं. Kovacic again winning the ball. Yes, well done. Havertz, keep it, bro. Keep it. हाँ, चलो, Havertz, well done. Havertz dropping deep. I am again going to be saying it. I know, बहुत ही targeted hate मिल रहा है Havertz को. Havertz deserves that hate. ठीक खेल रहा है आज यार, कोई मसला नहीं है. He's played very well. To be very honest, मैं direct term से बोलूँ, Aubameyang is a very good player in what he does. Trust me. लेकिन I don't see Aubameyang holding the ball as much as what. Aubameyang would not be coming in this deep to help with recovering the ball. Exactly. Arsenal score. अब ठीक है, अगर Aubameyang को चांस मिला होता, Aubameyang अच्छा खेल रहा होता, that's a different thing. Right now we have to focus on who's on the pitch and what they're doing. I think they're doing what they're supposed to be doing. ठीक है. We still have 25-30 minutes to go. So अब can we see out a result? ये अब I don't have full confidence कि we can, but let's see. यहाँ पे criticism आएगा Potter पे अगर हम if we are able to not see out a win from here, because technically we right now we don't need to do anything except just to see out the result, the score line. अगर हम risk ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? To try to get a second goal. अगर एक second. भाई ऑफसाइड का कॉल है. नहीं भाई, केपा ने जस्ट एक टच किया है, बट आई थॉट इज ऑफसाइड दे दिया. चलो ऑफसाइड भाई. आर्सेनल गोल, यस, थॉमस पार्टे गोल हुआ है और मैंने अपडेट कर दिया. आई डोंट नो भाई, आर यू गाइस एबल टू सी दिस? आई नो जनरली बड़ा स्क्रीन होता है तो यू आर एबल टू सी. अभी फॉर एग्जांपल यू माइट बी एबल टू सी, बट आई एम ट्राइंग टू पुट इट अप ऑल द स्कोर्स फॉर पीपल हु माइट नॉट बी एबल टू वॉच ऑल द मैचेस. लेकिन हाँ, पार्टे स्कोर्स, यस एग्जैक्टली. आर्सेनल आ रहा है वापस. आर्सेनल हैव गोल्स इन देम. वो आ जाते हैं वापस, दे कम बैक. 1-2 गोल कर लेते हैं वो सेकंड हाफ में, जस्ट टू कम बैक इनटू अ गेम. सो इट्स नॉट ओवर फॉर देम. अगर उनकी मैच क्लॉक इज द सेम एज आवर्स. या सेम एज आवर्स. तो बस अभी टाइम है उनके पास. But anyway, by Tiger Beast, I'm seeing that Tiger Beast, you're one of the most positive subscribers, bro. Abhi is not the point. सच में बोलूं, direct terms में, I don't think right now is the time to talk about Potter. अगर नहीं जीते तो Dortmund में तो he's out and all नहीं. We just need to focus on our team and hope that they do well. And I think let's appreciate Potter यार for once. हम जितना गाली दिए, मैं खुद have said so many times he's not been positive. आज voice भी रखा है, बंदे ने बोला यार फर्स्ट हाफ में when we were not doing well in towards the end, he was actually standing up and talking and shouting at the players. He's done that, and I think even in terms of lack of changes, you can say Loftus-Cheek, by the way, giving the ball away, and that is what shows that he's not a wing back, giving a free kick away, but कोई नहीं, important free kick. देखिए, he kept Fofana,
रिस्क है बट लिया ना. आई थिंक वहां पर मैं पॉटर को दूंगा क्रेडिट. गैलेगर आ रहा है, जकारिया आ रहा है, तो लुक्स लाइक वी आर शटिंग शॉप ब्रो. I like that. That's what I want to see. That is good. That Do is good. something Exactly. that shows me what Tactical. you're trying to do. The thought process kya hai? Thought process is to protect the lead, put in a few midfielders. I like it. Felix going off, and I can understand that for people. I know काफी criticism होगी why Felix off and he looks so bright. Felix has literally played every minute of every game from the time वो red card से वापस आया था. Every minute almost. Last match में भी मैं देख रहा था. I know मैं खुद criticize किया था पॉटर को, लेकिन last match में भी I could sense it in the second half. Felix wasn't himself. तो we want him fresh for Dortmund as well. We cannot forget that. Sterling is off. Again, remember, Sterling is back after injury. He's not played a lot of 90 minutes. I can see that. लेकिन आप बोल सकते हो दो proper defensive changes. Proper defensive है यार भाई. We are going Zakaria and Gallagher in terms of Felix and Sterling. तो अभी it's all about Havertz being अकेला. और क्या बोलोगे, मतलब it's maybe what 3-6-1. Is that a formation even? ठीक है, जो भी है, I like the idea behind it. Hopefully they are all going to be playing in the midfield to do a mid block, and I would argue कि अब now you want to put an Aubameyang up front just to kind of be a target man कि अगर आप if you want to ping a ball forward. लेकिन I think defensively वो Aubameyang won't be able to help out either. Not to say कि you need 11 defenders on the pitch, but I can see why Havertz is still on as well. कि if you just wanna have him drop back deeper, maybe that's something he can still do in the game. लेकिन Loftus-Cheek having an iffy few moments, I must say. वही luckily उसको नॉन्टो भी आ गया भाई साहब. नॉन्टो भी आ गया यार. नॉन्टो है. ये नॉन्टो इज डेंजर यार ब्रो. मतलब अब डर लग रहा है लॉफ्टस-चीक वर्सेस नॉन्टो. देखते हैं भाई. Zakaria with a kick in the air and nothing happened. Zakaria भाई with a bad moment in there. मैं बोलना चाहूंगा. अरे मुजाहिद, brilliant bro, nice to see you always. Big up to Mujahid. ये देखो ना, this is what a back three does. आपने देखा ब्रेक हुई, Koulibaly was very easily able to snuff it out. This is what a back three does. यहाँ पे back four खेल रहे होते हैं, यहाँ पे अगर हम back four खेल रहे होते तो we would have been in panic FC mode right now, running towards our own goal. यही बात मैं बार-बार करता हूँ कि हमारी unfortunately this is a problem कि we do look defensively better when we play a back three. This is not something to take lightly. It gives us the stability. Unfortunately, in these moments, आप back four जितना चाहें, we don't have the players right now to cover those situations in a back four. कौन इफी खेल रहा है? Loftus-Cheek? Loftus-Cheek bro, again one more free kick. बहुत ज्यादा free kicks दे रहा है. I think उसको बॉल किक आउट कर देना चाहिए यार, in my opinion. In such opinion, मतलब उसको बॉल ही नहीं मिल रहा है, कहाँ खेलूं. थक गया. I think this is where Potter needs to figure out if he needs to replace. Actually, हाँ, you have a point because Loftus-Cheek hasn't played a lot of 90 minutes either. Actually. थक गया. वो you can see in his body language. Right wing back में बहुत भागना पड़ता है भाई. हाँ, तो अब कौन वहाँ पे किसको लेके आओगे? Who is available? Mudryk? नहीं, Gallagher has played right wing back in a couple of games, although unsuccessfully. Just saying. Mudryk can do a job there for 20 minutes, man. Come on. नहीं, लेकिन defensive. एक second, भाई almost goal header. भाई we know how we do in crosses and that's what happened automatically, but just about wide. But कोई नहीं. भाई again, भाई सब लोग यहाँ पर जो भी देख रहे हो ना, भाई our subscribers have not increased, and I know him as a matter of fact because YouTube allows like, subscribe, guys. Chelsea. बहुत लोग यहाँ पर है भाई. सब्सक्राइब करिए. Doesn't take a buck. Absolutely helps us as well as you because you are part of the almighty fan. Right now. Let's do it. And quick यहाँ पर बोलना चाहूंगा भाई, shout out, special shout out देता हूँ मैं for the members, especially Mikhail being one, of course, Museb, Darren, Gaurav, भाई पुदिन, मुजाहिद, सब लोग भाई, क्लिफर्ड. बहुत लोग को नहीं मालूम होगा that we have a prediction league going on. The winner of the prediction league gets a prize at the end of the season. So that is definitely on, along with a couple other perks जो आप check करिएगा definitely. भाई let's get in some emojis out यार, members. भाई let's get in some emojis. Let's get some inspiration in the chat. We need to somehow, मतलब मैं तो बोलता हूँ go proper Mourinho mode. I don't really care right now. Proper old school Mourinho. यार ये जरूरी होता है. You have to play in scenarios, right? कि okay, अब for the next. Did you see that? Enzo with a pass, Havertz के पिछवाड़े में लग गया. Havertz को पता नहीं कहाँ गया बॉल. गोली वाली बचा ली. भाई आर्सेनल इक्वलाइज कर लिए.
Yes. बोला था मैंने आपको बोला था। लेकिन वीआर चेक हो रहा है शायद। थॉमस पार्टे अगेन, ओ माय गॉड, डोंट टेल मी। Yeah, are you surprised? Arsenal have come back from 2 goals down, I think twice or this season already. Anyway, let's see. I think goal, Ben White goal, Ben White है. Ben White has been They are playing giving in the that goal. mentality. If the match requires them to score 3 goals, they score 3 goals. If the match requires them to score 2, they go score 2 goals. कल They're able मिखाइल to मैं step एक it up and स्टैट get. पढ़ रहा था. Exactly, you know, Arsenal, Manchester United in that form. Manchester United लास्ट 12 मैचेस में, यहाँ पर कॉर्नर कंसीड किया हमने, लास्ट 12 मैचेस में they have scored at least 2 or more goals consecutively. It's crazy, right? हमने कैसे कॉर्नर कंसीड कर दिया? Who touched अच्छा it? एक सेकेंड गौरव, मैं आपको बोलना चाहूंगा भाई, एवरीवन इन द चैट भाई, प्लीज 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 फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज 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 फॉलो मी ऑन द कम्युनिटी पोस्ट, इवन माय ट्विटर. मैं हर जगह लिटरली पोस्ट करता हूँ भाई. गौरव, अगर आप ये सब पूछ रहे हो ना, बीइंग अ मेंबर फॉर सो लॉन्ग, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा. यू आर पार्ट ऑफ द मेंबर्स ग्रुप. आप अगर साइलेंट कर रहे हो तो आपकी मर्जी टोटली, लेकिन जी के भाई आप हो मेंबर्स ग्रुप में. मैं हर वीकेंड के पहले मैं एक मैसेज डालता हूँ इन माय लाइव स्ट्रीम. आई गिव अ शाउट आउट लिटरली एवरी टाइम, एवरी लाइव स्ट्रीम, और हर एक डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा रहता है. तो भाई डेफिनेटली चेकआउट करिए. मैं करता हूँ उसका जो सिंपल रूल है, यू जस्ट प्रेडिक्ट बिफोर द वीकेंड, और मैं एक मैसेज डालता हूँ, यू जस्ट प्रेडिक्ट, या ऑन माय प्रीव्यू स्ट्रीम बिफोर द वीकेंड आप कमेंट कर डाल सकते हो विद योर स्कोर प्रेडिक्शंस, और एवरेज स्कोर पर वीक, हाईएस्ट एवरेज स्कोर पर वीक विल बी द विनर एट द एंड ऑफ द सीजन. बिग अप टू यू. Gallagher winning a foul. अभी तो यार टोटल नेगेटिव फुटबॉल बोल दो, हराम बॉल बोल दो, वी डोंट केयर यार. मतलब राइट नाउ आई एम लाइक ओके. एंड क्या हम खेल भी क्या रहे हैं? लॉफ्टस चीक भाई साहब गुस्सा दिला रहा है. लॉफ्टस चीक मैन अगेन एंड अगेन इज ब्लडी लूजिंग द बॉल मैन. भाई फर्स्ट हाफ में जो लोग क्रिटिसाइज करते थे ना, वो मैं अग्री नहीं कर रहा था. सेकंड हाफ में ब्लडी ही डिजर्व्स ऑल द क्रिटिसिज्म. ही इज बीन सो बैड, और इट्स नॉट हिज मिस्टेक, इज नॉट अ विंग बैक. कहीं ना कहीं ही इज बीन अ बिट टू कॉन्शियस, आई डोंट नो. उतार लेना अरे चाहिए उसको. They should. He's getting exposed a little bit. खुद ही गिरा, लेकिन he's getting exposed थोड़ा सा. So I think उसको उतार लेना चाहिए. उसकी जगह किसको डालें, लेकिन ये नहीं समझ आ रही मुझे. Chukwuemeka coming in. माउंट अब क्या होगा? चुक्वेमेका. Kovacic also going off. अच्छा, But it's a direct swap. अरे that doesn't solve the problem of what Loftus-Cheek is. अब ये देखो नहीं, ना. मुझे लगता है ना, तो गैलेगर माइट गो वाइड. गैलेगर माइट गो वाइड. हमें अपना फॉर्मेशन चेंज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से. गैलेगर माइट गो वाइड, ही माइट बिकम अ विंग बैक, और जकारिया एंजो आर इन बिटवीन. इन फ्रंट होगा चुकुमेका. ठीक है, तो यू स्टिल आर्मबैंड हैव किसको दैट दिया? 3 मैन मिडफील्ड. आर्मबैंड किसको दिया? हाँ, मैं कुलिबाली शायद मिस कर दिया वो पार्ट. आई एम प्रीटी श्योर केपा को ही मिला होगा. केपा को. हाँ, वही होना चाहिए नहीं, या स्टर्लिंग, आई डोंट नो, लेट्स सी. I'm just curious, just to see के क्या है, what are the thinking. David Moyes sacked in the morning. Bhai, shout out bro, Clifford. But shout out, by the way, Clifford had gifted a membership to Chelzer. So Chelzer, आप अगर देख रहे हो या देखने वाले हो स्ट्रीम को, please contact me. All the members, in fact, do contact me if you're not part of basically a members group on Instagram that we have. So there's a lot of communication that we do on a daily basis वहाँ पर. तो definitely आप मुझे ऐड करिए, और मुझे rather बोलिए, और मैं ऐड करता हूँ आपको. That is Chelzer. But again, Clifford, big up. Chelzer has become an almighty coach because of Clifford. Ruben Loftus-Cheek, please get him out. यार डेरेन बोल रहे हैं. हाँ, रूबन लॉफ्टस-चीक अभी भी खेल रहा है, लेकिन वो नहीं गया है. मैं वही कह रहा हूँ कि वो he is the one that's struggling right now. उसको नहीं उतारा. How is RLC and Havertz? Havertz का पता नहीं. अभिषेक यार, मतलब अभिषेक ब्रो, I love you bro, but I have no criticism for Havertz in this match, and you're really hearing me out. I have no criticism of Havertz. The only reason मैं बोलूंगा take off Havertz, but that's a good point maybe, क्योंकि वो चैंपियंस लीग स्क्वाड में खाली अकेला स्ट्राइकर है. So maybe from that perspective, I might consider bringing Aubameyang. लेकिन Havertz is able to keep a little bit ball more naturally compared to Aubameyang. That is what we need. We need someone. Gallagher with a ब्रेक, पॉसिबल ब्रेक है, बीच में है भाई साहब. चुकुमेका को दे, चुकुमेका खत्म कर यार. नहीं यार. And again, for people out there calling in social media, where is Chukwuemeka, etc. By that is why Chukwuemeka is not starting games. भाई उसका जो momentum है, and that is where in this position he shouldn't have lost the ball. That is inexperience for you.
again is a great player. I'm telling you that he'll become a great player, लेकिन he's not ready right now. सच में बोलूं तो चूंकि मैं यार आपस की बात है, giving credit where it's due. Loftus-Cheek had a good clearance there from goal to begin the break. पूरी sequence जो थी, Loftus-Cheek made a good clearance. Abhishek getting his comment about Arsenal and Chelsea, of course. I knew that. Great, bro. I'll bring it on. No two ways about it. या कोई नहीं, डेड तो नहीं बोलूंगा रिवाज, डेड तो नहीं बोलूंगा सब्स। देखिए This season, I think they are favorites to win the Europa League, aren't they? या दे probably should be यार, definitely. अब तो प्रीमियर लीग भी लग रहा है यार आफ्टर द कमबैक वापस से, लेकिन अगेन Yeah, honestly, मैं तंग आ गया हूँ with Pep dominating the Premier League. I don't mind if somebody else wins it. Our rivalries तो हमारी सबसे हैं. Like we have 19 rivalries in the Premier League, so what's the point? वो भी है। देखो हैवर्ड जो अभी किया ना 1-2 करके, जो पोजीशन फुटबॉल खेलता है आराम से कामली, आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक दैट इज व्हाट हिज ट्रेट इज। आई डोंट थिंक हिज ट्रेट इज स्कोरिंग गोल्स। मतलब ऑफ कोर्स वी नीड अ सेकंड गोल, आई डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन आई रादर कीप द यार बॉल ये क्या बात है, मतलब कि अगर फिलिक्स भी गोल नहीं करेगा और हैवर्ट्स भी गोल नहीं करेगा तो वी नीड अ गोल स्कोरर। देन कौन है गोल स्कोरर? ओबामियांग। वो ये इसलिए लोग बोल रहे हैं ना ओबामियांग क्यों नहीं, लेकिन राइट नाउ वन Aubameyang, it's obvious कि Aubameyang they are not vested in Aubameyang at all. Aubameyang will be leaving. अब to get a result on the day, should you not be able to use him? I think you should be able to. लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि वो उसकी जिस तरह वो मैच देख रहा था पहले हाफ में, it didn't look like he was mentally ready to come on. राइट, आई हियर यू बिल्कुल। अच्छा टाइगर भी आप जो पूछ रहे हो ना, तो जितने ज्यादा मेंबर्स होते हैं ना उतना ज्यादा स्टिकर्स अलाउ करता है मुझे यूट्यूब। भाई गंदा टैकल था लॉफ्टस-चीक का, बट लकीली कुछ हुआ नहीं, बहुत दूर से खेला। एंजो फर्नांडेज विनिंग द बॉल, नाइसली डन हैवर्ट्स कीपिंग द बॉल एज वेल, वेल डन हैवर्ट्स। अगेन लॉफ्टस-चीक क्या कर रहे हैं यार? लॉफ्टस-चीक को अब उतार लेना चाहिए मेरे ख्याल में। ब्रिलियंट, लेकिन कोई है नहीं बीच में, कोई नहीं। बहुत ही अच्छा काउंटर था चेल्सी का, इन माय ओपिनियन बहुत अच्छा काउंटर था। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था, मोर द नंबर ऑफ मेंबर्स यूट्यूब अलाउज मी मोर स्टिकर्स। मैं जनरली सब फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, सो सब क्लब्स का बेसिकली दो डाला हूं। नाइस ब्रेक, अच्छी ब्रेक थी। बट अगेन भाई बढ़िया शिले गेटिंग बीटन। ओ भाई साहब डिफ्लेक्शन लगा, हार्ट अटैक होने वाला था अभी ऑलमोस्ट। ना करो, he should get more chances, I agree with that comment, लेकिन why is not starting? I don't think he deserves a start as well. In a 4-2-3-1 system, he does not fit naturally. अभी के लिए, maybe in future he does. भाई डेफिनेटली फाउल है चेल्सी का, चेल्सी जीती है होपफुली। नॉन्टो विद अ फाउल, या हाँ नहीं, चांस गैलेगर के लिए बोल सकते नहीं, आई डोंट नो। इट्स अ 5-4-1 फॉर चेल्सी ऑन डिफेंस। हाँ 5-4-1 ही है बिल्कुल। पुट इट राइट अनमोलदीप। ये नॉन्टो क्या है? वो व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर इज ही? ही इज अ स्ट्राइकर कम विंगर यार, प्रॉपर पेसी। लेट मी, मतलब आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, पता नहीं आप इंटरनेशनल फुटबॉल कितना देखे हो ड्यूरिंग दैट टाइम। डेविड ओडोंकर एक बंदा था और एक सेबास्टियन जियोविंको था। तो दीज आर पीपल ऑफ जर्मन एंड इटालियन डिसेंट, ठीक है। डेविड ओडोंकर अपना टोरंटो एफसी का हाँ टोरंटो, एग्जैक्टली एटॉमिक मैन। यू राइट एब्सोल्युटली। तो जियोविंको और ओडोंकर का मेरे को मिक्सचर लगता है बेसिकली। पीपल यू नो इट, आई थिंक अभिषेक आपको शाउट आउट है, यू नो आई गेस। सो सेबास्टियन जोविंको तो मैं आई वांटेड हिम एट चेल्सी क्योंकि एक जमाने में ही वाज लाइटिंग इट अप एट टोरंटो एफसी। हाँ यू नो व्हाट, एक बंदा आपको याद होगा, मिरोस्लाव स्टॉक वाज अ विंगर, ही काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी ऑफ जियोविंको। लेकिन अरे भाई एक सेकेंड, ये क्या हुआ? स्टुअर्ट को लग गया यार बहुत गंदी तरह। आई होप शी इज फाइन। नॉन्टो चिल्ला रहे भाई, कैसे फ्री किक हमने जीता है शायद। भाई आई होप शी इज फाइन यार, वो शी फेल प्रीटी बैडली। अगेन वेस्ली फफाना डिड नॉट केयर, नॉन्टो विद अ पुश, क्लियर फाउल यार। भाई बेचारी यार, वो अपना काम कर रही थी बंदी। आई होप शी इज फाइन। गंदा गिरी यार बहुत। वाइप आउट। बिग अप टू हर यार, बिग अप टू हर, शी जस्ट स्टूड अप। हां वाइप आउट, दो बंदों को जाके लगा बेचारा वो। अच्छा यहाँ पर एक भाई ऑफर हो रहा है एक और, आई बिलीव मेंबरशिप किसको मिला आज? बिग अप क्लिफर्ड अगेन ब्रो। अरे थैंक्स ब्रो क्लिफर्ड, मच लव टू यू, एब्सोल्युटली शाउट आउट है क्लिफर्ड को। किसको मिला मेंबरशिप भी की चल रही है बटाई इन द
चैट एक सेकंड भाई, केपा ले ले बॉल, तू टेंशन मत दे अभी भाई। बहुत लोग ने क्लेम तो किया है लेकिन मिला किसको भाई पता नहीं यार। सब लोग पूछे ड्रॉग बाबा किधर है, आई हैव नो आइडिया। मैसेज करता हूँ मैच के बाद में यार, कोई नहीं। ही इज ऑलवेज वेलकम टू हिज चैनल एज वेल एज एनीवन एल्स। बिग अप टू मिकाइल ब्री यार। मिकाइल आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू बी द एंटायर मैच में बट ऑलवेज इज देयर यार। मतलब सुबह सुबह आई एम लाइक लिटरली एवरी गेम एंड इट्स ग्रेट टू हैव मिकाइल ऑलवेज। Thanks for फफाना having me, पेस इज बिल्डिंग। brother. Thanks for having me always. कोई मसला नहीं है. We're all blues. We're all watching the game regardless, right? So it's fun to Things are have. getting out of line. निखिल बोले दीदी बोली मेरी क्या गलती है बेचारी को बहुत लगी होगी यार, लेकिन आई होप शी इज फाइन यार, दैट्स ऑल आई कैन से। भाई नॉन्टो सच में बहुत ही आया है, लेकिन क्लिफर्ड इज रॉबिनहुड ऑफ चैनल, यस बिल्कुल। 5 members gift, wow, brilliant bro, brilliant. Big up to Clifford यार भाई। again भाई सब welcome to all the members again, everyone who's becoming a member, remember to DM me, मैं आपको ऐड करूंगा in the members group. Somerville looks injured meanwhile. तो भाई क्लिफर्ड आपके लिए भाई स्पेशली ये absolutely big up to Clifford यार। helps a lot bro, absolutely, always already supporting the channel and still doing it, and every member and every subscriber as well. Loftus Cheek with the Membership. clearance from the corner. Balls back and Kepa lets it go out of bounds. Okay, good. हाँ लेकिन ये प्रॉब्लम है ना, किसको मिलती है पता नहीं लगता थोड़ी देर तक किसको मिली है। एनीवे ये क्या चल रहा है अंकित? I don't even understand what's going on. so there's an option of an existing member in the chat to buy a gift randomly, YouTube पिक करता है और आप बाई करो उनके लिए मेंबरशिप। ओके, एंजो फर्नांडिस बीइंग subbed off. Okay, he's making all the substitutes राजा। मडुएके और चालोबा coming in, लॉफ्टस चीक एंड फर्नांडिस गोइंग ऑफ। भाई अपने अपने क्या 6 सब्स्टिट्यूशन कर लिए? 5 ही होते हैं ना ये क्या हो गया? बेसिकली यूज्ड ऑल द सब्स्टिट्यूशंस। भाई एंजो फर्नांडिस गोइंग ऑफ, इज इट रिस्की? आई डोंट नो। कम से कम Loftus Cheek needed to come off. या चालोबा एंड मडुएके कमिंग ऑन। तो अभी सेंट्रल मिडफील्ड में कौन होगा? खाली Gallagher. जकारिया और गैलेगर बस। Madueke will go to the right. क्लिफर्ड इज द सांता क्लॉज। अरे ब्रिलियंट यार। I'm waiting for the comment कि Aubameyang क्यों नहीं आया? हाँ भाई यहाँ पर आई नो व्हाट इज सेइंग मिकाइल, लेकिन अनमोलदीप थैंक्स यार फॉर सेइंग इट। टाइगर बीच, दिस इज योर आंसर, आप जो पूछ रहे थे ना भाई। चिलवेल हैज हैड अ गुड गेम, अभी देखो इज नॉट गिविंग अप। 85 मिनट्स इन, चिलवेल लड़ाई करने की जरूरत नहीं। चिलवेल you don't need a card, you don't need a card, keep your head. I know it's Leeds, it's dirty Leeds and they'll be dirty no matter what, but you don't need to do it unnecessary है bro। हाँ टाइम वेस्ट कर लेकिन मारा मारी मत कर। और रेफरी आई होप वो होता है ना जबरदस्ती दोनों को येलो कार्ड दे देता वाला चीज, वो नहीं करे आई होप। ये क्या था? I don't even. उसने कोई गाली दिया उसको या क्या किया? Basically, Chilwell didn't lose his, what do you say? Even referee is trying to calm him down. मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। क्या ये तो भाई बच्चों लोग की लड़ाई हुई, बेबीज, टू बेबीज फाइटिंग हुआ क्या मतलब? तो वो गाली गोली दिया कोई तो वो उस पे he is like इतना गुस्सा, कुछ बोला होगा यार वो फुटबॉल में तो बहुत, अगर आप फुटबॉल पे जाओ देखने के लिए तो काफी काफी गलाजत चल रही होती है, तो आप बुरा नहीं मानना चाहिए चिलवेल भाई को। हाँ भाई अगेन चेल्जर को चेल्जर मैं आपको बोल रहा हूँ यार एक हफ्ते से, तो पहले बोल देता हूँ चेल्जर मुझे प्लीज डीएम करिए आप अगर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे हो। डू सेंड मी अ मैसेज ब्रो। Combining well with Havertz. Mudryk doesn't know where to go, back pass, loses the ball. Chalobah is playing wing back bro. अच्छा ठीक है, हाँ that's better. हाँ ठीक है, मतलब एटलीस्ट डिफेंसिव माइंडेड है। अच्छा मुड्रिक, जो भी लोग पूछ रहे हैं अभी, आई नो काउंटर पे हम गोल मार सकते हैं। मडुएके इज देयर ब्रो। आप चालोबा लाए एक डिफेंसिव एलिमेंट और एक मडुएके लाए फॉर अ काउंटर टू बी एबल टू स्कोर, तो ठीक है बिटवीन मुड्रिक एंड मडुएके। मडुएके क्यों? क्योंकि चैंपियंस लीग में बंदा नहीं है यार। आई थिंक इट्स अ फेयर कॉल बाय पॉटर, आई डोंट डिसएग्री विद हिम। और आप मुड्रिक को क्यों लाते हैं जल्दी? Like I've seen good things throughout the game, but we just need to see out a result now. आखिरी 5, 7, 8 मिनट हैं। Let's see out a result and
नॉन्टो भाई डर लग रहा है, लेकिन लास्ट के 5 मिनट रियली Come on, जॉन वेलकम टू द Chalaba. फैमिली, See him out. अभिनव वेलकम टू द फैमिली एज वेल। चलो थैंक्स फॉर सेइंग दैट। भाई सब लोग मुझे डीएम करिए, आपको ऐड करता हूं मैं। आई हैव अ मेंबर्स ग्रुप एंड डेफिनेटली द प्रेडिक्शन लीग दैट यू आर वेलकम एज वेल द फॉलोइंग वीक। एक गोल होने वाला है, मैं बच गया। आई थॉट इट्स अ गोल फॉर वन मोमेंट, मैं सोचा केपा को बीट कर दिया भाई एलिंग ने हेडर से, लूपिंग हेडर, लेकिन नहीं भाई। क्रॉसेस कितने बार बोल बोल के थक गया, मैं रिकॉर्ड करके चला सकता हूं भाई पूरे मैच में हर 5 मिनट में। जस्ट डू नॉट लेट द ऑपोजिशन ब्लडी क्रॉस द बॉल। व्हाई डोंट वी लिसन ब्रो, व्हाई डोंट वी, मतलब कोई बता भी रहा है कि उन्हें क्रॉस मत करने दीजिए, जस्ट क्लोज डाउन नो मैटर व्हाट, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग, नॉट डिफेंड, जस्ट क्लोज देम डाउन। I agree with That you, is the Ankit. Yeah. Like that's how. That's maybe it's oversimplistic. Maybe it's not that easy to execute on the pitch, especially in the 87th minute. But my expectation is not to allow the cross. Cross को defend करना तो is desperation. वो तो at that point, you know, it's desperation. Everybody has to make an effort. But cross को allow क्यों कर रहे हैं? I think that is the part of the coaching यार, सच में बोलता हूँ तो, मतलब again Overload करना पड़ता है ना. To block the cross, you have to overload. आपको एक second बंदा commit करना पड़ता है. हाँ नहीं, Mikhail is right. Just to say like you know, मैं basically I was more comfortable behind the striker. जब भी मैं वाइड खेलता था ना, I didn't have that kind of you know क्या बोलते हैं press to be able to do that. और मुझे बहुत जल्दी मेरे कोच ने डाल दिया था बीच में खेल, तो तू नहीं कर पा रहा प्रेस, क्योंकि मैं क्रॉस अलाउ करता था। एंड दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से लर्न किया हो यार। and I'm these guys should be knowing better, इतना हर मैच में हो रहा है भाई। बॉडी स्टोरी वाला ब्रिलियंट बॉल, ऑसम बॉल, चिलवेल ऑन द ओवरलैप भाई, नाइस, लेकिन कोई है नहीं बीच में, कोई नहीं। नाइसली क्लियर्ड बाय लीड्स ऑलमोस्ट, लेकिन Nice pass by Baduashile. Chilwell with a good run into the box. गैलेगर ब्रो ब्रिलियंट, Cross. Nobody's there. गैलेगर ऑसम, लेकिन स्कोर करना चाहिए था। व्हाट वो गैलेगर, फॉर ऑल द पीपल क्रिटिसाइजिंग गैलेगर भाई, द गाय डज नॉट गिव अप, द गाय डज नॉट गिव अप एट ऑल। कॉर्नर हुआ ना? नहीं, अच्छा पकड़ लिया, बच गया होना चाहिए था लेकिन। नाइस हसल बाय गैलेगर ऑल राउंड, एक्सीलेंट। चलो बा, ये हसल माउंट यूज्ड टू शो इनिशियली, आजकल नहीं दिखाता माउंट, but that was the kind of situation that Mount you expected from Mount, as that kind of energy. So it's good to see Gallagher giving that energy. So that's the standard, right? Okay, you chase everything down and then you still go for goal. Love it. Wolves are 1-0. Okay, that's interesting. Spurs, come on, mud. come on Chelsea. ये क्या हो गया? Come on Chelsea. Thanks Darren. भाई फ्री किक है क्या? कॉर्नर है। चलो बा, कंसीडर को कॉर्नर। डर लग रहा है मिकाइल, डर लग रहा है। I can feel something. I'm a little scared right now. 90th minute people. कॉर्नर है। आई थिंक हाइट बेसिस में वी आर द बेटर टीम इस गेम में, सच में बोलूं तो, लेकिन स्टिल। Are we covering everybody is the question. चैट नहीं देख रहा है एक सेकंड के लिए। वो गोल हो गया, नहीं हुआ, बच गया। कैसे नहीं हुआ गोल? Leeds supporters will be like, भाई how the hell did it not become a goal? We escaped somehow. Ball still in play. अच्छा अब बात चला गया। अरे यार बिल्कुल यार मुझसे भाई, यार ये तो हार्ट अटैक एफसी जो होगी है फिर से। मैन वो क्रॉस वापस से मिकाइल, सेम चीज मैं क्या ही तो बोलूं यार। Havertz with the bad foul. कोई नहीं भाई, 4 मिनट्स ऑफ स्टॉपेज टाइम। क्या डर लग रहा है यार अब तो भाई। दिस इज लाइक हाउ इट हैज बीन, वी आर लाइक क्रेविंग फॉर अ विक्ट्री इतना। Havertz man again, लेकिन not cleared enough. Well done to Chilwell, just about, लेकिन नहीं, not cleared fully. Kepa man, भाई सब लोग, I would like to give this to Havertz bro. Kai Havertz man, what an important header again. Defensively, banda important है in the box. I know he's nowhere close to a Didier Drogba, but I would like to say Didier Drogba ka, when we used to be in the lead and why Chelsea won so many matches in the second half of matches, what Drogba did defensively for Chelsea, people don't talk about much. The guy was colossal भाई, एकदम। आप
देना चाहोगे, that is something that Havertz needs to learn. People like Havertz and Loftus-Cheek have that height, have that physicality. They need to use it more. That's what I would say. But anyway, scary तो है भाई, क्लिफर्ड बहुत scary है. यार बॉल रखो अपने अगलों के हाफ में, keep the ball in their half. Oh, the whistle. Let's not let the ball come into our. अरे टॉड बॉली देख रहे हैं कितना समय बाकी है. टॉड बॉली इज आउट विद दिस, मैं जो भी वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं, प्रीटी श्योर इज chelseafc.com, लेकिन वो देख रहे हैं भाई कितना सेकंड्स बाकी है. ही इज ऑलरेडी इन हिज क्लॉक. टाइम है, शिट हाउसरी करिए यार भाई. वी नीड अ रूडिगर राइट नाउ. जस्ट डू सम शिट हाउसरी ब्रो. आई डोंट केयर, जस्ट गेट अ विक्ट्री राइट नाउ. डॉर्टमंड का देखेंगे ट्यूसडे को. मुझसे भाई some comments bro आज. Kai Havertz ban by again. Let's be honest, I gave hate to Havertz, but I feel that there was a lot of targeted hate यार. I must say that he's done a proper job आज. I'm just concerned about Tuesday now. सच में बोलूं तो is it offside? I think it might be offside. लेकिन नहीं दिया रेफरी ने. Linesman or other. Keep the ball, just keep the ball. Gallagher. भाई Havertz को यूज करना. Havertz yes. वेल डन ब्रो, वेल डन. लेकिन कोई नहीं, नॉन्टो विद द बॉल. लीड्स को मिल गया वापस से बॉल. कोई नहीं, लीड्स का काउंटर हो रहा है. लेट अस नॉट गेट काउंटर्ड. भाई चिलवेल भाग. बाद में देखेंगे. भाग. चिलवेल यार नहीं यार, किक आउट करना था ना. चिलवेल थ्रो इन के लिए किक आउट क्यों नहीं किया? व्हाट वाज ही डूइंग? ही गेव अ कॉर्नर एट द एंड ऑफ द डे. Tiger Beach is not the right time to speak this, bro. We'll talk about it full time. Don't worry. Much love to you. Referee blow the whistle. भाई Meslier आ गया ऊपर. The goalkeeper has come as well. This is literally the last minute. ना करो यार, ना करो. Why are you doing this to me? No यार, come on. पकड़ मत चिलवेल, पकड़ मत. नंबर 5 को पकड़ क्यों रहा है? कॉक को एक सेकंड. बच गया और भाई वो Meslier विद हेडर ऑलमोस्ट. गोलकीपर का बचाया. केपा ने बचा लिया जस्ट अबाउट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी हैव नॉट डन वेल डिफेंसिव इन द लास्ट 7 to 8 मिनट्स. लेकिन वो क्लियर है कि हमने जीता नहीं है फ्रॉम गॉड नोज व्हेन. तो भाई लास्ट विक्ट्री कौन सी थी यार? मैं तो भूल गया. 3 पॉइंट्स आ रहे हैं. गोली ने हेडर मारा. ओए होए. हाँ, Meslier ने मारा ना. Oh my God, this is a Chelsea victory, man. We have won it. Up the Blues, man. We have learned how to win again. We have seen a win. We have seen a win in 2023. Is it like, मुझे लग रहा है भाई मैं basically Mr. World बन गया हूँ. वाला moment हो रहा है. What is happening, man? I don't really care whatever happens right now, at least for the time being. But it is basically Chelsea 3 points. Bhai, are we up the Premier League table? Can we even talk about that, Mikhail? Or am I getting carried away? पता नहीं, वो तो पता ही नहीं होता कि ऊपर कैसे जाते हैं टेबल में. नीचे ही देखा है मैंने तो काफी अरसे. Yes, people, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. People who by chance joining now और जिनको बिलीव नहीं हो रहा है, फाइनल विसल हो गया है. डोंट वरी, एक्स्ट्रा टाइम नहीं आएगा. लकी गोल नहीं आएगा ऑपोजिशन का. वी आर लकी ऑल्सो इन द सेम मोमेंट, लास्ट फ्यू मोमेंट्स में मिकाइल, दैट हमने जो डिफेंडिंग की थी इन द लास्ट 7-8 मिनट्स, मुझे तो लग रहा था दिस इज लाइक गॉन ब्रो. दिस इज गॉन अगेन, सेम ओल्ड थिंग. बट वी आर 34 पॉइंट. चलो ब्रेंटफोर्ड से 1 पॉइंट पीछे अभी भी है विद प्लेइंग 2 एक्स्ट्रा गेम्स एंड ब्रेंटफोर्ड. बट कोई नहीं, 34 पॉइंट्स है तो एटलीस्ट एस्टन विला हैज नॉट ओवरटेकन अस, इज व्हाट आई वुड से. तो आई थिंक वी आर गुड. भाई टॉप हाफ के लिए तो वी आर गुड, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ. एक विक्ट्री आ गया. Oh, let's get a breather, man. We need a breather. That is the crazy moment. जब गोल आया. Oof, Mikhail, please sum it up for me. What are you thinking right now? यार वही अभी बोली and Baghdadi are talking. They're like क्या करें, इसको निकालें ना निकालें, क्या करना चाहिए अब. They're having a crisis mid talks up in the stadium. नहीं, अब तो मतलब there's no point. Obviously it goes to the next game, right? Next game is the most important game वाला चीज. तो अब Dortmund is a knockout. Honestly, it's one game at a time. Again, I'm not toxic towards or against Potter. I just want to see results. ठीक है, मुझे थोड़ा सा आज जिस तरह हमने जो बात कर रहे थे उस तरह के चेंजेस वो कर रहा था.
लॉफ्टस चीक को काफी देर से उतारा लेकिन एंड में उतार लिया, राइट? उससे पहले मिडफील्ड जब when we went a goal up, he did the changes to kind of see out a result. So that's what you want to see. You want to see in-game presence by the coach, right? In the changes, in the tactics. So वो आज दिखा. We had a good first half. We could have had a couple of goals in the first half. Had we've taken advantage of those chances. एक crossbar को लगा, एक दो ऊपर से निकल गए goal के. So there was a lot of good things to talk about this game. This was the kind of Chelsea you want to see game in, game out, right? Okay, we go out there, take the game a little bit by the horns and try to do something with it. Yeah. यार गौरव करेक्ट बोलो, रेन इन डेजर्ट फॉर चेल्सी, बिल्कुल भाई। कोई याद दिला दो यार, लगान एंडिंग वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल लगान भाई, सब लोग लगान की मूवी याद है भाई, सब लोग को वही वाली एंडिंग आ रही है भाई। यहाँ पर मेरे पास एक मीम भी था कचरा वाला, बहुत ही मोमेंट था कि कहीं ना कहीं आई थिंक यस अ लॉट ऑफ पीपल, और मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जो लगान में वो आमिर खान ने लड़ा था ना कचरा के लिए, मैं यहाँ पर लड़ रहा हूँ यार हैवर्ट्स के लिए। I think for me, yes, I know. Obviously, Fofana is a hero scoring the goal. जो हम मतलब literally we didn't score a goal from God knows when. But I think सच में बोलो तो, in my opinion, second half performance of Kai Havertz, I think that deserves a lot of credit. I don't agree with his rating on screen जो देख रहे, because I think somewhere down the line the guy did drop a lot back. बहुत support मिला, I think initially to Kovacic and Fernandez. Then of course we had Zakaria coming in, of course Gallagher coming in. Gallagher by last few moments में the fight he showed, I think that is clear for everyone to see. But Chilwell also, I think Chilwell man of the match. The only criticism of Havertz is that he didn't convert that opportunity to score. अब उसपे if he's getting 6.9 and Felix is getting 7, so I don't think that's fair, because defensively I think Havertz did more work in the game than Felix did. So I would argue that if Felix can get a 7.0, then Havertz could get a 7.1 or 7.0 as well. Havertz did not have a bad game today. I have no, like you were saying, Ankit, I have no criticism of Havertz today. He did a job. You can be unhappy with the selection of Havertz in the starting lineup, and you can be unhappy that Aubameyang did not come on to play. But for whatever he was in control of, I think he did okay today. And we got the result. It's a team sport. 11 people cannot score goals. So today Fofana did from a set piece what we've been asking for somebody to do from a set piece. वो इंजरी से वापस आया तो हमारा सेट पीस से गोल हुआ, right? So that tells you kind of sort of Fofana where he fits into the jigsaw of the Chelsea landscape. कि maybe he can give us that dimension जो कि we are missing. जो उसने पहले भी half में he had a very good header from a corner situation that he seems to be able to get head to ball in set pieces. हमें चाहिए इस तरह का player. So this is positive. Raheem Sterling had a decent game. I think उसकी rating क्या थी? What have they rated him at? So Raheem Sterling is basically one of the highest ratings. In fact, Fofana obviously for the goal, लेकिन Bardeshile, Chilwell, Raheem Sterling, Kovacic, भाई, these are people I would say have had a good games. Koulibaly had a good game. But big up to Bobby, bro. Bobby is a Chelsea ultra of the first order. By much respect to Bobby. Absolutely. Me and Bobby again go back in the day. Mikhail knows that. Bobby, yes, it wasn't enough. Was this enough? How would we rate Potter's performance today? See, that is the thing. Is there something that Potter has done different? जो हम खुश नहीं थे Potter के साथ. What he's done different today? Are you saying that has he learned from his mistakes in the last 2, 3, 4, 5 games? I think he has. Firstly, playing 3 at the back, because you know that Leeds are a side which hit on the break. You have great pace. वहां पर you have an extra safety valve, which is kind of, I think it's not the bad tactic at all, despite being at home. Secondly, yes, maybe this question also Havertz, maybe because बहुत लोग बोल रहे हैं I'm defending Havertz way too much. No, I don't think so. Yes, I have criticized a lot of them by 130 people watching. I wish and pray that you guys were there when I also criticized and I'd said Havertz does not deserve to be in the starting 11. I did say that a lot of times in the last few games. लेकिन reality ये है कि I think he's been hated far too much. For me, yes, he doesn't do enough as a striker. But जैसे मैकल ने समझा है, कहीं ना कहीं आई थिंक सेकंड हाफ में अगर आप लोग बोल रहे हो मुड्रिक क्यों नहीं, ओबामेयांग क्यों नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ चैट में रॉन्ग सब्स्टिट्यूशंस, लेट सब्स्टिट्यूशंस, यस टू सम एक्सटेंट अग्री करता हूँ. लॉफ्टस चीक का बेकैल ने बोला है वी शुड हैव रिप्लेस्ड हिम अर्लियर. क्लियर लग रहा था देयर इज अ गोल कमिंग.
लेकिन कहीं ना कहीं I don't agree with Mudryk and Aubameyang coming on in this game. Mudryk और Madueke में से एक ही बंदा आना था, उसमें से Madueke आया क्यों? क्योंकि चैंपियंस लीग ये स्क्वाड में नहीं है, तो इट विल बी रियली अनफेयर फॉर Madueke, and Madueke has more strength, body strength. तो लगता है that is actually correct. Second thing is, if you're talking about Aubameyang is a good finisher. Yes, if Chelsea were going for a second goal and that was a tactic, then maybe yes. But आपको याद है तो when Lampard का वो criticism था, Lampard used to go for that, and that's where we used to get hit on the break and we used to concede. ठीक है, Potter has kind of learned that despite having Potter ball, उसका वो free flowing football is something that we saw in the first 30 minutes in the first half, first 15 minutes in the second half. But still, I think he made the right one because Havertz, we are again forgetting. In the box, set pieces में we suck. Havertz cleared a lot of balls. Him and Koulibaly particularly were very good in the box while defending. I don't know. Again, why are we being negative? I don't know. Chat, come on. I think We have won a game. there is a need for a Chelsea manager to be the conductor of the orchestra throughout the game, from starting starting whistle to final whistle, because the team is too young. The team doesn't know what it needs to do in different phases of the game. Arsenal won, bro. Not 97-minute winner. Not surprised. 97 minutes, okay, but not surprised. Is it something fishy? Everyone remembers the Man City Manchester United game jab Michael Owen scored. The thing is, they have goals in them. They have goals in them. So and they have that mentality right now. Okay, if we need to score the 3, we will go. This is how Chelsea used to play back in the day. When you're talking about Chelsea of I don't know, 7, 8, 10 years ago, if we were in those situations, we would find a way to win. United under Fergie used to be the same when they needed the goal. Step by step, right? It's step by step. Of course. So for us today, we needed to manage phases of the play, manage phases during the game, and I think to a large extent, I think Potter did it. So for me today, like if this is how we're going to play the next game and the game after, and we're able to get a result from it, okay, let's give him the time to then prove that he can do some of this as well more often. The problem is that we've just not gotten results. So my right now I'm willing to park the Potter debate till the next game. See, can he do this again, and can we do it again as a team, and can we get a result to see us get past Dortmund, and can we start putting remember, we need 10 points to avoid relegation, or 9 points. So we found 3 today. We need another 6 or 7 points to kind of make sure that at least whatever else happens, we don't have to be part of the relegation battle, hopefully, right? With 40, 41, 42 points. But it's been a dismal season. So I'm going to find, small things to hang on to in terms of positivity. I think today, in different phases of the game, I think we kind of did the things we needed to do from a tactic perspective to give us the best chance to see out a result, to get the 3 points. There were still a lot of heart and mouth moments, especially towards the end. I didn't like that. I think that if I am comparing this to a mature Chelsea performance of yesteryear, we would not have had those heart and mouth moments under let's say a Conte or under a Jose, where if you're trying to see out a 1-0 result, or even under a Tuchel for that matter, where you're trying to see out a 1-0 result, but it could have gone either way. It could have been a draw, it could have been worse. So वो थोड़ा सा defensive solidity in seeing out matches वो होनी चाहिए. थोड़ा सा आज नजर आया. We saw Gallagher holding up the ball very well up in the attacking phase of play towards the end. We need more people doing that towards the end of the game. The Drogba used to do this for us. Lampard used to do this for us. Balak, Mata. These are all players that used to kind of think like that. Okay, now we're going to hang on to the ball and let the clock run down. Wo practices as a group we don't have, because we're not putting ourselves in those situations to be able to win games. Zyadatar we end up sucker punch. Surprised with Enzo Fernandez' substitution? I think Enzo did what he could do today. I think overall maybe he played literally every minute. It's just a matter of being fatigued. Yeah. Thoda sa, I think we just needed fresh legs on the pitch just to see out the win. Did he do well today? He didn't do bad today. There were a few moments where, again, he gave away the possession maybe a little too cheaply. I think that's something that he will learn. In a Chelsea team, we expect more responsibility from that role. Maybe in the teams he's coming from,
he's not had that kind of pressure to not give up the ball, right? Thoda sa freedom hai कि okay, theek hai, do what you're doing and then somebody else will cover. But I think if we are asking him to be that cover, so when he is on the ball, if he's going to lose the ball, we'd rather he kick it out than give it up, right? So I don't know how to rate him. I think he had an okay performance. He was good. I don't think he had negative. I think Kovacic phases of was the play. more influential guy, generally speaking. Kovacic was a little bit of a stabilizing factor. Maybe he was doing a little more of the hustle work, giving that presence in the pivot. But I think generally speaking, both of them got the job done, guys. The thing is, let's not overanalyze. I think generally speaking, I wanted signs of life from the sideline. वो आज नजर आए. The manager was trying to conduct the phases of the play by making changes at regular intervals when we felt we needed a change. Loftus-Cheek was doing a job. It was obvious that he was trying to make sure that he does the job for as long as possible. And I think maybe waited 5 minutes too long to make the change. 10 I minutes have too one long. question वहां पर यार, मिकाइल आपसे भी और चैट से भी. मैं इसलिए दिखा रहा था टीम शीट और बेंच. अगर आप लाते भी तो किसको लाते यार, विंग बैक में. दैट इज द पॉइंट. आप अपना फॉर्मेशन चेंज नहीं करना चाहते हो. आई अग्री, लॉफ्टस-चीक वाज अटर नॉनसेंस इन द सेकंड हाफ. और वो Chalobah, I उसको think, is प्ले the नहीं कर रहा answer. क्योंकि ही इज नॉट अ विंग बैक. Chalobah is the answer. I think at this point with a big squad, the squad बट has विद to be. अराउंड 45 मिनट्स टू गो आप लाओगे अ पर्सन हु इज No, no, मोर no, 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 कंफर्टेबल एट no, विंग no, बैक. no, not at 45 minutes, not at all. But I would say that last 20 minutes, maybe you could have gotten Chalobah on मे बी हाफ एन आवर एटलीस्ट. हाँ, थोड़ा सा लेट हो to गया. दैट आई एग्री. take because it was he was starting to look leggy. He was starting to hang on to shirts. He was trying to just pull them down just to get a foul, just to get a breath. So okay, he's in trouble then, and especially when their attacking player came on. What was his name? The winger, Nonko. नॉन्टो यार भाई, वो And he was Nonto. ready. By the way, the lady got it badly. Again, shout out to the lady यार who fell down. भाई जो Uh, स्टुअर्ट थी भाई, she Stewart got it pretty badly. got wiped out pretty bad. Like, and she landed on her forearms, elbows. So I हाँ. think that protected the face, so she was okay in the end. I think she was able to walk away from it. Like in football, mein, to you have to be on the alert, self-defense mode. Mein. Hats off to these guys because they are sitting with their back to the game usually. और अगर बॉल आके लगे तो वो थोड़ा जिगरा चाहिए होता है to sit in that position and not constantly be looking behind yourself. लेकिन generally speaking, I think good vibes हैं थोड़े से. थोड़ी disappointment भी है कि if for the Potter out crowd, maybe we were hoping for one more stumble to help that decision. But I think today, to be fair, to be objective, I think today Potter did what we expect from a Potter. Now, is this enough? Like Bobby in the chat was asking, is this going to be enough? It will what will determine that for me is that let's see it again. Let's see it next game. Let's see it the game after that. Let's see it every single game. There are no freebies in the EPL or any cup. You have to come up, show up every single match. So let's repeat this performance next game and let's have that conversation again. That is Potter starting to find a groove? Is Potter starting to find a rhythm in terms of the team tactics? The biggest elephant in the room is we played a back three today and we got a win. And I think nobody wanted that to be an eventuality necessarily. We look better as a team. We got a win. We were the dominant team for more phases of the play. We were solid, more or less defensively. We were better defensively. Let's say not solid, but we were much better defensively. We were more organized defensively. Why? Because of a back three. I think we also saw with a back three, we can still have attacking threat today. So that criticism, we need a back four to attack, I think is a little bit misplaced, a little bit overused. Back three can also work, but the coach has to commit to, and the players have to commit to playing a back three. I think with the amount of injuries, especially to our wingers, back three gives us a better opportunity to put in people to do a job. Back four, you need somebody to really be good in the right back, left back position. You can't have half. You can't have क्या कहते हैं उसको, fill-ins doing that role. Because you need people that are defensively astute, that are able to get back and into position. ये चेल्सी टीम जो है वो समझती है बैक थ्री क्या है और उस पर वो बेसिकली that's our safety valve. Like if things are not going well, go back to something which works at least for timing, and then get the confidence and then kind of build from that.
Yes, That is Ankit. what And Potter has you done. were saying yourself that we need to be closing down the crosses. So that takes a seasoned fullback to have that awareness to do what needs to be done. Loftus-Cheek is not a right back by training, right? So he doesn't have that awareness to say, "Okay, Chabi, I need to stop this from happening." So that's where an Aspi maybe would have been better, but Aspi is, I don't know, not available right now, or not playing too well these days, anyways. But generally speaking, I think given the given the given all the complications around the Chelsea team right now, I think a back three is a more pragmatic approach. Stop the goals and then try to Yeah. score one or two. Stop the goals. I think we have enough to break with. We have enough attackers to break with. I think we have enough attackers to still bring off the bench. I like the starting lineup today because it gave us something off the bench as well. Sometimes we overplay our hand with our starting lineup, and then there's not enough impact off the bench. तो ये भी एक अच्छा आज थोड़ा सा था एक कि when the changes were made, they kind of were what we needed in those moments, right? So it was kind of like, okay, this guy can still pressure, this guy can still do the job. So I liked it overall. I think for today's game, Graham Potter for me gets a pass. चलो fair enough. Darren, shout out to आपको absolutely and everyone here. Again, shout out to each and everyone, including Mikhail and everyone in the chat, bro. I legit cried, man. What a play of Wesley Fofana. Nacho, we won here. Finally, I can sleep without any tension and rant. कल exam है, so no tension. Let's go. Darren, all the best for the exam. I know that you have exams going on. Again, shout out to you as always, bro. An almighty coach, just like Mikhail. हाँ, ये वाला क्वेश्चन अगेन मैं बहुत सारे चैट देख रहा था और मुझे मालूम है मैं बहुत सारे चैट रीड नहीं कर रहा, बट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इट एंड आई एम रीडिंग ऑलमोस्ट एवरी चैट. ट्रस्ट मी पीपल, I know a lot of reaction needs to come in from our end as well as you guys. So it's a combination absolutely that we do an almighty FC. But yeah, John बोल रहे by the way rest of the season back three यार देखिए, I don't think we can conclude with rest of the season back three right now. I think कहीं ना कहीं I understand what Potter is doing. I think it's about game by game management. It's about what you have opposition plus where you are. I think it's about which gives you more confidence at the moment. Play that. अभी के लिए yes, long run में we want a proper structure. Potter ball whatever he wants to do, fair enough. अगर रहता है fair enough. बहुत सारा criticism अभी भी आ रहा है यार. देखिए, we all forget it. भाई मैं सच में I am seriously asking, which was the last win that we got? Please chat remind me. Was it Crystal Palace? I think it probably was Crystal Palace. I've literally forgotten. And इतना negativity क्यों आ रहा है भाई? A lot of members भाई अब मैं देख रहा हूँ आपके chat भी. I don't think that there should be a lot. Pudin मैं especially आपको बोल रहा हूँ भाई. Yes, definitely. अभी भी jury out है absolutely. Right now the thing is we have got a victory. ठीक है. Focus on what has worked well. Build on things which have not worked well today for the Dortmund game and then come back. Dortmund के लिए pretty sure यहाँ पर I would not want to change. Yes, Dortmund is different. Again, Dortmund के पास भी, if you know that they have great wingers. Adeyemi was an example. I know he's injured, but we'll talk about it on Monday. हम live होने वाले. But I would say that why change? We have got a victory. Bottom line है कि what has given the confidence of the players in the second half to defend at least to some extent. I know we were lucky in at least in moments, but at some point you have to say that they were there. Again, for people who are going and putting those challenges, I think some of them I've not seen them make utna challenges in the last few games. और वहीं पर वो confidence मिला कि नहीं हमें जीतना है. We have scored a goal. Wesley Fofana, big up to you. ठीक है. Chilwell. For me, again, आप लोग बोलिए chat. For me, the man of the match, सच में बोलूं तो, is Ben Chilwell. Ben Chilwell in the back three, the way that he played, the way he applied himself. Towards the end, almost एक lose कर दिया था अपना cool एक moment में. पता नहीं क्यों टाइलर एडम्स के साथ क्या ही तो गया था. But I would say Ben Chilwell who got the assist. I think Ben Chilwell played the entire game. I think he had a very good game. ऐसा नहीं कि लीड ने बहुत बार ब्रेक किया उस साइड से. Somerville, I know he had a good game for a while, लेकिन at the end of the day Ben Chilwell won the war, in the game itself. तो अभी के लिए मैं वही करूंगा. I don't know, Mikhail, for Dortmund early days, but would you say that you would change anything? I think we are in crisis mode. We found something that worked today. I think we need to hang on to it with our fingernails Exactly. and just try to do something, anything that is working. We need to hang on to it. Too much chopping and changing, too much rotation, too many injuries, too much outside debate going on. Thoda sa, we need to just get a little bit of tunnel vision going. Kuch kaam kiya, some things were positive today. Let's just hang on to them and try to repeat those behaviors and see if we can get. For me, Wesley Fofana is man of the match because he got us a goal.
and that got us a win. Actually, yeah, you can see that. So Anshul bhi agree everybody, karta hai. it's a team sport, yes, but for me, that goal is what we needed, और and डिफेंसिवली बंदा बहुत अच्छा था यार, despite being on a yellow card, remember? ठीक था. Like Koulibaly had a good game too. I think by Yeah. Koulibaly's own standards, I think Koulibaly had a better game today. Generally, he's prone to making errors and being rash with fouls. थोड़ा सा वो देखा आज, लेकिन generally speaking, I found के the back line was less panicked because we had three at the back. We had the ability to sweep up any balls that got in behind the other two centre backs. And I think that is the way forward. Unfortunately, as much as we like to think that we are ready to play a back four, we are not. We are not. Until we have a fully fit Reece James, until we have a fully fit Chilwell, until we have two centre backs that are comfortable playing with each other day in, day out, week in, week out, we are not ready for a back four. So unfortunately, that I don't even think it's unfortunate. I just think we are so excited to attack that we want to see a back four. But we attacked a lot this game. We attacked from the first half all the way through the last half. There were so many First breaks. half में And we to be honest, told 2-0 होना चाहिए था first half में score. हाँ, होना चाहिए था और होएगा. Like if we keep playing like this, I think these are the players that can start latching on to some of these situations and converting. थोड़ा सा chop and change चलता रहे all over the pitch. So I don't blame anybody, but generally speaking, today the manager had a better game, and that to me is what we needed. Number one is the manager to set us up, to give us a chance to get something positive from a game, and I think that is in itself a small victory for us. Graham Potter, for whatever reasons, has been underperforming. Today, I think he felt, and in his tactics, he felt like he was awake. He did what was needed to There get was the a result. clear reaction from Graham Potter. आप from इसको minute निकाल one. भी दोगे, even if you get rid of Potter, the next guy will have to come and do these kind of pragmatic decisions. I know everybody wants to play total football, but today we need a result, and this is what we need to do today. I'm here for it. If Potter can do that for us, game in, game out, I have no issues with Potter either. But it's a little too soon to swing from one extreme to the other. I'm not going to be toxic. Jury's I'm out going to give वाला. him the benefit of the doubt. Let's take us to the next game. Show us that you can do this again. बिल्कुल बिल्कुल. नवजोत, बाय द वे, बिग अप यार, बहुत दिन हो गए आपको चैनल में देखे हुए. नवजोत, नाइस टू सी यू ऑलवेज. अगेन थैंक्स फॉर द सुपर चैट ब्रो. सेम टीम दैट टीटी लॉस्ट 3-0, जस्ट एंजॉय द डब्ल्यू वी गॉट. एग्जैक्टली. मेसी इज गोट का बहुत अच्छा कमेंट लगा, मैंने हाईलाइट किया था. बहुत अच्छा कमेंट है, बिकॉज भाई स्पेशली बारसा फैंस रिलेट टू इट. बारसा जो 12 महीने थी वर्सेस अभी जो है, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. आई नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, जैसे मैकैल ने बोला, आई एम नॉट ट्राइंग जंपिंग शिप कि बोल रहा नहीं पॉटर ने एब्सोल्युटली नहीं, दिस इज व्हाट वी नीड. नहीं, वी वर नोवेयर क्लोज टू व्हाट वी शुड बी एज अ क्लब, स्टिल नोवेयर क्लोज. लेकिन इट्स वर्क इन प्रोग्रेस. हैज इट गॉन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन? क्या मैं चाहता कि और भी गंदा हो और डॉर्टमंड के साथ भी हार जाए? नहीं, अभी भी पॉसिबल हम हारेंगे, लेकिन एटलीस्ट वी आर गोइंग विद मोर कॉन्फिडेंस. वी आर गोइंग विद 3 पॉइंट्स अंडर बैग. कब हुआ था लास्ट? अगेन आई रिपीट द सेम थिंग. I don't even remember, bro. See, that proves it. मतलब मैं हर Mikhail is here, हर स्ट्रीम में हम स्टैट्स बोलते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं. भाई मुझे याद भी नहीं है लिटरली चेल्सी कब लास्ट जीती थी. लास्ट गोल मारी थी वेस्ट हैम के साथ, वो पक्का याद था मुझे. लास्ट जीती थी शायद पैलेस था, वो मैं 100% श्योर नहीं हूँ. आई एम जस्ट I think Palace will have to. I think you got to win. It's been a while though. It's been a while. So exactly, Navjot, I like that positive comment. Again, हमने इतना गाली दिया to Potter, तो भाई again, people in the playing 11, we have given. That's why I'm saying that I'm not defending Havertz, Potter. These are all people who got a lot of stick in the last few weeks. And yes, they are not brilliant abhi bhi. Lekin they have done better than what they were, doing the last few months. जो आप एक्सपेक्ट करे थे उनसे, तो कहीं ना कहीं इट इज अ पॉजिटिव स्टेप एंड नॉट वन स्टेप बिहाइंड अगेन. एंड दैट इज व्हाट आई वुड से दैट हाँ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स हो सकता था वो सैक होता इसलिए किया, बट किया तो सही ना भाई. You have to give the guy the credit that the guy actually at least had the guts to actually not take off Wesley Fofana जब वो येलो कार्ड में था. When I was calling it, सच में बोलूं तो I have to admit कि यार Wesley Fofana को I would have played maximum till 1 hour, but नहीं. Then he scored the goal, right? He did. And he was a difference maker. It was a great leap. Then keeping Havertz for 90 minutes. People अभी भी पूछ रहे, अवैस सिद्दीक पूछ रहे, भाई ओबा क्यों नहीं? When you are defending by in the box or even attackingly or defensively, I think in the air, let's be honest, we won most of the battles आज because of the fact that we had presence दिख रही थी आज. और again, they were not great, but they were better than Leeds, and that is what we wanted today. So Loftus-Cheek, Havertz,
Wesley Fofana gave us height in set pieces, both defensively and offensively. It makes a difference, right? So the छोटे pieces होते हैं that you have to start putting together to for different phases and different situations in the game. So I think generally we were better balanced today. You mentioned somewhere in the game, physicality wise, I think we were the bigger team today. It doesn't happen a lot. Chelsea are hardly ever the bigger team on the pitch, right? So it was a nice change, and that maybe also kind of tells me that maybe we shouldn't read too much into it, right? Let's wait and see. Can we repeat these performances against, in Europe? Can we repeat this performance in the EPL against other oppositions? But for today, for what we were up against, we did enough to get the win, thankfully, right? We should have gotten more goals. अब वो goals वाली बीमारी है, like the guy was saying, attack, क्या बोल रहे थे? Attack. हाँ, क्या चीज? The last comment I missed it. There was something they were saying. I myself missed it. But anyway, Enzo Fernandez, the first Chelsea player in all competitions to record 10 plus accurate long balls, ball recoveries, final third passes this season in a single game. Again, इतना stats में नहीं जाऊंगा रिवाज. मेरा अभी simple सा फंडा है कि भाई we did the job what was asked about. Simple as that. Just about, not great. Koulibaly also showed that he's playing in Silva's shadow somewhat, because he had a lot of long balls for the left wing throughout the game as well. So Silva usually does that role for us, but Koulibaly is showing that he can also step in those situations. If we give Koulibaly a run of games, maybe he'll settle into a less panic type mode of defending. थोड़ा सा chop and change रहा है back line में, we all know it. But Badia Kelly, three the back में बहुत कम बार I don't remember three the back में him performing that well. I think it's and he's never played in the middle. He's never played in the middle, right? So he's showing that he's also doing a job right now for us. Maybe not in the best position for his limitations, right? Silva की भी limitations हैं, so we protect him by playing him in the middle, right? But when he plays in a back four, he's still able to carry himself. Koulibaly has been a little suspect in a back four क्योंकि वो थोड़ा सा panic mode में चला जाता है, defensively rash tackles करता है, and that causes cards. So those are behaviors that we have to protect them. A shrewd manager has to objectively look at every single player on the pitch and ahead of time, and make sure that there's protection for their weaknesses or some guidance for them not to get into behaviors that will get them into trouble. So that's all part of parcel of building a winning team. आहिस्ता आहिस्ता होगा. It doesn't happen overnight. ठीक है. Today has exactly. देखो, what Mikhail is saying, Navjot is saying, is literally, it's a mirror image. That is what I agree with 100%. I'm not saying here that Potter in all of a sudden. We are in a very, very... Mikhail, please correct me if wrong. This is the most important week for Chelsea for the season. अगर ये week नहीं तो भाई, what is the use of the season? मैं तो बोलता हूँ. It is like that. It's literally like that. अगर इस week में नहीं जीतेंगे तो भाई, I don't care about the win. It's about getting back to victory. आप अभी कह रहे थे कि Dortmund's coming off 10 wins. So I would say Dortmund are due for a defeat now. We were due for a win. Exactly. We finally got one. So I would say, let's ride this momentum, take it into the game versus Dortmund, hopefully. Yeah. Again, thanks for this comment, bro. I've been calling it time and again. Havertz is not a striker. Havertz is playing someone who और यहाँ पर लोग हंसे थे, Havertz is CDM. Let me also put you guys there. भाई, Bayer Leverkusen के लिए there were at least about 1/4 of the games जहाँ पर last season में he played 1/4 of the games striker में towards the end before coming 1/4 of the games he also played number 6. Yes, he played number 6. I'm not even joking. He actually did that, Havertz. So Havertz has got that work rate in him, plus he's got those skills in him, but he's not a proper striker. That's the whole point. आप उसको use करिए, but if we have a striker, that's a big question. अब वो we can question Burley, Potter, and Tuchel, all the three, because we have not done that striker, scouting or buying properly in the summer and the winter window. Simple as that. If managers are sacked at clubs in bad time, we wouldn't have the Artetas. Fair enough. Lekin again, work in progress है. Whether it leads to another Arteta, Musab, I don't know. It's very early days. It's just one victory and Arteta is the exception still. Like, just because they persisted with somebody that wasn't doing well doesn't mean that they will eventually always succeed. Exactly. In fact, that's a one-off. मैं तो बोलता हूँ. Arteta had enough quality in his training as a coach from Pep to come through at some point. And it's starting to come together for them as a squad as well. But that doesn't mean that just because Arteta they stuck with and it worked, we should have stuck with Frank Lampard then, right? Why didn't we? So it's easy to jump to examples as well. But the hope is that this is the beginning of something. We were hoping for for us to turn a corner.
hopefully this is the turn in the corner. We got a win for the day, if nothing else. So let's see. Next game हमारी Dortmund के साथ है. हाँ, और मैं जस्ट रियलाइज किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जॉन जो पूछ रहे हैं, हम मंडे को डिटेल में कवर करेंगे जॉन, लेकिन बाडिशेल इज नॉट देयर द यूसीएल लाइनअप इन द स्क्वाड, वी ऑल रिमेंबर दैट भाई, धक्के से लगा मुझे, याद आया, एंड देन आई रियलाइज ओके भाई, कुलीबाली लेफ्ट सेंटर बैक इज एन इश्यू इन द बैक थ्री, थोड़ा सा चालोबा माइट कम इन, लेकिन let me sleep over it. I don't know, Mikhail, if you have a comment, do comment. Same thing, right? When Koulibaly looked better today, playing in the middle of a back three, playing on the left of a back three, he doesn't look as nice. So we need more hustle from, and more physicality and more defensive awareness from somebody. I don't know. Defensive execution जो है वो left of the back three is more critical. थोड़ा सा cushion role होता है जो center में खेल रहा होता है center back का. He has a little more freedom or little less pressure. So they end up looking better too. But that's fine. The idea is that we saw some positives today. If we bring in Chalobah, Fofana, and Koulibaly, we can get a job. I don't know. Can Fofana play on the left? Has he played on the left? No. Not really. I've not seen him. But you know what? Again, एक moment आया था, फफाना गिरा, मैं like, okay man, don't tell me one more injury. But thankfully he's not injured. Luis Hall को left center back खिलाओगे? पता नहीं. गौरव again, Aubameyang, I don't know man, why are we even, पता नहीं यार, मुझे तो लगता है एजेंडा लगता है यार, मतलब I don't know, मतलब मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ जब बंदा अच्छा नहीं होता है, मैं प्रेज भी करता हूँ. Havertz has been shit for 1 month, but he was really good today, bro. I don't think I can criticize him. And again, Ziyech, Ziyech का एक आप बोल सकते हो that अगर विंग बैक खिलाना है तो why not Ziyech, but now Loftus-Cheek did it for 45 minutes. Maybe Ziyech को ला सकते थे second half में, that would have been a possibility. I don't know. Ziyech, he was there on the bench, right? मैं देख रहा हूँ, Ziyech was there on the bench. Second half में, whether we like it or not, Ruben had a few clutch clearances, sorry. Would Ziyech be able to make those clearances? I doubt it. So I think it played out the way it played out. I think I'm happy. Ziyech will have his time. Ziyech is on the way out. We all know it anyway. So it's not the end of the day. If he plays or doesn't play, the idea would be, I think Ziyech for me is a first half player. You start with him to make an impact to a game and get an early goal or two. I think he's that kind of player. I haven't seen him come off the bench and influence too many games. थोड़ा सा वो physicality में lack करता है, so he's more a rhythm kind of player. If you're building up play from and building up attack in certain ways or trying to break in, he can help with that kind of play. जो हमने देखा था Champions League run में, he was able to help us in cup games. लेकिन EPL में थोड़ा सा आपको rigor ज़्यादा चाहिए होता है, थोड़ी सी आपको defensively hard work off the ball, positionally करना पड़ता है, जो कि I don't think he's made for that. He's an attacking player. तो वो थोड़ा सा if you have an option, वो टूर्नामेंट फुटबॉल में कर सकता है, where we saw in the FA Cups and the World Cups. ठीक है, I mean, like it could have worked as well, but ठीक है, you cannot play 21 players every game. तो ठीक है, किसी ना किसी को you have to leave out. Aubameyang, I told you right, कि मुझे लगा जिस तरह वो बैठा हुआ था कि he has no role to play today. उसको पता है, क्योंकि उसका वो like his eyes were somewhere else. He was glazed off. It's an off-field thing basically already. तो वो definitely, I think it's more a direct political, strategic thing. I don't think they're vested in keeping him. उसके साथ discussions probably हो चुकी हैं. Everybody knows कि क्या होना है summer में. So they're trying to look elsewhere for answers. लेकिन I would argue that even then, in a pragmatic mindset, you use whoever you have, whether they're staying, whether they're going. If they can help you on the pitch, maybe you use them. आपने खुद बोला कि if we only have one striker listed for Champions League, then maybe Aubameyang could have, given a rest to Havertz. वहाँ पे जो प्रणव बोल रहे हैं ना, that is the thing where he could have got of Havertz. What I don't agree with Pranav is, if I just quickly come in here, I totally agree why Sterling and Felix were brought up. I totally agree. In fact, वहाँ पर मैं agree करता हूँ Potter से for a change. वो बहुत कम हुआ in the last few months. If you have been following Pranav, you have been following अपना channel. Sterling is coming back after an injury जहाँ पर he has not played back to back games. ठीक है.
फिलिक्स ही हैज लिटरली प्लेड एवरी मिनट आपका रेड कार्ड के बाद में, लिटरली एवरी मिनट। लास्ट गेम में ऑलरेडी लग रहा था टुवर्ड्स द 75th मिनट वो तो बहुत लेगी लग रहा था, इसलिए ही वाज ब्रॉट ऑफ। ठीक है, आज भी टुवर्ड्स द एंड ही वाज काइंड ऑफ सीमिंग दैट वे। और रिमेंबर दिस एंटायर वीक में वी हैव 2 मैचेस, वन व्हिच इज जस्ट फिनिश्ड और वन जो होने वाला है ट्यूसडे नाइट को, हम नहीं इग्नोर कर सकते। यस वी शुड बी प्लेइंग फॉर दोस 90 मिनट्स, हमें जीतना था यस, बट भाई फिलिक्स आज के दिन में इज प्रोबेबली आवर मोस्ट रिलायबल क्रिएटर। और मैं अगर देखता हूं कि यार ही इज लुकिंग अ लिटिल बिट लेगी, आई रादर ब्रिंग हिम ऑफ। और अगेन व्हाई हैवर्ट्स, मैं थोड़ा सा बोलूंगा यस ओबामयांग कुड हैव बीन ब्रॉट ऑफ, क्योंकि यार ब्रॉट ऑन और हैवर्ट्स ऑफ बिकॉज जो मिकाइल ने बोला बट हैवर्ट्स नॉट बीइंग इन यूसीएल। लेकिन हैवर्ट्स का ऐसा है, अगेन गोइंग बाय इट, स्टर्लिंग फिलिक्स और हैवर्ट्स के बीच में 3 जन आप बोलोगे हु हैज द मोस्ट फिजिकलिटी, who has the most ability to keep the ball, who has the most ability to hold the ball. He's not great, nowhere close to great Havertz, लेकिन उन दोनों से ज्यादा है, उस पर एबिलिटी है। Can I respond to this comment as well? Please, please. Pranav, good comment, but I think this is उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें we needed something defensively minded, not offensive minded. एक goal we had to see out. I don't think we were playing like we were going to score 5 goals, right? So you take what you have and try to protect it then, right? So एक goal था, so let's not overcommit, let's not get caught out by tired legs, put some fresh legs on, preferably put them on deeper in the field so that you're able to actually have bodies in the midfield, put a mid block in. वो ठीक है, it didn't play out maybe necessarily the way we wanted it to, because the Leeds were pressuring our goal towards the end of the game regardless. But I think कि वहाँ पे लॉफ्टस-चीक को उतारना चाहिए था पहले थोड़ा सा, क्योंकि वो भी थक गया था. He was letting them come on, उसको 2-on-1 भी कर रहे थे. So but I think उस situation में I don't necessarily, yes, if you just look at your comment with no context to a situation, yes, they were not like for like changes. We definitely gave up something attacking wise when we brought on Gallagher and Zakaria, but the intent was to shore up our midfield, and I think they did that to some extent. और I agree with that basically tactic. सच में बोलूं, मतलब we haven't, I know we want to play good football, और गौरव आपका भी देख रहा हूँ भाई, हम फीफा नहीं खेल रहे यार, that's the difference. रियलिटी ये है कि भाई हम 17 मैचेस में 3 मैच जीते थे, 15 मैचेस में 2 मैच जीते थे, 9 मैच में 1 मैच जीते थे भाई, हमने गोल नहीं मारा था पिछले कितने 5-6 मैचेस में, जहां तक मुझे याद है। मतलब दैट इज समथिंग दैट वी आर बिल्डिंग ऑन। अब उससे सडनली आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई जस्ट पुट ऑन ऑल द गोल स्कोरर्स एंड दे विल स्कोर गोल्स, भाई आई विश इट वाज सो सिंपल। इट इजंट दैट अगेंस्ट लीड्स, we have tried that unfortunately under Lampard. It didn't work. It doesn't work. You have to manage phases of play, phases in the 90 minutes. If you have a lead, try to hang on to it now, because you know what, special teams यही होती हैं. If you watch American football की situation के मुताबिक आप एक लाइनअप भेजते हो कि अगर आपने डिफेंड करना है, अटैक करना है, सेट पीस डिफेंड करना है, जो भी करना है उसके हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस और प्लेयर्स. So if you think about, आजकल नाम आ रहा है जोजे का, कि जोजे 3.0, जोजे को वापस लेके आओ. What is Jose? Jose is basically a situational manager. कि वो situation देखता है, उसके हिसाब से he makes a change in game. उसी वक्त, and sometimes even ahead of time. कि वो he sees something happening, या proactively, preemptively he'll make changes to stop something from happening. तो पॉटर में ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा लग रहा था कि वो बैठा रहता है, गेम देखता रहता है, the game passes him by. राइट, चेंजेस भी नहीं कर रहा, सब्स्टिट्यूशंस कई दफा पूरी नहीं किए, एक सब्स्टिट्यूशन की और फिर भी मैच हार गए, तो देन यू आर लेफ्ट वंडरिंग कि यार ये क्या था, राइट. सो आई थिंक कि टुडे वी सॉ कि ही वाज मेकिंग एन एफर्ट फ्रॉम अ मैनेजर. दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. इफ ही गोज डाउन with bad results, trying at least, तो ठीक है, no judgment on the guy, he tried, it didn't work. Sometimes results are not guaranteed, but the behaviors we want to see as Chelsea fans, that the coach is showing some signs of life on the sideline. He's trying to do things. If we're not able to get a result on the day, but we tried well, okay, fine. Let's give him that till next game. Today we got a result. We did a lot of positive things. I think it's a good day as a Chelsea fan. Let's count our blessings today. 3 points. Here we go. बिल्कुल बिल्कुल भाई. अगेन देम नवाज, इट डजंट मैटर. सुशांत भाई आपको डेफिनेटली शाउट आउट है भाई. विशाल अगेन भाई, बिप्रा इन द हाउस एज वेल. मैंने कंग्रेचुलेट नहीं किया है, क्योंकि अभी ये थोड़ा मोमेंट जी रहे हैं कि हम स्कोर किए गोल, फिर हम जीत भी गए. इट्स लाइक ऑलमोस्ट वो लगान वाला मोमेंट सच में आ रहा था, इसलिए हम थोड़ा ओवर सेलिब्रेट कर रहे हैं. यस पीपल, एक दो कमेंट में देख रहा था, चेल्सी सेलिब्रेटिंग लाइक वी हैव वन द चैंपियंस लीग. ट्रस्ट मी ब्रो, इन दिस मोमेंट
we can only celebrate the moment. And again, if Arsenal fans are saying that, let me not go there, but Arsenal have to get the credit definitely. 3-2 जो comeback victory था, one of the best comebacks possibly you can say that Premier League era में, maybe for Arsenal, yes, absolutely. But overall, I can remember a few games, but definitely great mentality shown by Arsenal, and yes, they are top of the league. हो सकता था कि आज बोर्नमथ के लिए what a shot in the arm badly यार, मतलब they are getting relegated in my opinion, no two ways about they're getting it. But एक और good news है भाई, Spurs have dropped 3 points. Mikhail, is there a faint hope, or am I like jumping the gun? If a faint hope है कि यार अभी भी top 6? I honestly I think it's a little disrespectful to look at top anything. Abhi, we got a win. One of our rivals got a loss. Positives on the day. I think it's a good day again. Yeah, but we need to continue that. अभी अपना काम करो, दूसरों को ना देखो. अभी अपना काम करो, ठीक है? That's a positive result. That's what we want. We need some of these teams that are vying for top 6 to start dropping some points. But in the meantime, we need to start getting some points, and let's see where we end up at the end of the season. But it's too. I think it's disrespectful to the rest of the league for us to talk in terms of top anything right now. We're not top anything. We're a garbage team right now. If you look at the performance, honestly, if you look at the performances from January 1st to today, we have one of the worst teams in the league. वो मैं कल कवर किया था प्रीव्यू में, मतलब in terms of XG, in terms of basically shot conversion, goal conversion, in terms of goals, why we are between 15th and 19th in all these tables. Even in points, we were one of the worst. So point exactly. 1. So I think it's disrespectful to everybody else in the league for us to talk about top anything right now. Move in silence. Move from game to game. Keep your head down. Stay humble. Get 3 points. Enough 3 points. Like let's win 2, 3, 4 games before we start talking about top anything. Right now it's 1 win. Let's put another win together and see if we can do that. Right? वो भी Champions League की game है. So come back to the Premier League and try to win one more game again. To make it 2 wins in a row, and okay, then make it, something more than that, 3 wins in a row, because at some point we have to put a string of wins together to be top of anything, top 6, top 7, top 4. अगर जीत नहीं, if we're not able to win consistently, वो अपना top last 5 games का जो metric होता है वो देखो, if it's not showing you more W's than anything else, you cannot have any expectations. We are sitting in the middle of the pack right now. To make up ground, we need a lot of 3 points right now match day पे. अभी नहीं हो रहा, एक गेम इसकी वजह से नहीं हो जाता. If we have 5 wins in a row, and then we can have this discussion कि यार top 4 क्यों नहीं हो सकती अगर हमारी last 5 games are wins. वो तो बोलने की बात थी, बस just बोलने की बात, because at the end of the day यार कहीं ना कहीं I hope at least Potter से तो आ रहा है कि यार game by game है definitely, but at the same time यार we are Chelsea Football Club. I think that is something which is also important. So कहीं ना कहीं it is 3 points of the break, good vibes. The owner was watching in the stands. Both owners were sitting there. हाँ, by the way, जो भी लोग बोल रहे हैं भाई, गौरव को स्पेशली बोलना चाहूंगा. गौरव जो दूसरे गौरव है भाई, नॉट अ मेंबर, बट अगेन बिग अप टू बोथ द गौरव्स भाई. वो हमेशा ये कमेंट आता हमेशा कि भाई आज टॉड बॉल ही आ रहे हैं तो भाई हम 100% हारना है. भाई आई नो मजाक में ठीक है 2-3 बार, भाई ऐसा नहीं होता यार. फुटबॉल इतना इजी होता तो भाई आप लकी चार्म को हमेशा लेते हैं भाई. मैं बच जाता सचिन तेंदुलकर. You know what I mean, right? ऐसा नहीं होता है भाई स्पोर्ट्स में. But anyway, it's a good sign. The owners are trying. They'll make wrong decisions. They'll stick with the wrong decisions. but they're trying. They're not sitting in the US. They're flying in to watch the games. Let's be patient with them as well. थोड़ा सा ठीक है, fans की भी voice होती है, वो भी सुननी चाहिए उनको. Fans को भी vocalize करनी चाहिए with respect. I don't think it should get toxic. There should be some way to show the owners what we're hoping to see without it getting toxic. अब वो match going fans जो हैं, they're very emotional crowd, right? So you have to be careful, क्योंकि match हो रहा है और आप stadium में अगर अपने manager के खिलाफ booing चल रही है या नारेबाजी चल रही है, तो that's also a very negative atmosphere to get anything positive out of. आज I think we did enough from the start to the finish for there to be a good atmosphere in the ground. I think that's going to that's something to build on as well. A positive atmosphere in Stamford Bridge. इतनी negativity रही है पिछले few months में. We just have not seen energy in the team, nor in the fans. I think today was a good day. बिल्कुल. And again Dortmund के बारे में हम बात करें मंडे को, अगेन 3.5 घंटे हो गए भाई. हम लोग सब
Basically I've been waiting for this moment, but it's not the over moment, it's the start of the moment जो हम expect कर रहे हैं. लेकिन again big up to everyone in the chat absolutely. और नए members जो बने, first of all क्लिफर्ड को बड़ा बड़ा shout out है क्योंकि क्लिफर्ड ने gift किया membership to a lot of people. Abhinav, I think Ansh, a few of them that I know, but whomever John, whoever has become a member today or has become a member earlier but hasn't DM'd me or we are not in touch on Instagram or ट्विटर, प्लीज डीएम करिए मुझे, हम ऐड करेंगे टू अ मेंबर्स ग्रुप और इवन इन इंस्टाग्राम. वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन एंड फॉर पीपल हु वांट टू बिकम मेंबर्स, चेक आउट हमारे मेंबरशिप पर्क्स एज वेल एज चेक आउट just the channel content. Yeah, you'll love to basically just be a part of it. I'm sure you won't be disappointed. If you are, give us feedback. Or again, Mikhail is part of the channel very much, so Mikhail, big up. Yeah, absolutely great. Just up the Chelsea अभी के लिए 3 points और पॉजिटिव वाइब्स फॉर मंडे. अभी के लिए भाई मतलब आई डोंट नो, मतलब इन टर्म्स ऑफ द टॉप जो टाइटल रेस हो रहा है, आर यू सेइंग आर्सेनल आफ्टर दिस विन और अगेन यू आर सेइंग द मैन सिटी मेंटालिटी? Yeah, it's controversial, but I think I'm secretly rooting for Arsenal to win the league. Just because I don't want to see Pep win the fifth league time, the league the fifth time or the fourth time or the sixth time, whatever time it is. I'm just sick and tired of Man City dominating the Premier League. So if it needs to be Arsenal to take that away for 1 year from them, let it be. Agle saal, hopefully, we can have Man United step up and challenge. Maybe Chelsea step up and challenge for the league, right? You never know. Maybe United, you never know यार. सुशांत भाई, मतलब congratulations United fan in the house. मैं हमने already कर चुके यार. We had Chinmay in the house, another OG of the channel यार. Chinmay was there yesterday. हमने बात किया था. He's a proper Manchester United ultra and we discussed a lot. आप देखिए, we have already streamed. I think कल हम बात किए थे दोनों big matches के बारे में, mainly Chelsea, Leeds and Man United, Liverpool. We have done that absolutely. लेकिन all the best for you. लेकिन बिप्रा, again congratulations यार Arsenal fans. You have to, मतलब कहीं ना कहीं I agree with Mikhail that sorry Man City fans, not that we are against, लेकिन वो थोड़ा फुटबॉल को इंटरेस्टिंग बनाता है यार. हमें तो ऑलमोस्ट लग रहा था भाई हम क्या करेंगे आफ्टर दिस वीकेंड, लेकिन थोड़ा बहुत चेल्सी भी थोड़ा होप दे दिया. थोड़ा फार्मर्स लीग बनता जा रहा है ना कि मैन सिटी एंड 11 other teams or 19 other teams, Man City wins every, तो वो PSG में और मैन सिटी में क्या फर्क रह गया फिर, राइट? Yeah, exactly. Well, again, that's a fact. Cannot deny that. Absolutely. But again, much love. भाई सब लोग जो भी नए हैं, do consider subscribing as hit the like button. हम hopefully will do a video tomorrow morning as well as we'll be live for of course the big match tomorrow evening. लेकिन Monday को हम करने वाले Champions League talks as well. So don't forget, hit that bell notification icon. And again, सब लोग yes, again enjoy your festival. Absolutely. मुझे पता नहीं Monday है क्या, पता नहीं. Let's check it out. I maybe didn't check it, but anyway, big up. और सब लोग Mikhail OP हो जाए in the chat यार. Absolutely भाई, 3.5 घंटे for something that we planned for just big up to everybody. Big up to everybody in the chat for sticking with us and for liking and subscribing and being members. Over 300 likes. I just refreshed my view. Good work, guys. Great. Ankit, big up. Thanks for having us all. Always, yeah. Keep rocking the Chelsea supporters. Love it. Chalo. Bye guys, good night and of course congratulations to all the winners and of course Arsenal तो है ही, Wolves भी है, लेकिन Chelsea man, that's the most important part for now क्योंकि हमारा जो रहा है last month. तो भाई up the Chelsea and always a fan channel for all to see. See you soon on both the channels.